मिनट कहाँ से होगा? मिनट ना है वो वहाँ सही हो जाता है। यहाँ से मिनट आएगा ना। यहाँ से कुछ नहीं हो, यहाँ से परेशान यहाँ छेड़खानी कुछ ना ये ऐसे नहीं चल पा रहा है। उसमें तुम्हारे मोबाइल सही चलेगा। मोबाइल देखो देखो मिनिमाइज करो, मोबाइल खोलो बता रहे शेयर कैसे करेंगे इसको? मोबाइल के मिनिमाइज करो खोलो। इसी में आईडी है ना। लाइव ये चल रहा है। इसमें देखो सीधा चलेगा ये सीधा शेयर करना है। कॉपी कर लो चाहे वाइट बड़ा से आ रहा है कलर से रखना पड़ेगा। नहीं वो वहाँ कैमरे जितना कैमरे का आउटपुट आए वो चलेगी जाने वो कैमरे का एडजस्ट कर लो। दुनिया वालों पूरी नजर बहुत ज्यादा वैसे आ रहा है। दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना दो सबसे आगे होंगे सुनो गौर से दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा है जो हमने कहा है जो क्वालिटी बढ़ा लो ना अपने मोबाइल यूट्यूब वाला तो ये चल रहा है। ये इसको सीधा कैसे करेंगे? ये जो अरे वो नहीं मिरर हो जाता है हो जाता है लेकिन अभी ढूंढना पड़ेगा। शरारे हैं पानी के धारे हैं हम काटे लगते नहीं जो वादा करते हैं करके निभाते हैं हम पीछे हटते नहीं। जा तो तारीख अच्छा ये एडिट कर दिया एक बार चला तो चला ज्यादा खोले ना भाई तो वो लगेगा सही है टेढ़ा हो जाएगा टेढ़ा हो जाएगा। सबके दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम कैसी तंजीर है। सुनो गौर से दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान।
सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। हमने तुझे बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। आओ हमने तुझे बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। क्या हो गया? वो बैक करने लगा। अच्छा, ऑडियो तो लगे। चल अपने सीधे में कर लूंगा। अरे कहाँ हो गया साला, अटक का गया। इसमें ऑडियो चल रहा होगा ना, इसको बंद कर दो। ये नदियाँ बंद कर दे इसका। जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, ज्यादा लोग लगे तो मैं इसके पानी से अब नहीं करें। अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी ये वाला तुम्हारे कहाँ था? वो वाला था ऊपर कि ये वाला था, इसमें ऑडियो नहीं था। पहले इससे इसी से लाइव टाइम चलाए थे, स्ट्रीम किए थे क्या, स्ट्रीम हो रहा था, इससे लाइव चल रहा था। इसी में प्री वेडिंग चला रहा, बीच में खड़ा हो गया। अब वजह ऑडियो नहीं दे रहा। वही लोग बताओ ना कि ऑडियो उसी से इसका आउटपुट निकालते हैं। नहीं, वहाँ से कर, यहाँ सेटिंग लगा, ऑडियो केबल लगा था सेटिंग पर। कर रहा चल ही नहीं रहा था ना, ये साला मतलब खड़ा हो गया जैसे कावा नहीं कर रहा था। आगे लाल वाला बैग खाली है, सुन लाल वाला बैग में इसमें नॉन स्टॉप इंस्ट्रूमेंटल लगा नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हों के। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हों के। सरहद इंसानों के लिए सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हों के। सरहद इंसानों के लिए सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके।
हम एक और ऑर्डर पंछी होते तैरते हम अभी ऑनलाइन पंख पसारे वीडियो कट कर दिया सारी धरती अपनी होती अपने होते सारे खुली फिजाओं में उड़ते खुली फिजाओं में अपने दिलों में हम सारा प्यार समझे पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद रोके सरहद इंसानों के लिए सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके जो होती नदिया और तुम पवन के झोंके तो क्या होता जो होती नदिया और तुम पवन के झोंके तो क्या होता पवन के झोंके नदी के तन को जब छूते हैं पवन के झोंके नदी के तन को जब छूते हैं लहरें बनती हैं हम दोनों जब मिलते तो कुछ ऐसा होता सब कहते हैं लहर लहर जहाँ भी जाए इनको ना कोई टोके पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके सरहद सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान की पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके
छोड़ दो। आप बैठ के सीट पे चले अगर ज्यादा लाइट ले लेना क्या मैं खा जाइए गारंटी है। संदेश देख लो पाते हैं चिट्ठी आती है मुझे जाती है कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है संदेश आते हैं हमें घर पाते हैं चिट्ठी आती है तो पूछे चले जा रहे हैं कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। वहाँ पर बताइए आवाज दीजिएगा लोग आउटपुट जो देखो वहाँ क्या चलेगा बस लाइट लाइट है ना यूट्यूब चल रहा है ये जूम चल रहा है सब लाइव है लाइट अच्छी नहीं है ज्यादा दिख रही है। अरे जाने ये लो क्वालिटी है ये हाई यूट्यूब है प्रोफेशनल है। अरे यूट्यूब आप चल जूम है ये दूसरी लाइव अच्छी आएगी। अरे जूम बहुत बेकार भाई जूम नहीं जूम तो छोटी मीटिंग के लिए ना ये अलग चीज है। लेट मारे हो जी भी पा रहे हो टाइमर वाला है कनेक्शन हो जाता है। अरे लाइन के मतलब और ऐसा चलवे नहीं करेगा और यहाँ कुछ नहीं चलेगा। किसी के गजरे महकती सुबह न चलती शामों में अकेली रातों में अधूरी बातों में बरसती बाहों ने और पूछा है कैसी निगाहों ने कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। समय से आते हैं हमें घर पाते हैं चिट्ठी आती है पूरा मोबाइल लगाया जो लाइट का लगता है घर के बताओगे घर के बताओगे ये चलता है लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। क्लियर हो जाए भाई ऐड करेंगे ऐड हमसे पूछा है हमारे गाँव में आम की छाँव में पुरानी पीपल में बरसते बादल में खलियानों में हरे मैदानों में बसंती खेलों में लचकते झूलों चटकती गलियों और की गलियों के घर कब आओगे के घर कब आओगे लिखो कब आओगे तो तुम बिन गाओ सुना सुना है आते हमें घर पाते हैं चिट्ठी आती है पूछे जाती है घर कब आओगे घर कब आओगे लिखो कब आओगे तो तुम बिन ये घर सोना सोना है।
कुछ और होगा कभी ममता की प्यार की गंगा की तो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है खेल वो आंगन के वो सारा आंचल का होती का काजल का वो लोरी रूपों में वो गर्मी हाथों में वो चाहत आँखों में वो चिंता बातों में बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे को देगी यही हर कदम में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिना आंगन सोना सोना है जैसे आते हैं हमें तड़पाते हैं चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे रोजा मेरे दोस्तों को सलाम दे मेरे गाँव में है जो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा उसे मेरे प्यार का जाम दे वही घर मेरा मेरे घर गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा मेरी माँ को मेरा पैगाम उन्हें जाके तू पैगाम दे मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा अपने गाँव में आपकी छाँव में के आंचल से रापती निभाऊंगा मैं एक दिन आऊंगा मैं एक दिन आऊंगा वो लगा वो लंबा लगा और आई
लास्ट अपडेट मांगा फिर नहीं हो रहा है हाँ भाई ऐड दिस का डीजे तापस रिमी डीजे तापस रिमी काम कर रहे हैं पूरा स्पीकर कितना आवाज कम कर इधर वाला कर ले वो आलू का आवाज छोड़ आधा घंटा बजाओ फिर तमाम तो भाग गया यार मैं वहाँ हम को बताया गया अरे मोबाइल कंप्लेंट में कहीं मैं बताऊँ वही मैं तुम्हें अपने मोबाइल से किया पोस्ट बनाना किसी को पूछ बनाना होगा इसको बनाना ये बता दो उसको पूछ लेना तुम्हारे पर आए दी पानी का कुछ यहाँ लाएगा छोटी छोटी पेटी यही पेटी में लेटाए वही हो गई लेटाए के आराम बैठे थे अब तक ये खड़े रहा आज अब ना अभी 8 से 18 के बजे वो पैसे निकाल के बजे हर माइक जाओ भाई पी लो जाओ खा लो
भाई हमने चेला पकड़ लाया। चार एट तो महीने एट जाओ दोनों चेला ये तो भाई की लड़का वो और वो चेला ये उनके भाई का लड़का है। कौन भाई लड़का अरे सचिन का भाई है। सचिन जानते हैं कौन सचिन ये चलाता है जो नहीं उसके भाई पढ़ाई करता है देखे ही नहीं होंगे इसके भाई को ये बना है। ना देखे अरे तेरे पास खिचड़ी लगी है क्या? खिचड़ी लगी आज को क्या बचा हुई बड़ा तो मतलब पानी टकना पानी टकना अपन फूंक पे मिली और काम अब की बार ऐसा व्रत पड़ा है मुस्लिम और हिंदू दोनों के अब की हमारी लड़ाई हुई नहीं ये तो लड़ाई तब हो गया जब उनको काट दिया तब नहीं होता तब वो नहीं पूरा कटरा के कटरा का ये तो लोग चल गया क्या वो ये बात ऐसा तो फेस बता रहा और रिकॉर्डिंग कर रही है मुझे लग रहा है इसका रिकॉर्डिंग होगा नहीं करेंगे लाइव की रिकॉर्डिंग होती है ना YouTube में कैसे ये इस पे जा रहा होगा ना लाइव पे जा रहा ये डायरेक्ट यूट्यूब पे लाइव होगा रिकॉर्ड होगा ना इससे पहले मुझे लगता है इसमें मतलब जो ये स्पेस ले रहा है ना रनिंग का वो नहीं दे पा रहा है सी में उस सी ड्राइव खाली करो थोड़ा सी ड्राइव खाली करो सी ड्राइव मारा है कुछ कितना है इसको देखो इसे हटा देंगे 5 GB है इसे हटा दे रहे हैं 5 GB कितना खाली है ये फाइनल भारी भारी है ठीक है रैम बढ़वा दो अमन जाओ अच्छा ध्यान रखो ठीक है इनका अगर लैपटॉप लगाना हो खाली स्विच करना है ना हमें अगर उनका लैपटॉप लगाना है खाली स्विच करेंगे प्ले हो जाएगा ना ऑनलाइन हो जाएगा You can see this. You can see this. थोड़ा तो पीछे कर बैठा जाए इसी को इसको लिटा देगा मैं लिटाऊं ना ये फोटो को निकालना मैंने लिटा हाँ जो लोग लिटाना बोलो इसको बैठा क्यों बैठे हम लोग पीछे कर रहे हैं इसको बैठे सचिन एक काम करो तुम www.djpapasub.in लाइव में रैंडम रैंडम लगता पड़ी और आगे देखा चढ़ाओ ऊपर किसको लाइव कैमरा कहाँ से बहुत पैसा आएगा यार ऊपर चढ़ाने में बहुत दूर और लगा बलून के पास हाँ पीछे इससे क्या होगा जो आगे खड़े हैं ना ये नहीं आएगा ये रायन तो छोड़ो आ ही रहा है अभी तो फिर मिला होगा हमें ये करना नहीं ना ये तो मतलब वो है ये दिखा रहा है ना
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। लाइट का तो काम करेंगे, बस अच्छा बना के 3 लाइट लगा देना। तब फिर एकदम खुल गया। देखो चीज चल रहा है, इसको बंद कर। इसमें ये साइकिल पे देखो क्या है। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। देखो कहीं सेफ तो है, हो रहा सिगरेट। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। बाबा तो कहते लाइट थोड़ा डाउन है। ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। तो थोड़ा हल्का लाइट डाउन करें। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है ज्यादा डल कर दी इसका। मेरा मन यहाँ की ऑडियंस थोड़ी ना दिखेगी, उसके लिए जूम करना पड़ेगा। ऑडियो में दिखाना भाई। हाँ तो फिर सही है। वॉल चाहिए उसके लिए है, वॉल के लिए है बस। वहाँ जो बोले उसके लिए है। अरे एक बार देखो इतने लोग लाइव हैं, एक और हो गया। इन लोग को हम लोग को ये दिखाना है ये क्या है, और यहाँ कौन खड़ा है जो ये बोलेगा, उसको सुनते हुए देखेंगे। देखो ये देख रहा है। अरे बेटा भाई ऑडियो के ये देखो अपन फोटो ये पेल के लगाए। ऑडियो भी हाँ, देखिए अपन फोटो पेल के लगाए ताकि आदमी पहचाने नहीं देखे। पलक है झपक रहा। वही में साला कहाँ लगाए।
हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम सोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। गाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक चलती है अपनी गाड़ी। हम जाए और कुछ पैसे भी, हम पैसे भी है, हम पैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, ऐसी भी है अपनी नई कहानी। थोड़ी में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़े ईमानी। आंखों में कुछ आंसू है, सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। था लेकिन झूठा तो नहीं है, उम्मीद का दामन झूठा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी पूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी बेचा गाली, हमें काफी आते हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अरे ये तो खा रहा देखा भारी वाला आरो वाला काला आरो वाला किधर है ये वो चल चला गया कौन
ना तकरीर से ना तकरार से फतेह मिलती है तो सिर्फ जलकार से। तो बोलो नारे तकबीर। जान हथेली पर रख कर अपना सीना तान चले। आज अपने खून से हम धोएंगे तेरे चरण। माँ तुझे सलाम। हर हर महादेव। शिवा पर पूरी है शिवा पर पूरी है।
आपकी कंगन खनकाती है और माधुरियाँ गाती है। झम झम सी पवन चले कोयलिया गीत सुनाती है। बच्चा वह आज के चांद को चंदा मामा कहता है। जिस देश में गंगा बहता है, जिस देश में गंगा बहता है, आपकी कंगन खनकाती है और माधुरियाँ गाती है। झम सी पवन चले कोयलिया गीत सुनाती है। बच्चा वह आज के चांद को चंदा मामा कहता है। जिस देश में गंगा बहता है, जिस देश में गंगा बहता है। गाँव का पनघट का पानी भर का दरिया कोई दीवानी। ठंडी ठंडी कुर्बानी में मीठी मीठी खुशबू, मधु खुशबू में होता है कैसा जादू। जादू ऐसा होता है कि हर कोई झूमता रहता है। जिस देश में आपकी कंगन खनकाती है और माधुरियाँ गाती है। झम सी पवन चले कोयलिया गीत सुनाती है। दिल में बसा कर गाँव की ममता, शहर में आया मैं छोटी रमता। दिल में बसा कर गाँव की ममता, शहर में आया मैं छोटी रमता। सारे मान कर और उनको अपना कर, तरह तरह के नातों से घर बन जाता है सुंदर। सच्चे रिश्तों का वह प्यार बरसता रहता है। जिस देश में गंगा बहता है, जिस देश में गंगा बहता है। आपकी कंगन खनकाती है और माधुरियाँ गाती है। झम सी पवन चले कोयलिया गीत सुनाती है। बच्चा वह आज के चांद को चंदा मामा कहता है। जिस देश में गंगा बहता है, जिस देश में गंगा बहता है। इतनी गर्मी में इनको सिर्फ तुमसे ही आके चिपकना, मिट्टी से घर में रखा होगा, मिट्टी में मिलाने। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया।
जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे इंडिया, it happens only in India, it happens only in India, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे इंडिया, it happens only in India, it happens only in India. जहाजन पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, जहाजन पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुँह से तो कुछ ना बोले चुपके चुपके मेल बहाए, जहाजन पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुँह से तो कुछ ना बोले चुपके चुपके मेल बहाए, और लश्कर से पकड़े लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ, जहाँ दिन निकले सुनकर चलो कुर्बानी और आजाद, जहाँ दिन निकले सुनकर चलो कुर्बानी और आजाद, जहाँ मजहब से ऊंचा है इनका तारीख एक समान, अरे हक नहीं है साथ ऊंचा है देख ले सारी दुनिया, शबरी के खाके फिर राम ने प्रेम की कथा कराई, शबरी के खाके फिर राम ने प्रेम की कथा चलाई, मीरा ने बीच जहर का प्याला प्रीत की रीत निभाई, जहाँ प्रेम की धुन पे गोपियों संग नाचे कृष्ण कन्हैया, कहीं होता है भैया। सावन के झूले कहीं पे बैसाखी के मेले, अरे सावन के झूले कहीं पे बैसाखी के मेले, लगता है खुद कुदरत इस धरती पे आकर खेले, जहाँ माँ से लोली सुने बिना बच्चों को लाए इंडिया।
यहीं का ऑडियो जाएगा, यहाँ का ऑडियो जाएगा। हाँ, दे के कहीं लगाओ फिर और क्या होता ही है। अरे वो तुम्हारा वो वाला माइक यहाँ लगा के यहाँ लगा के रख हो जाएगा। आगे ट्रांसफर स्पीकर पर रख नहीं तो यहाँ का वॉइस कैप्चर करेगा ये सब। हम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम जिंदगी का ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जीता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। Hello and a beautiful morning to everyone present in this beautiful land of confluence of three rivers, Prayagraj. The land whose name is found in ancient literature. Prayag was also known as Kaushambi in the late Vedic period, named by the Kuru rulers of Hastinapur, who developed it as their capital. It was one of the greatest cities in India until the end of Mughal Empire. Akbarnama mentions that Mughal Emperor Akbar laid the foundation of an imperial city known as Allahabad. Allahabad was later renamed as Allahabad by his son Shah Jahan. And Allahabad, it started with the I. Later he changed it to A. I stands for Allahabad and then it was renamed as Allahabad. Prayagraj in Sanskrit means the king among the five rivers, and the name is a term of respect to indicate that this confluence is the most splendid one of the five sacred confluences in India. A number of attempts made to rename Allahabad to Prayagraj from 1992 to 2001 by various governing bodies of India. Eventually, the rename finally succeeded on October 2018. Each one of us must feel lucky to be in such a sacred place on earth. Ladies and gentlemen, welcome to Prayagraj. We proceed to lamp lighting. जीवन की लाज को शंभु सत्कारी, जीवन की लाज को शंभु सत्कारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी, जीवन की लाज रखो शंभु सत्कारी, जीवन की लाज रखो। क्या हो गया? बंद हो गया? कैसे बंद हो गया? भाई दूसरा लगा नेक्स्ट करते हैं थोड़ा पीछे कर दो फिर चलना चलो One more, big hand. ओम जय जगदीश हरे स्वामी। Thank you, sirs. Thank you, ma'am. Every good deed should begin by thanking God for His gracious blessings upon us, which has facilitated us to endure this remarkable journey of life with purpose of knowledge.
Now the students of Department of Forensic Science from Sam Higginbotham's Agricultural University will take the dice and sing Saraswati Varna and initiate this wonderful event. कौन वाला है? और माइक में ला। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लं ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकं विदतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तं परमेश्वरं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। Thank you very much, students. It was a nice one. Now I consider myself that I am privileged to call upon the dignitaries of our dice, who are esteemed and exceptional members of the society and of our medical fraternity. Firstly, I would like to call upon the dice Honorable Justice R.D. Khare Sir, High Court of Judicature at Prayagraj, who will be accompanied by Professor and Head of the Department of Pathology, MLN Medical College, Prayagraj, Dr. Vatsala Mishra ma'am, and they will be facilitating our sir also. Welcome, sir. Welcome. Dr. Vatsala Mishra ma'am, Professor and Head of the Department of Pathology, MLN Medical College, Prayagraj, will be facilitating our Justice sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Next, I'll be inviting the senior most and experienced Dr. V.B. Sahai, sir, who is the founding head of our Department of Forensic Medicine and Toxicology, Motilal Nehru Medical College, and he will be accompanied by Dr. Archana Paul, ma'am, our head of the department. A big round of applause, please.
Dr. Archana Kaul ma'am will be facilitating Dr. V.B. Saha sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Next upon the sequence will be Dr. U.S. Sinha, sir, who was succeeding head of our Department of Forensic Medicine and Toxicology, Amalan Medical College, Prayagraj. He will be accompanied by Dr. Rajesh Kumar Rai, sir, Associate Professor of our department. Welcome, sir. Dr. U.S. Sinha, sir, will be facilitated by Dr. Rajesh Kumar Rai, sir. Thank you, sir. Next, I would like to call upon Dr. Mukesh Yadav, sir, President of Indian Association of Forensic Medicine and Principal of Rani Durgavati Medical College, Banda, and he will be accompanied by Dr. Dinesh Kumar Singh, Assistant Professor of our department. Welcome, sir. Dr. Dinesh Kumar Singh, sir, will be facilitating Dr. Mukesh Yadav, sir. क्या रे सब पीछे गई सचिन स्टैंड स्पॉट पीछे करो बोल दो ना करो Dr. Vatsya Mishra ma'am will be facilitated by our HOD, Dr. Archana Kaul ma'am. Thank you, ma'am. This CME on Medical Negligence and Consumer Protection Act is the brainchild of our respected professor and head of the department, Professor Dr. Archana Kaul ma'am. And she is also the organizing secretary, under whose guidance this program was initiated and the play is in front of you all. With this, I call upon our head of the department and organizing secretary of this National CME 2023, Dr. Archana Kaul ma'am, to take over the podium. Thank you. Thank you, Dr. Bansal. Good morning, all, and welcome, Honorable Chief Guest, sir, respected Dr. V.B. Sahai, respected Dr. U.S. Sinha, sir, respected Dr. Vatsya Mishra ma'am, respected Dr. Mukesh Yadav, sir, respected teachers, delegates, colleagues, juniors, and students. On behalf of my whole organizing team and Department of Forensic Medicine, I'm privileged to welcome you all here in this National CME program.
The purpose of this event is to bring all learned dignitaries from various fields of college of India under one roof to discuss the sensitivity of the topic. Hope we all utilize this opportunity to match ourselves in this shared knowledge and this be fruitful to all our delegates and participants. As you all aware of the current scenario of the healthcare system in our country, we all have gathered here to discuss Medical Negligence and Consumer Protection Act, for which our respected speakers are uniquely placed to discuss and highlight the key points and reform in the system for the audience. I welcome our Chief Guest, Honorable Justice R.D. Khare, sir, for High Court Judiciary. He is well recognized figure in our city and do not require any introduction. He is very well known for his excellence in judiciary system and an outclass personality who is always ready to extend his helping hand in any difficult circumstances. I welcome you, sir. We are very honored with your presence and for the time that you have taken out for to bless us. The dignitaries present here have gathered from various cities of our country to share their experience and knowledge so that we can benefit and apply these suggestions in our future prospect. We have arranged paper and poster presentation opportunity for our delegates to put forward their thoughts in this vast field. All the session and exhibits will be distinctly judged by our expert panelists. It is a privilege to host you all in our city, and now I declare the CME open for further proceeding. Thank you all for joining us. This is Knowledge Feast. Thank you. Thank you, ma'am, for such a wonderful speech. I would request our senior most sir, Dr. V.B. Sahay sir, to facilitate our current HOD, Dr. Archana Kaul ma'am. लाइट कम ज्यादा करे, बहुत ज्यादा ओवर कर दे रहा है। स्क्रीन पे ज्यादा लाइट है ना, वो सही है, रूम है ना, रूम की ज्यादा क्वालिटी है। चाइनीज है ना, चाइनीज है ना, Thank you, sir. Thank you, ma'am. रूम चाइनीज है वो। Now I invite Dr. Vatsala Mishra ma'am to spare a few words. Dr. Vatsala Mishra ma'am is professor and head of the Department of Pathology and vice principal of MLN Medical College, Prayagraj. She is the academic in charge, chief warden of Girls Hostel and proctor of MLN Medical College also. She also holds various academic and administrative responsibilities and she is one of the senior faculty of this medical college. Welcome, ma'am. Good morning, everyone. First of all, I like to clarify I am not vice principal, but today I have been delegated this duty to act as a principal in the absence of our regular principal, Professor S.P. Singh. So, in his absence, this is my responsibility to welcome all the guests and all the delegates in this Motilal Nehru Medical College, where we are organizing this CME in Forensic Medicine and Consumer Protection Act. I think as far as I remember in near future, this is the first CME organized by the Department of Forensic Medicine here. And they have taken this task and done all the work to make it successful. Now I also work because this is a required one. With day by day there is increasing cases of consumer protection, cases, medical legal activity,
पहले जो मेडिकल लीगल में शायद हम लोग पढ़ते थे तो कुछ ही थोड़ी चीजें ही पढ़ते थे, बट नाउ इवन क्राइम्स हैव बिकम सोफिस्टिकेटेड, very sophisticated, so their investigation is also become very difficult. So this is the need of the time that we have such educative programs and CMEs where we can interact with each other. So on behalf of the college, I express my sincere thanks to Justice R.D. Khare sir, who has spared his valuable time to come here and inaugurate this CME. Professor V.B. Sahai, he is teacher of teachers. He was our teacher, and I am very happy that he has spared his valuable time to be among us. By seeing him, we still feel that we are in the student age. We have come back. Then we have amongst us Professor U.S. Sinha. Again, he was here as a teacher, as a senior to all of us, and we have benefited by his teaching and by his classes. So I welcome Dr. Sinha sir also here. Then National President of Forensic Medicine Society, he has spared his time to come here and take the lectures and benefit these who are coming to attend this conference. So I welcome you, sir, here. So once again, without taking much time, as we are already coming running behind the schedule, I will welcome one and all in this auditorium on behalf of our Motilal Nehru Medical College, and hope the CME will help and benefit on a large way to all the delegates sitting here. Thank you. Thank you, respected ma'am. I'm sorry for my mistake. Next, I call upon Professor Dr. V.B. Saha sir to share with us a few words from his vast knowledge of wisdom. We are very lucky to have the blessings and encouragement of sir, who is the founding head of our Department of Forensic Medicine and Toxicology, Motilal Nehru Medical College. He is the renowned name in forensic medicine fraternity. Sir has held various posts in this field, including Director of Subarki Institute of Medical Sciences, Vice Chancellor, Swami Vivekanand Subarki University, Meerut. He has been principal in different medical colleges of Agra, Kanpur, and Lucknow. He has held the post of Director General Medical Education in UP. Ladies and gentlemen, a big round of applause for teacher of teachers, Dr. V.B. Saha sir. Honorable all the guests, delegates who are present today. On this occasion, I'll be very short because we are running late, as she has already said, our principal acting today. I joined the Department of Forensic Medicine, जो तुलसी कृत रामायण में कहा गया है, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिलई सहाय। जो भवितव्यता हो कोई होती। The name of this auditorium, Dr. P. the first principal of this college, a surgeon, a renowned surgeon. And that renowned surgeon who was here, when I did my graduation, there was no medical college at Allahabad. It is a coincidence that as soon as I graduated, this college came up in 1961. And I rushed here from my two colleges to meet the principal to say, sir, I want to be a surgeon. अच्छा, तो सर्जन बनना चाहते हो? तो अभी तो खाली 2 डिपार्टमेंट है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो एनाटॉमी ज्वाइन कर लो, अच्छी ग्राउंडिंग हो जाएगी, and so on. And then I became ultimately, somehow the other, as the time says, I went in pathology, I became a pathologist. After pathology, I
thought that, well, I could not get a clinical department, let me go in forensic medicine. I went for it. जब मैंने forensic medicine किया, I was the sole man in the department, single man department. उस समय सिविल सर्जन हुआ करते थे जो आज आया करते थे लेक्चर लेने. And from that day, from that start, gradually, the Department of Forensic Medicine started growing, and the first postgraduate of the department of this medical college, who is sitting on the dais, USNA. He rose to the rank of the principal also of this college, a good administrator, a good thing. But what I still feel today, that Dr. Sinha should have done much more for forensic medicine at Allahabad, which now his student Archana is doing. Archana has been, when she came and told me, only a few months back, sir, हमने एक कॉन्फ्रेंस हम लोगों की फोरेंसिक मेडिसिन की IAFM, इंडियन एकेडमी ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन, इज द हाईएस्ट बॉडी, नेशनल बॉडी, वेल नोन बॉडी, और उसका कॉन्फ्रेंस हमने आगरा में, when I was the principal there, I had hosted people, and I remember आज के दिन मेरा ये शायद, if I am not very wrong, अब फोरेंसिक मेडिसिन में मेरे से उम्र दराज और कोई शायद है नहीं. आज so when Archana told me that she is hosting a conference in forensic medicine, I was so happy and was blessed, started blessing. Requested Honorable Hare Saab to honor this function and give his blessings. The growth of this speciality, which speciality? जब हम थे फोरेंसिक मेडिसिन में, जो कोई पूछता था जब कि आप कौन से डॉक्टर हैं, किसके हैं, तो लोग कहा करते थे कि ये मुर्दा डॉक्टर है, मुर्दे के डॉक्टर. इससे ज्यादा जिंदा डॉक्टर और कोई नहीं है. आपको ये बताऊं, आप जाइए गायनेकोलॉजी में फोरेंसिक की नॉलेज, सर्जरी में फोरेंसिक की नॉलेज, ऑर्थोपेडिक्स में फोरेंसिक की नॉलेज, ऑप्थेल्मोलॉजी में फोरेंसिक की नॉलेज, एवरीवेयर, wherever law is involved in the medical, that is the area where the forensic medicine is with the law. And therefore, I requested the Honorable Khare sir, that's the right person to be our chief guest and inaugurate this function. So with this, I only say extremely happy that the learned speakers this conference, which has been chosen by the organizing secretary Archana, and those learned is out of the Dr. Vijay Nath from Bangalore, Dr. Mukesh Yadav, who is today the national president of IAFM, and he hosted conference last year in the PGI Lucknow, one of the wonderful Remembrance Conference. Dr. Adarsh Kumar, a man who is known in forensic medicine. He is from All India Institute, and a forensic medicine word goes with his name as Dr. Adarsh. Dr. Moss Missing, she is here with us, one of the great. So all these speakers who are going to speak on so important academic things, I'll tell my students today who are lucky today. I'll just take a minute. I'll say that our students here who are here
those students, ये लैपटॉप आ जाए. okay, those students, they are lucky to have such good faculty in this department now, headed by Archana, and you will be learning your dedication. My only one advice to you as a person at this age, for the dignity of medical education. Today what we are suffering, आज हम लोग क्या कहते हैं कि हमको कंज्यूमर फोरम में ये हो गया, आज ये हो गया, आज हमको ये करना पड़ा. Why? We remember not very far, only about a year back, Dr. Archana Sharma, who committed suicide. And this Dr. Archana Sharma, which is yes, sir, this Archana Sharma, who committed suicide for no fault of her. She was implicated by the system which is working there, and the system is today, the system has come that the people are very unfortunate, which I must say, कि आज के दिन मॉब को सैटिस्फाई करने के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कर डालती है. उसको lady who died was of PPH, which is very known, common, very, that there is a post complication of after delivery. Already एक अस्पताल, दो अस्पताल, तीन अस्पताल से हो करके फाइनली उसको भेजा गया, इसमें यहाँ आई on because of the PPH sick died. The depression. The relations were all satisfied, बहुत केयर किया, but then the people, all those people who are the interested people, some of the वकील, लॉयर, कुछ लोग उसको उकसा करके कि तुम केस करो, तुम्हारा ये होगा, ऐसा होगा, एंड अल्टीमेटली एक मॉब बनी है, मॉब पॉपुलेशन आया, एंड दैट मॉब पॉपुलेशन it ultimately led to administration to file an FIR against her, and that FIR में वो उसके husband. All these things happen today. हम उन डॉक्टर्स को, जो हम आज डॉक्टर हैं, जिस प्रोफेशन में आए हैं, हम अपने उस प्रोफेशन को तो डाइल्यूट कर रहे हैं, हम भी उसके जिम्मेदार हैं. और इसलिए मेरा एक सब अपने बच्चों से जो आज एंटर कर रहे हैं इस प्रोफेशन में, उनको ये सलाह देता हूं, तुम्हारे ऊपर हॉस्पिटल्स में आए दिन पेशेंट ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, हम स्ट्राइक पे चले गए, ये सब चीजों को बर्दाश्त करें. एक जिस प्रोफेशन में तुम आए हो उसकी डिग्निटी को मेंटेन करो. यू विल सक्सीड, एंड सिनेरियो हैज टू चेंज. Scenario has to change. I request the legal system to look into and consider that where only I came to yesterday, that post of experts in forensic medicine has been created all over there. But the way in which it is being handled, people are not joining, not coming up. These are the things where one has to ponder, and who are the people? It is the legal luminaries and the government and our medical profession. So let us see that we in this department, for this department, we work in such a way that the dignity of the medical profession is maintained. और फिर लोग कहने लगे कि ईश्वर के बाद सिर्फ डॉक्टर है, भगवान अगर है तो ईश्वर के बाद डॉक्टर है.
इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सब लोगों को आज के दिन बधाई देते हैं। अल्लाह को विशेष मुबारक और पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने ऐसा किया। Thank you so much indeed for giving me the pleasure. I never knew that Archana is going to ask me to speak. And thank you very much. Thank you, sir. Thank you, respected sir. It was an excellent speech and very motivating. जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। Proceeding forward, I would like to call upon Dr. U.S. Sinha sir, who was the succeeding head of the department after Dr. V.V. Sahai sir in the Department of Forensic Medicine and Toxicology. He has been a medical legal expert of Police Department in Prayagraj. Sir at present is an emeritus professor of Department of Forensic Medicine in United Medical College, Prayagraj. I request sir to grace us with a speech. आदरणीय आर.डी. खरे साहब, हमारे गुरुजी प्रोफेसर वी.वी. सहाय साहब और सम्मानित डैश पर बैठे हुए अतिथिगण, प्रिय डॉक्टर वत्सला मिश्रा जी, इस सभागार में उपस्थित मेरे परम प्रिय डॉक्टर एस.के. मिश्रा साहब तथा अन्य काफी लोग हैं। अगर नाम गिनाने लगूंगा तो 5-10 मिनट जरूर लगेगा, क्योंकि मैं सभी को पहचानता हूं बहुत बढ़िया से। एक्चुअली लोग आए और चले गए, कुछ लोगों ने 2 साल काम किया, कुछ लोगों ने 4 साल काम किया, और साहब बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ये मेरी कर्मशाला रही, ये मेरा मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज 1976 से लेकर 1921 तक मेरी कर्मभूमि रही। ये फॉरेंसिक मेडिसिन मेरा मंदिर रहा और विषय मेरी जो है पैशन रही। मैंने इस सब्जेक्ट के बढ़ाने के लिए जितना कर सकता हूं, मेरा दावा है कि इस उत्तर प्रदेश में कोई भी चिकित्सक ने नहीं किया फॉरेंसिक मेडिसिन में। हमारे यहाँ के जो छात्र थे निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छे थे, और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से हमारे यहाँ सदैव बाहर के परीक्षक आते थे और यही कहते थे कि डॉक्टर साहब, आपके यहाँ की पढ़ाई, आपके यहाँ की शिक्षा हमारे यहाँ से कहीं बेहतर है। लोग तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को ही इज्जत करते हैं। आपको इस बात का जान की खुशी होगी कि हमारे मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के छात्र मैक्सिमम डिस्टिंक्शन और पेपर्स पाते रहे, जितना कि केजीएमसी के लोग नहीं पाए। उसका कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण था कि रूट ग्लास वर्क रूट हम लोगों ने तैयार किया और पढ़ाया। जब मैं इस विभाग में आया था 1976 फरवरी में, तो सिर्फ एक डंडा था और एक रस्सी थी, और कहा जाता था एक जूरिस है। उस समय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य कहते थे जूरिस है। हम प्रोफेसर सहाय साहब थे, और मुझे इस बात का अनुभव है कि किस मनोदशा में मैंने उस विभाग में रहकर काम किया। मैं सदैव अपने विभाग का प्रेरणा स्रोत रहा, और मैंने इंकरेज किया। 16,000 पोस्टमार्टम मैंने किए हैं और 72 पेपर नेशनल इंटरनेशनल पब्लिश। 5 किताबें मैंने लिखी है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की। चीज ये है कि मैं वो फॉर्मेट वाला व्यक्ति नहीं हूं कि पेपर में दिखाया कि साहब ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। मुझे विश्वास है कि काम करना चाहिए, और मैंने काम किया। मुझे किसी की तारीफ की आवश्यकता नहीं फॉर्म पे, जो किया बहुत किया, और ईश्वर हमारी बराबर हमारे आशीर्वाद देते हैं। मेरे सहयोगियों ने, मेरे छात्रों ने मुझको बराबर बल दिया, इनकरेज किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर अर्चना को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने एक हिम्मत का कार्य किया। भगवान करे कि खूब बढ़िया सक्सेस हो। कोपरा के बारे में यहाँ के जो आए हुए अतिथिगण हैं अच्छी तरह से लेक्चर ले और ये सक्सेसफुल हो। धन्यवाद।
respected sir, it was a wonderful speech and very motivating one. Moving on to our presidential speech by Dr. Mukesh Yadav sir. सर के लिए मैं दो लाइन बोलूंगा. काम ऐसा करो कि लाभ हो जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए. यहाँ जिंदगी को हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस तरह कि मिसाल बन जाए. Dr. Mukesh Yadav sir is currently working as principal Rani Durgavati Medical College in Nanda. He is the president of Medical Legal Society of India and is also elected as National President of Indian Academy of Forensic Medicine 2022. I request you sir to take upon the stage. Welcome sir. Thank you, Dr. Bamsal, for nice introduction. On behalf of the Indian Academy of Forensic Medicine, first of all, I would like to congratulate Dr. Archana and her whole team, because I am feeling very privileged from my core of heart that I am attending a national conference in the MLN Medical College. Justice Adi Khare sir, your presence is very valuable for all of us because the subject and topic and theme, they related to law as well as medicine, and as you know, both are dynamic in nature. With the change in circumstances, everything will change, law will change, new laws are coming, and similarly with the advancement in the medical field, the medicine which are today maybe drug of choice, may be changing. And the COVID has realized all of us that without medical science, any country cannot sustain development, which as India, we proved during COVID crisis. I still remember as a principal of medical college in Banda, a small city, new medical college, there were 30 to 35 deaths per, and sir, one of your Jet sir, unke related, they had been admitted, and we are not having oxygen supply. That medical legal scenario, I still remember. Me and my wife not able to sleep for even a week. The 24-hour call received from all the corner, including Chief Minister, डॉक्टर साहब देखो पेशेंट कितने बच सकते हैं. तो वो सिनेरियो है कि आज हम लोग मेडिकल लीगल एक कॉन्फ्रेंस के लिए डॉक्टर अर्चना के इनिशिएटिव से यहाँ पे बैठे हुए हैं. और मैंने आपको सबको पता है कि मेडिकल कॉलेजेस में 31st March द फाइनेंशियल बर्डन being DDO, you have to sign every document. I accepted Dr. Archana's invitation, not only to attend, but to deliver a lecture which will be beneficial for all of us, especially young generation sitting in this auditorium. So again, I congratulate Dr. Archana and team and my Guru of Guru. We call Bhishma Pitama of Forensic Medicine, Dr. B.V. Sahai sir, Dr. U.S. Sinha sir, Vasula ma'am. अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर एस पी सिंह सर नहीं है क्योंकि इंटरव्यू लेने गए हुए जैसा मुझे पता है कि वी आर ऑलवेज ऑन कॉल. स्टिल वी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट मेडिकल प्रोफेशन. दिस इज द ओनर्स ऑन फॉरेंसिक मेडिसिन स्पेशलिटी. इफ एनीबडी is able to protect a clinician, that is none but our expert, and we are ready to serve you to protect you. Next that lecture you will realize this. Thank you very much. Thank you sir. सर ने जो कहा उससे मुझे कुछ याद आ गया. याद नहीं आया, देख के पढ़ रहा हूं. जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर परिस्थिति में खुश रहे जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है. थैंक यू सर. नेक्स्ट टाइम चीफ गेस्ट सर ऑनरेबल जस्टिस R.D. खरे सर, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट प्रयागराज. ही इज वन ऑफ द फिगर and is one among the most influential persons of the country. Power without empathy is dangerous. But sir, here, despite the power he possesses, is only for his generosity and kind heart. It is an honor and pleasure to have you, sir,
with us as our chief guest. I call upon our chief guest, sir, Honorable Justice D. sir, to take and give his praise with few words from his experience. Welcome, sir. Good morning, everybody. I feel honored today and I thank the organizers who have invited me to attend this conference as a chief guest. And I am really humbled. I am no expert in any field and I am feeling slightly complexed, I would say, to be amongst you people, authorities in one field or the other. I will be very brief. I'll not take much of your time. I'll not bore you with my monologue. But let me assure you that in times to come, forensic medicine will gain importance and is gaining importance every day. The legal side is heavily banking on the forensic department in various cases when it is engaged in justice delivery system. As the previous speakers had mentioned, and rightly so, for patients, doctors are gods. In the sense that the doctors treat the patient for their medical ailment with their professional expertise, and the patient in full faith hopes that the doctor would remedy him of his ailment, put him back to normal life and deal with his issues. So he reposes absolute confidence in his doctor, which in turn increases the expectation of a patient vis-a-vis his doctor. As one of the previous speakers had mentioned about democracy taking precedence in decision making by the administrative departments, I would add media trial also to that. It is the general public who has to understand and respond to the situation where if democracy is taking precedence or media trial is taking precedence, people should speak out and be vocal about it so that such things can be adequately controlled. To my opinion, the medical profession was brought under the ambit of Consumer Protection Act to ensure that the quality of medical service is properly maintained and to ensure that there is no deficiency in medical service rendered by doctors, and which has ultimately resulted in patient-centered laws and rules being formulated, which are still being formulated. It is patient-centered laws. So they are protecting the patients primarily on the principle that medical treatment
may not be converted into medical industry. Perhaps that is the purpose. But how do the medical practitioners who are engaged in their profession with utmost diligence save themselves from illegal or unnecessary prosecution at the behest of the patients when they are brought under the Consumer Protection Act, where they are treated to be service providers? To my limited understanding, what the need of the day is to identify the minimum reasonable standard in the present socio-economic and cultural backdrop, which will not only facilitate the adjudication of such cases in a proper manner, but if such standard, if carved out, are adopted by the doctors in their day-to-day functioning, it will save them from various such type of situations. So primary thing to my mind is to identify the minimum reasonable standard of medical care, competence and caution. That is to be very well carved out and followed by the medical practitioners so that they can save themselves from such type of frivolous litigation, which at times are instigates them. Especially when the government is trying to constitutionalize medical rights to its patients. This is to be seen with the fact that as on date, medical treatment has become extremely expensive due to massive private investment for medical care, healthcare, and steep decline in state funding in which concerns the health department, which has raised the cost of treatment, and therefore every patient is aware, not fully but even half aware of what he can do to maximize his interest, no matter what happens to the person against whom he is proceeding. May it be the doctor, may it be a system, anybody. So that is to be seen and acted upon. All that is required is, as far as I understand, you cannot be, or anybody cannot be penalized or prosecuted for any injury which may be caused to a patient. But such prosecution can be done only when the patient suffers an injury due to the conduct of the doctor. And that is where the quality of medical treatment has gone below than what is really required. If that is maintained, I think there is no need to worry. But with times to come, I can assure you that this Department of Forensic Science and this field is going to attain the major stage in medicine as well as in the legal side. Thank you very much. I'll not take much better. Thank you. Thank you, sir. We are honored to have you among us and for a nice speech. I will request you, sir, to facilitate our alumni. In the sequence, I would like to call Dr. V.V. Sahai, sir.
Next, I would like to call Dr. U.S. Sinha, sir. Dr. Y.K. Pathak, sir. Dr. A.K. Gupta, sir. Dr. P.C. Srivastava, sir. Dr. S.K. Pandey, sir. Dr. A.K. Singh, sir. Dr. Archana Korma. Dr. Soni Verma, ma'am. Dr. R.K. Verma, sir. Dr. M.K. Gupta, sir. Dr. Faraz Rahat. Dr. V.K. Sonkar, sir. Dr. S.K. Singh. Dr. Shweta Saroj. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I would request you all to join us for our presentations. I would request the present on the stage
to take sirs to their respective positions. Moving on to the first session of the day, that will lead the theme of our CAE, Negligence and Consumer Protection Act. It will give us topic insight into the legal and medical dialogue. It is my honor to invite Dr. Vijaynath sir to share with us his knowledge on the topic, ethical and unethical, a deep dive into the issue. Dr. Vijaynath sir has done his MBBS from Karnataka Institute of Medical Sciences, Hubli, Karnataka University, Dharwad, Karnataka, India. He has done his MD in Forensic Medicine and Toxicology from M.R. Medical College, Gulbarga. He has also done DMD Forensic Medicine and Toxicology from New Delhi. He has been awarded the degree of M.Norms in Forensic Medicine and Toxicology from the National Academy of Medical Sciences, New Delhi. Apart from forensic medicine, sir has also done MBA in Hospital Management, Alberta University, Tamil Nadu. He has also done a PhD in Medical Anthropology, Karnataka University, Dharwad. Dr. Vijaynath sir has also been awarded the fellowship in Indian Association of Medical Legal Experts. He is a member of World Association of Medical Editors. Sir has authored 3 chapters on modern textbook of forensic medicine and toxicology by Patni Mahanta, and other 2 chapters in the book Medical Jurisprudence in Clinical Forensic Medicine and Indian Perspective. Sir, welcome, sir. Dr. Sai Narendran? Dr. Sai Narendran? Dr. Sai? Hello. Chairperson for this session, Dr. Shri sir, Professor in Actually, Department of Surgery. The IT partner, sir, Professor Forensic Medicine, and Dr. S.P. Mishra, sir, Professor Gastro. Sir, please. ये भी तो उसको समझ देना चाहिए ना भाई, ये यहाँ दे रहे हैं, ये उसको कैसे देगा? पहले उसको करना पड़ेगा ना, पहले उसको आस्था बनाना पड़ेगा। क्वालिटी बढ़ी तो नहीं ना पता है
इसको डिसमेंटल कर दो, दिखेगा नहीं। डायस भी in the interest of saving time, may I request Dr. Vijaynath to please start his lecture. Welcome to Allahabad. Prayagraj. Thank you very much, sir. I firstly thank the organizing team for considering me and giving me an opportunity to talk upon the topic of ethical and unethical aspects of medical practice. Just to brief, to warm up this one, it's ethics basically is a branch of philosophy that deals with the moral principles, and it is derived from a Greek word ethos, the meaning distinctive character, spirit, and attitude of a culture. Bioethics is the one which leads with ethics related with the biology or living beings, and the topic for our this one is a medical ethics, that is ethics for medical professionals. Looking at the dimensions of it, we have a professional ethics, cultural ethics, philosophical ethics, legal ethics, environmental ethics, a corporate ethics, and last is a personal ethics. Looking at its overview, the obligation of a moral nature which govern the practice of a medicine and medical ethics has developed over centuries has been altered by religion, social change, and the behavior of a patient and physicians. Humans are a dominant force in the society and have a substantial positive implications for healthcare and medical ethics. And the biggest, this one is India has the largest number of bioethics unit compared to any country, reflecting the importance of ethical behavior in the Indian society. What exactly is important in medical ethics? Medical ethics guide your decision making and your interaction and your conduct with the patient. It is an important part of our medical profession, which is always expected from us. Violations of medical ethics can threaten our jobs, medical license, or even constitute crime. Ethics provide as a moral compass to use in a situation that may not be straightforward. Why we are interested in this and what exactly is expected? This is to foster the trust, ensure the best outcome for the patient, and to preserve the reputation of our profession. The basic principles or pillars of medical ethics are autonomy. A part of it, I'll be dealing in paternalism also. Beneficence, non-maleficence, veracity, and justice. Coming to autonomy, this is a patient autonomy that refers to the patient's right to make decisions for themselves according to their own system of morals and beliefs. Patient education and informed consent are important elements of proper autonomy. When is this autonomy challenged? This is a task in two situations. One, in case of incompetence, where the patient is legally deemed unable to make rational decisions for themselves. Case of a dementia and a psychosis. The other case is in case of incapacity, where patient is clinically determined to be unable to make rational decisions for themselves. That is in case of lack of consciousness, delirium, and some part of neurotic cases as well. Threat to autonomy is when usually in a patient in a psychiatric settings, and paternalism is the one, as typically being told by most of the speakers. This is the one where doctor used to take a decision on behalf of a patient. So when it started, it was the beginning of the profession where it started. Beneficence, it is a value in which provider takes actions or recommends courses that are in patient's best interest.
And it is not coercing or manipulating the patient into making a decision against their values, even though it may be objectively be the best decision for health. Keeping the individual patient in mind, beneficence is not the same in all situations. When the patient autonomy is compromised in case of incapacity, beneficence is the guiding ethics. Non-maleficence. Non-maleficence is closely related to beneficence. It is abstaining from any action that may bring harm to the patient. That's typically called do no harm. Beneficence is what you do, and maleficence is what you don't do. Non-maleficence and a beneficence can conflict each other. The principle of double effect here is unintended medical consequences are acceptable if the intended consequences are legitimate and the harm is proportionately smaller than the benefit. So this is in case of where removing an organ or a limb that is causing a disease. Controversial to this is performing an unrequested abortion to save mother's life. Now, how is this maleficence different from beneficence? Beneficence is the action that promotes the well-being of others, whereas non-maleficence is the means do no harm. The actions in beneficence is helping to prevent or remove harm, whereas in maleficence it is not doing any harmful action. Importance may be given in case of a non-maleficence, whereas it is considered as a primary thing in case of maleficence. The examples for these are rescuing a person from danger, or encouraging a smoker to quit smoking, and helping a homeless person in case of beneficence. Whereas in case of non-maleficence, it is not giving a person harmful drugs, not encouraging someone to smoke, or not saying hurtful things to another. Veracity, it's typically known as honesty in a common this one. The most important part of a truth telling is revealing all patient details as a patient's medical conditions to them, as well as risks and benefits of procedures and their prognosis if known. It is also included or informing a patient any mistake that have been made by their care. This is where we are lacking, or this is where it is leading us to the complications of a legal system. Veracity will be the critical element ensuring informed consent. When is this veracity challenged? When a patient may be reasonably expected to engage in self-harm with the disclosure, that is, use your clinical judgment in such cases. So typically here, this is sometimes known as white lies also. It is never okay to lie or deceive a patient for any reason. Justice. Distributive justice is the proper allocation of a resource in a manner that is fair and just. It is not necessarily equal allocation of resources. For example, in case of a triage, a person coming with the ankle sprain and a person coming with the acute myocardial infarction. So the importance has to be given to the myocardial infarction rather than the ankle sprain. So here the distributive this one is slightly hampered, or you can say it is the time which the doctor is spending more with the ill patients compared to the less ill patients. When is this distributory justice is challenged? A more contentious issue in distributory justice is providing universal health care, that is in case of VIP patients, or in case of a pandemic, or in cases of natural disasters or mass disasters or natural calamities. Ethical theories. There are different schools or different ways of being ethics is defined. One is teleological or consequentialist
ethics. Second one is deontological ethics. Third is virtue ethics. Fourth is moral relativism. Last is divine and command theory. The consequentialist or teleological ethics is the one where it is result based and it evaluates the morality of an action based on its consequences, judges whether or not something is right by what consequences are. So again, the utilitarianism, this is one of the part of what you can call teleological or consequentialist theories. It is a form of consequentialist where best action is the one that leads to the largest overall happiness for the greatest number of people. Coming to the deontological ethics, it is derived from the Greek word deon. It's a duty based, focused on act and not on the consequences. And it evaluates the morality of an action based on the inherent morality of the act itself, rather than its consequences. Deontologists believe that there are certain moral duties or obligations that must be followed regardless of the outcome. The other one is virtue ethics. This is a type of ethic evaluates the morality of an action based on character and habits of the person who performs it. Virtue ethics holds that being virtuous, such as being honest, courageous, and compassionate, leads to fulfilling and a good life. For example, neither lying or truth dumping are acceptable ways of promoting the virtue of honesty with the patients. Moral relativism. So this type of ethics holds that moral principles and values are relative to the individual or culture, that there is no universal or moral standard. It asserts that moral standards are culturally defined and therefore it may be impossible to determine what is truly right or wrong. Last one is a divine command theory. This is a type of ethic which holds that morality is determined by the God. It claims that an action is morally wrong if God forbids it. The ethical practices in medicine are informed consent, confidentiality, conflict of interest, end of life care, medical errors, and marketing and advertising. Just a case scenario for this, a patient comes with acute severe abdominal pain and is examined by the consultant surgeon who tells that he needs a procedure to investigate the cause of his symptoms. A junior doctor is asked to obtain consent for laparotomy and proceed. When a junior doctor asks or sees the patient, he is still in a pain and says that he is aware that he needs a procedure but just wants the doctors to get on with it. So here he says that, Doc, you do whatever is best. So what exactly here is, first one is, why is consent legally necessary? What are the essentials of valid consent? Is consent valid if patient is not informed of the risks because he does not want to know? In the present scenario, it might be tempting to just get the form signed, typically what is being followed or majority what it is being done. Although a signed consent form is a prima facie evidence of a consent, the form itself does not mean valid consent has been given. The patient may later claim that this consent was not voluntary. Then what are the essential elements of this consent? The patient must be competent to give the consent, and it should be voluntary and not coerced. The patient must be provided with the information about the procedure, and the ethical and legal obligations to ensure that fully understand the risks, benefits, and alternatives to any medical procedure or treatment. And informed consent does not refer to a patient's signature on a consent form.
See, it is changing. The consent is a continuous communication and a dialogue between the physician and the patient. So the components of consent are disclosure, competency, comprehension, and voluntaries. Confidentiality. The ethical and legal obligations to patient, the privacy of a patient's medical information. Confidentiality loosely fits under the umbrella of autonomy. When we are talking about autonomy, this slightly miss or doesn't completely fit into that. And last one, in case of a privileged communications, where confidentiality will not have action. Conflict of interest arises when there is a conflict between interest of a physician and those of his patients. Physicians have a commitment to follow their best medical judgment to advance the patient's best interest and to foster the public's trust in the profession of a medicine. Given the inherent power imbalance within the patient-physician relationship, conflict between patient and physician should be always handled with empathy and professionalism. Physicians have an ethical duty to attempt to resolve such conflicts in order to restore the therapeutic relationship when possible. Resolution of conflicts, as per the literature or as per the existing this one, these are the four possible this one. One is patient-centered communication. Second one is a conflict resolution. Third one is a mediation through some patient attenders or the one in whom the patient is having more trust. And lastly, ending the therapeutic relationship. This is a better way of handling rather than going further into the treatment aspect. Medical errors. It is the failure of a planned action to be completed as intended or the use of a wrong plan to achieve an aim. Physician should become familiar with the causes of medical errors and the methods of preventing them. One is errors of omission occur as a result of actions not taken, and errors of the commission occur as a result of the wrong action taken. Marketing and advertising are typically, whenever it comes for a discussion, medicine is a profession and healthcare is a business. So this is the hoarding what we will be seeing in most of the cities. How to ensure you are marketing ethical? That is, follow the marketing and advertising guidelines set forth by your medical councils. Avoid superlatives like best, most effective, or anything you cannot prove. And do not use any wrong wording that promises results you cannot consistently deliver. And don't disparage other providers or claim that other fields of medicine or other doctors are inferior. And the last one is prove your value through your own expertise and skills. The hot cake of today's this one is a research ethics, where we will be coming across the conflicts or research. The ethics committee stands as the bridge between the researcher and the ethical guidelines of the country. The basic responsibilities of this ethics committee are the safeguard the dignity and rights of the patient, safety of the patient, and well-being of all the actual or potential research participants. The principles of this are: one is essentiality of a research, second is voluntariness, informed consent and a community agreement, non-exploitation, privacy and confidentiality, precaution and risk minimization, professional competence, accountability and transparency, maximization of a public interest and of a distributed justice. Last is the institutional arrangement and public domain as well. Even though the ethics is being practiced from ancient this one from Charaka, Shushruta and other this one, the first report or first this one was formed in 1978
in Belmont report. This is ethical principles and guidelines for a protection of human subjects of research. It is published on 18th April of 1979. The report took its name from Belmont Conference, where the document was drafted in part. It summarizes ethical principles and guidelines for research involving subjects. So here the basic three fundamentals of this Belmont report are: one is respect of persons, second one is beneficence, third one is justice. Protecting the autonomy of all people and treating them with courtesy and respect and allowing for informed consent. Researchers must be truthful and conduct no deception. Beneficence, the philosophy of do no harm while maximizing the benefits for the research project and minimizing the risks of the research subjects. The last is justice, ensuring reasonable, non-exploitative, and well-considered procedures are administered fairly. The fair consideration of costs and benefits of a potential research participants, and it is equally. There are something which we need to look into: the unethical research practices. This is a research related, where experimentation on vulnerable population, failure to obtain informed consent, and fabrication of a data. Ethics genetics. Genetic engineering is portrayed as a major scientific and technological revolution, which is what makes it legitimate and the eyes of the supporters. Genetic engineering certainly has its dilemmas, but it also has a moral and ethical value in contemporary society. The common scenarios to concern here are safety considerations, consent considerations, and moral considerations. The other part of my talk is unethical practices in medicine, which is including a patent and copyrights, running an open shop for drugs and appliances by the physicians, rebates or commissions, secret remedies, human rights, pharmaceutical and allied healthcare industry, and should not accept gifts, money, or travel facility or accommodation fees. The unethical practice in continuation include the misconduct, that is violation of regulations, non-maintaining medical records, not displaying a registration number, adultery or improper conduct, conviction by court of law, sex determination, signing certifications, reports and documents which are untrue in nature. Misconducts also have performing or enabling an unqualified person to do an illegal abortion operation or procedure, improper signboards, disclosing of secrets regarding patient, publishing of a photograph of case report of a patient where identity is revealed. I hope this will be giving a good this one. We are having a majority of ethical dilemmas in medicine, especially in case of end of care, life care, or palliative care. The ethical and legal consideration surrounding end of life care, such as advance directives, living wills, and withholding or withdrawing life sustaining treatments. The other one is rationing of a healthcare resources or resource allocation. The ethical and legal consideration surrounding the allocation of scarce medical resources, such as organ transplantation, medical devices, and expensive treatment. How to deal with these dilemmas? So when it comes in ethical, this one. First one, identify the ethical issue. To determine if there is an ethical dilemma, framing the ethical dilemma, gathering more information about the clinical issues. Second one is the clinical information to confirm if the diagnosis is clear, gathering more information about the diagnosis. The other possibilities on how to manage the case with the alternate options. Third one is know what patient wants. If patient is competent,
have they expressed the preference after completely explaining the procedure or protocols? The second one, if a patient is not competent, is there an advanced decision if it is valid and applicable? Has the patient appointed a proxy to make decisions? What treatment options is in the patient's best interest? Can the patient's relatives or caregivers provide insight into the patient would have wanted this particular this one? Last one, in case of a child, have the parents been informed and consulted about the treatment options and likely outcomes of it? Fourth one, resolving the ethical dilemma. This identify the main ethical principle, what are relevant and included. Does it have patient autonomy, confidentiality, provisions of information, best interest, avoid limit harms and competence, duties to the patient, colleagues, and to oneself and others? Is there a tension between any of these ethical principles? Which ones justify that? Last but one is seek advice. Always speak to your consultant or your educational supervisor or another consultant. Does the professional guidance clarify the issue? And can you refer the matter to a clinical ethical committee? Making decisions about this is having who should be involved in the decision making, and when does the decision need to be made, and what are the foreseeable consequences of your decision, and what would be the implications of your decision if it is applied in all similar cases. Can you justify this decision to the patient or patient's family or to your consultant and your peers? And review your decision with the benefit of experience and learn from it. Code of ethics for a good clinical practices are the essential dignity and humanity of every patient should be maintained by the treating practitioners. Practitioners should not allow or exploit the patient's vulnerability. Patients should not receive the best attainable care for their treating practitioners, and practitioners shall maintain the confidentiality of patients and their families. Last is a valid informed consent must be obtained from patient undergoing the procedures. The best available treatment option should be discussed and provided to the patient and their caregivers. The misuse of a professional skill should not be done for a personal or a monetary gain. They should continuously develop, maintain, and share their knowledge, expertise with skills and medical colleagues, trainees, and students through CME and conferences like this. The practitioners have a duty to attend to the mental health and well-being of their colleagues as well, including trainees and students. Above all, the professional integrity should be maintained. To summarize, ethics are the cornerstone to the proper and professional practice in medicine. Although what is ethical in one situation may not translate exactly to another. Second one is autonomy, where a patient right to make a decision for themselves. Paternalism, this is now abolishing, or you can say it is a dimming, making a decision for the patient without the input. Beneficence, doing or recommending actions in a patient's best interest. Non-maleficence, reframing from actions that are harmful to the patient. Veracity, that is truth telling, revealing all information to the patient. And the distributory justice is allocation of resources in a manner that is fair and just, though not necessarily equal. And proportionality, ensuring that the benefits outweigh the risks. To conclude this one, emphasis on importance of ethical practice in medicine, role of healthcare providers and patients in promoting these practices, new ethical issues arising in different areas, example in rapidly expanding areas of palliative care, reproduction biology, gene therapy, and genetic engineering. And to avoid ethical conflicts, the misunderstanding between patient and physicians, and remodeling of a physician-patient relationship
with a gradual shift from traditional paternalism to the patient-centered model. Preventive ethics is less expensive and more effective and less traumatic emotionally than litigation or misunderstanding between physicians, patients, and families. These are my references for today's this one. Thank you for your patience listening and giving me the opportunity to hear. Thank you, Dr. Raghunath. The talk is open for discussion. Anybody has any queries, comments? Go ahead. Dr. Pankaj? Please, sir. Can somebody give him mic, please? Pankaj, you can shout. In one case, the patient's attendants, they have filed in court of law negligence against the doctor who has done emergency laparoscopy. So what was their patient was having intestinal perforation. The doctor was good enough, he was very competent and he was very much aware of these legal issues. So he has called in the relative and he told each and everything in detail. Thereafter, he has taken the consent and he also did the video recording of that consent. Even then, the attendants filed a case in the court of law against negligence. And it was that we had not been informed properly about the consequences, complications, and even death. Although it was clearly mentioned and it was visible, audible in the video. So the party which has filed the case, their advocate, he was arguing that at that time my client was thoughtless. He was absolutely in chaos and he was in a situation of thought block. So whatever doctor was telling, he was not able to understand. So in that case, court has taken it into the consideration and has sued the doctor against the negligence. And they had given one verdict that you should explain twice at least in a gap of 4 to 6 hours the same things before doing surgery. Sir, that is okay for elective surgeries, but in emergency, what is your take? How to protect us? As I was telling you in a consent form, consent is not just one event or one this one. It is a regular communication with the patient. The concept of this consent earlier was, as I was mentioning in my this one, it is not just taking a one signature or one videography and others. It is a continuous discussion. Except there are certain situations in emergency things which occur like this and it is unavoidable also. This one is whenever you are doing the such emergency this one, do the procedure, you have done a very good this one, that videography and other thing, and it should be continuous in nature till the patient get discharged. For everything you need to just explain them or you need to just give them what is happening or what is this one. So here Just, I mentioned Dr. Vijayanath, I mean, just one thing I would add, please, this sir. consent format is so different in different hospitals, different places, and she has given one simple consent form. But actually, consent is not only by the patient. A person undergoing surgery cannot give the consent himself or herself. The consent is given by the guardian or the person in charge along with a witness. But there is a big but, because this consent many a times had not been accepted by the court of law. Many a times it has been turned out, as in this case, had the court accepted the consent, that it was valid. And now the added new thing is about video conferencing. If you go to any corporate hospital, they have these chambers where the surgeon and the relatives sit, not only single person, but all the relatives, they sit there. Yes. And they have a video consent Recording. which is recorded. Yes, sir. So that's an added thing which is to the consent. But the problem is the interpretation by different court of law is different, and here we have no answer. True, sir. As you typically told, one of my slides says here, it is a process of a continuous communication and dialogue, which is preventing us or which is helping us. And there are certain
judgments or certain decisions or certain what you can call verdicts which has come against us just because of a consent form itself. The basic reason for that is the printed version of a consent form, what we use typically. See, I've been delivering lectures on the same topic for a very long time now. I don't deliver lectures on technical things. That's past. We are on the defensive on this, doctor. Yes. Do you have ethics for the patients? Obviously. Nobody talks about it. So that's the reason I have been Nobody talks about it. There has to be ethics about the patient also. So this patient was unethical. This patient was, the problem is the society has become against you. Secondly, what you have copied is exactly verbatim from the West. True, sir. We are not that developed. People don't understand that. So that's the reason, sir. Believe me or not, in Western this one, they have started one ethics department. Whenever such things come, they will refer the person and patient relative to that particular department. I hope that may soon. So that will take care of at least the clinician. We are not concerned about that. But still we become developed. We're not, to tell you the truth, we're not developed to become a democracy right now. All the problems are there because of that. The judiciary also, the judge, honorable judge has left. So much difference over there. What he said is right. And a second thing is medical science is not science at all. Forget about it. Science mat bolo usko. What you learn, 50% of this will be wrong in the next 10 years, decade के बाद. ये गलत हो जाएगा. तो 50% ही सही है. There are so many variables are there. The patient survives, dies. I have seen patients who should not survive have survived. Patients who are absolute normal die. I can have a heart attack over and die. And the second thing is nobody wants to die now. सब अमृत पे क्या है, किसी को मरना नहीं है. आपको मैं एग्जांपल सब देता हूँ. I was working in St. John's. So I tell you an example. I saw a patient yesterday evening. He's a liar. 10 o'clock in the night. I should not have seen him. I said no, but he was bad. Diagnosis of acute pancreatitis. I was just telling Shabi about it. Today morning he tells me, ठीक हो जाएगा यहाँ पे तो रखें तो भेज दीजिए. Can you imagine this? No, so that's one more this one where medical councils have come up with 30 points for 5 years where we need to upgrade ourselves. Sir, it will take 20 years, 30 years for us but to at least we have started. At least we started the. And one more thing I tell you. They always quote that Dr. Sahai was better than us. Dr. B.L. Agarwal, Dr. Telyani was better than us. No, all these things were not there. But they had the trust. With all these things coming, we lost the trust. And he was saying that medicine has become expensive. So has the land become expensive. So has the course become expensive. So everything has become expensive. Healthcare is a business, sir. Medicine is a profession. No, everything is a profession. So you have made a profession. It was not a profession. They have made it a profession now. Now he is a consumer, I am a provider. So that's a profession now. You can't talk about ethics. What the Rajasthan government is bringing, it's absolutely ridiculous. Only for votes. So our politicians have to be educated. The judiciary has to be educated. Yes. We have to be educated. And the patient needs to be educated. Only then can we have all these things. Otherwise, till that time, only one ethics is there. आपका अपना ज़मीर. अगर रात में आपको सोने देता है तो आपने सही किया. अगर सोने नहीं देता तो आपने गलत किया. Period. Thank you, sir. Thank you all the speakers. I think. Yes, sir. Please. Just 92, section 92 of IPC is a defense for physician and surgeons because अगर फिर पे कोई काम किया गया है तो वो कहीं से वो नहीं होता है. लेकिन रहा सवाल कंज्यूमर फोरम में जो कोर्ट्स के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो बहुत अच्छे विधि के ज्ञाता नहीं होते. तो वो बाद में अगर उसमें कुछ हो भी गया है उसके लिए आप सीनियर कोर्ट में जाकर रह लेते हैं, बाद में हाई कोर्ट में रद्दी कर देते हैं. Consumer courts are the very lower courts and they are not more idea about the legal issues and it is only a forum where it is favor of the patient or other clients. They not understand the reality of the medical profession. True, sir. Actually, that the COBRA and the Consumer Act came, there was a earlier, why, as Dr. mentioned, that earlier there were no litigations and all. So the day they came, they made the doctor a provider and the patient a consumer.
And here arose the controversy. And that is the key point of controversy, which not only doctors, but as a society as a whole, the people in the society, the press, the media, the lawmakers, and the protectors of the law, that is the judiciary, they have to understand. Only otherwise it's never-ending Situation. controversy and the situation and the debate. So I think due to dearth of time, One more thing. What will happen if the patient comes again? I'll not operate. This patient has gone to Lucknow. I know his friends knows no. Pancreatitis, he would have settled down. We don't have a diagnosis. They could not wait for 10 hours. Can you imagine that? So the problem is nobody wants to die now. The moment they come to a nursing home, to a hospital, मर गया तो आपको मारेंगे. That's the tendency nowadays. Till now, I'm practicing for 40 years. I don't have a single case in the consumer protection. Excellent. Hats off. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for your discussion. I would like to invite our beloved sir, Sai sir, to please come on the dais to facilitate our speaker and chairperson. Sir, please. Sir, please. टीवी में दिख रहा है, दिख रहा है? ऊपर जाकर स्लाइड करो, ऊपर जाकर स्लाइड कर दो, ऊपर वहीं से स्लाइड करो ऊपर से, खोलो, यहाँ स्लाइड कर दो, बस जूम करना है, बस ठीक छोड़ दो। छोटा मॉनिटर रखे लाइक जैसे नहीं, ये सब काम ये सब के लिए एक अलग से मॉनिटर है जो आउटपुट। Thank you, dear sir, for this elaborate description of ethical and unethical with your wonderful talk. Sir, I am the junior most, and I don't think कि मुझे कुछ कहना चाहिए. सर की बात सही थी कि आजकल कोई मरना नहीं चाहता, और इसके लिए संस्कृत में कुछ कहा जाता अहम ब्रह्मास्मि, तो वही चीज है, nobody wants to die. Now that Dr. Vijayanath sir has elaborated us on what is ethical and what is unethical, our next session will be on immunity to registered medical practitioners against medical negligence. To enlighten us on this topic, we cannot consider any other speaker other than Dr. Mukesh Yadav sir, who is currently working as principal Rani Medical College, Banda, Uttar Pradesh, since 19/6/2018. Sir has more than 26 years of experience in medical education. He has previously worked as principal NC Medical College, Panipat, Haryana. Sir has headed the Department of Forensic Medicine and Toxicology in various esteemed institutions over the years. He has a ResearchGate profile with more than 290,000 reads. It's a great achievement. Sir has papers published in national journals and they amount to 134. His papers which are published in international journals are 9. Welcome sir, we welcome you here.
I would like to invite for chairperson Dr. Anil Gopal sir, Department of Neurosurgery, Dr. Prabal Niyogi sir, Department of Surgery, and Dr. S.P. Garg sir, Professor and HOD, Department of Hermity, SSMC, Riva. Please join sir. समय लगेगा बता दें A very good afternoon to all sitting in this auditorium. My task has been little bit simplified by my predecessor speaker, Dr. Vijay Nath, because many things are interrelated. Theme of conference chosen by Dr. Archana Sharma and her team is very pertinent and relevant in current scenario, as you've seen from the discussion and question answer in the previous lecture. And I have put this line, dynamic nature of medicine and law, which even previous chairpersons realized, and speaker also. You remember these two words, then only you will get the answer or get some addition to your value from my topic. Both are dynamic in nature. Every case is unique in terms of medical negligence. So that does not mean that I am delivering 45 minutes lecture and you will get immunity booster like COVID का आपको booster dose लगा होगा. But definitely, if you follow those principles which have been told by Dr. Vijay Nath in their ethics lecture or something based upon different studies of case law, I will let you know. You have to either stick to them, and many of them may change with the scenario, right? Because if law change, say for example, अभी राजस्थान की बात हो रही थी, right to health is now made fundamental right, at least in state of Rajasthan. Do you think it is a new thing? I think since adoption of Constitution of India in 1950, Article 21 deals with right to life with dignity is nothing, but this act is extension of that realization of right to health for all. Without health, you cannot live. COVID has explained very well to all of us. Another request to you, similarly medicine, there are many changes, new branches, new intervention, new procedure, new drugs, they are coming. So whatever you remember today, it may be obsolete next day. So this is the topic. How to get immunity from medical negligence? Is it possible or not? From my experience, yes, prevention is better than cure. And again, attitude is very important. As per the discussion of chairperson in the previous session, never be of attitude which is negative, which is pessimistic. Be optimistic, and that is why in spite of so much of problem with the health professional, when you see the number of person opting for medical profession, when the government is planning to open one medical college in each district, still we are in demand, because no one is immortal. Can anybody be immortal? Can anybody claim that he or she may not fall ill, or their relative or your dear and near, they will not fall ill?
So until unless you are not empathetic, you are not seeing the second side of the coin. Always we are listening or debating as a doctor, not as a patient. I still remember my days of admission during COVID in one of the premier institute of UP, Sanjay Gandhi Poison Institute. I admitted for 15 days. With the legal knowledge which I have, I may sue them because 3 or 4 times I went into hypoglycemia. Nobody was even ready to attend me at the time of admission, me and my wife. Everything is unethical, but again, contextual. So you cannot say on face value what I am telling you, it may be truth throughout your life. It is dynamic in nature, contextual. You cannot force to change the attitude of your patient. You can try. So the discussion about that patient was legally knowledgeable or in spite of good outcome as per your knowledge and experience, patient may sue you. So that is why we are called professional hazards and we should be prepared for them. So you just increase your knowledge, understand the concept of medical negligence, not from perspective of doctor. You are expert of your domain and specialization. But what is the expectations of the law? You have to understand accordingly. You have to change your attitude. Following ethical practices, whatever told by Dr. Vijay Nath or whatever written in the Indian Medical Council, Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2002, Legal Mandatory till date and Draft Regulation 2022 in pipeline, still awaiting notification. Improving doctor-patient relationship. Here it is a challenging task, and that is why medicine is not only science, but it is an art also. So learning to satisfy my one single carry home message, I will conclude in last also. Patient-centric approach. Empathetic to your patient. You just realize your time whenever you fall ill, what you are expecting from your relative, from your doctor, from your staff. You have to behave in similar manner, even though patient may sue you. So we cannot guarantee, we cannot give 100% immunity, but I am sure definitely it will help in reducing the number of litigation against any person. Effective communication. So now communication should not only be communication or mechanical communication, as is happening in taking consent. जाती है सिस्टर, साइन करा लिया जाता है, consent is over. As very well explained by Dr. Vijay Nath, it is a dialogue. It is a continuous process. It is not monologue. Every time new scenario, new circumstances in the mind of patient or relative do arise. But the problem is we are not having time. As a doctor and number of patients, we have limited time. So that is why we are not able to devote time which is unrealistic expectation of patient and relative. That is why government is trying to increase more infrastructure, more medical colleges, more doctors. Then its time may come when we have enough doctor-patient ratio, and obviously then you have the quality time for your patient. But in the meantime, what you can do? Meticulous record keeping. In COPRA, Consumer Protection Act, you will never be called as a witness. You have to submit your evidence and affidavit evidence. And in affidavit evidence, whatever the record or whatever you are writing, that will be taken care of your defense. So until unless you have not made your record meticulous, including informed consent is a part of medical record, you will not defend in spite of your good expertise, good knowledge, good outcome to the patient. Patient engagement and shared decision making. Again, new terminology we are coming up with the MBA persons taking care of health management. This is important. Usually, I have discussed many friends who are doctors. Doctors are usually having fear कि अगर इसको सबको educate कर दिया तो हमारे patient कहाँ से आएंगे? Just ask your question. This is the right time for introspection. The whole branch of community medicine or preventive medicine
is there just to invest in preventive aspect. So prevention is by making patient educated one. And educated means at least the patient gets admitted under your care of that illness. You should educate regarding whatever possible. So outcome will be improved. He will have faith in you. Until unless the patient is not having trust in doctor, how much qualified experience you are, patient is not going to survive. My experience as a principal, as a manager of that medical college during COVID, those who died during COVID, who lost faith in themselves. I still remember my 15 days in one of the best hospital in Lucknow. In my block, VIP ward was there, and most of the patients, they were either minister, politician, or bureaucrats in around me, and they know that this is he is doctor and knows something. So I started enjoying my life by counseling them. They were crying like anything. There was no deficit of any money or resources. What was there? सर मेरी बहू ने मेरे को बेटे से नाती से बात नहीं करनी थी. She was crying like anything. This was the issue of that minister and so this is the scenario. We have to understand psychology. When a patient is admitted, he is not just wanting कि एक injection आपने दे दिया, आपने operation किया. Human touch, healing touch, patient-centric approach. And recently, National Council for Clinical Establishment, on the recommendation of National Human Rights Commission, framed Charter of Patients' Rights in 2021. They added certain rights. Is there something new? No, there is nothing new. Whatever is said by different legal statutory provisions and the court judgment, they compiled all things into almost 20 rights of patient. You should aware of that, number one, and you should implement. I don't think those who are running hospital or in your medical college are this chart is displayed. If this charter is displayed or not, if not, again, we are just mechanically adopting this profession, not taking preventive aspect. Role of ETICOM module. ETICOM module has been introduced by the Medical Council of India, now by National Medical Commission. After so much of research, this ETICOM stands for 3 acronyms, short form. A stands for your attitude, ET stands for ethics, and COM stands for communication. If you just improve on these 3, which is not taught in your medical profession, even if you have done your super specialization. That is why you have to learn this ETICOM module. And collected various statistics, just passing on quickly. National Crime Record Bureau, official document of the Government of India, since 2017 start publishing data on criminal negligence cases of doctors. So 2017 to 2021, the trend is visible. Cases are increasing. Criminal negligence. I'm not talking of civil negligence or consumer court cases. What are the other interesting facts? This is the age group of doctors against whom these criminal negligence cases have been filed. 18 to 30 years age group 129, 30 to 45 405, 45 to 60 126, and 60 plus 3 cases. No age is immune from even from criminal negligence, which is gross, where death has occurred, and this is underreported cases, because when you go to the police to file FIR under section 304, nobody is interested in writing the FIR because they want to reduce the statistics and patient is illiterate. There is nobody to support the patient. Most of the cases are those where patient side is either doctor, advocate, judges, or journalist. So these are the cases where patient comes and you know the background of the patient. Please beware. Take extra precaution. Take extra time to get your patient satisfied. If patient is satisfied, there is no chance of any litigation. So the crux is not outcome. आप
5 स्टार होटल में जाते हैं, आप अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और आपको कोई एक सर्विस अच्छी नहीं मिलती है और यू कम अप विद एक्सपीरियंस that in my experience not good, you will next time not go to that hospital. So this is hospitality and we are in hospital. Their patient not comes by choice but by compulsion. उसको तो जाना ही है अगर ठीक होना है तो. And he is not billing, he has no budgetary relocation for health. If he has not health insurance, then who will pay? So they are not mentally prepared. So this first loss to the patient, which when we discuss about the ingredient of medical negligence, is damage to the patient. So that depends on the perceived by the patient. If patient perceives some loss from your service, including financial loss, including physical loss, including loss to the reputation or shock or mental suffering, he will definitely going to sue you. That is why you should treat every patient as a potential litigant. Recent speech of Honorable Chief Justice of India in one of our reputed hospital, Sir Gangaram Hospital. The topic was prescription for justice, quest for fairness and equity in healthcare. And from a long speech, I found out these words. Mistrust. There is a mistrust between doctor and patient due to commercialization of healthcare. Understood? But medical colleges are private, charging so much of fees. Why not commercialization? And who is allowing that commercialization? And what we are doing to prevent or reduce that cost of healthcare? Obviously, nobody. Ethics discussed very well. These are the Chief Justice of India's perception about your profession. He narrated an experience of Sir Gangaram Hospital when he was judge to remain as attendant of his father who was admitted in that hospital and share experience or interaction with the healthcare staff. So that perception when anybody is sitting as judge, whether consumer court or any trial court, that will affect the judgment. His experience. So that is why again you have to satisfy not only the patient but the attendant also. Extra burden. Now it is up to you, sitting student, for message for you. It is your choice. You have chosen this profession. So there is no option to come back. It is a one-way traffic. You have to enter and you have to reach to top of your profession, whatever the difficulty. And I am sure डॉक्टर हमारे बीस पितामह जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर सहाय सर, he will never regret कि he was doctor. Still we are treated as God. So then what happened in between so that we are organizing these type of CME and conferences. Cost of healthcare again not in your hand. When you break up the cost of bill, hardly 10 or 20% comes in the hand of the doctor. Rest is cost of the drugs, appliances or the hospitality you are enjoying as a patient in admitting. Ultimately, he mentioned it is doctor-patient relationship, where you know when you admitted as a patient, doctor is in a higher footing. Technically, it is called fiduciary nature of relationship. It is a contract, implied contract between doctor and the patient, which is not written, but the law presumes. Similar is the situation with our top bosses, politicians. This is the news, recent news from the UP. Understood. If this is a perception about medical profession, who is going to help you? We have to think on that. Again, we cannot change the world, but we can change ourselves. So change made in yourself so that amicable relationship and as possible best outcome to the patient may be possible in it. Not only politician and political, this is important. Recent judgment of 24th March, today is 25th, from your city, from the judgment of one of the high court, from one of your hospital, what is written here, मरीजों को धन कमाने का जरिया समझते हैं डॉक्टर
is it not media trial? It may not be written in the judgment. That is why every week I publish one paper on these things, actual what is the requirement of the law or what the judges said. But since you have no spokesperson in your professional bodies, either IMA, FOXI, even IFM, to put your version, that is why whatever is they are taking at face value. This was the issue of last year when dengue cases are high, and it was alleged that instead of platelet, fruit juice was infused. And the hospital is running in a residential place, not registered under the Clinical Establishment Act 2010. There are many judgments of the Supreme in Allahabad, where High Court is there. I don't think you have that document, Indian Medical Council Professional Conduct Ethics Etiquette Regulation 2002, which will be preventive, which is immunity for you if you learn that. Whatever told by Dr. Vijaynath, if you learn, definitely it will reduce your fear, your confidence will increase, and litigation will definitely, Dr. Misra said, during 40 years of practice, he has no case. That means कि पेशेंट ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके अगेंस्ट। तो मैंने कन्विक्शन रेट भी आपको दिखाया था, क्रिमिनल केसेस का भी कन्विक्शन रेट 19 में 20% था। दैट मींस 80% केसेस में कुछ भी नहीं हुआ एक्सेप्ट ट्रायल। व्हाई? बिकॉज द जजेस एंड एडवोकेट दे आर नॉट knowledgeable about your profession. You as a doctor not knowledgeable about the law. So what is the solution? Solution is in between by forensic medicine specialist. They are medical legal expert, at least having fair knowledge of both law and medicine. They will come to your rescue. So my humble request, those who are sitting, please be in touch with the forensic medicine specialty. Take my email, phone number. Whenever you need my help, I am always ready. I am giving free consultation, online, telephone, in my capacity as a principal also, without asking who is on the other side. So this is need of the hour of all faculty. Era of consumerism. Patient as a consumer. Whether patient is consumer, answered by the Honorable Supreme Court in 1996, BP Santa versus IMA case. Just I found this quote from one of the speech of Mahatma Gandhi in South Africa. Just read it. A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider in our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so. Just replace this word customer with the patient. Your scenario in hospital premises. This was said in Mahatma Gandhi way back in South Africa. Is still relevant. Is still relevant. That is why now we are talking about the patient-centric approach. National Consumer Day observed every 24th December, but we are not aware since 2001, and now this Consumer Protection Act repealed by new Act 2019, where pecuniary jurisdiction has been changed. Now a patient can sue you up to 1 crore compensation in a district consumer court. Definitely cases are going to increase. I have collected all the statistics available on website qmeindia.in. Since 2000, number of cases filed and disposed of. Just to sensitize you how important this. These are the rights of the patient declared under the Consumer Protection Act. Right to safety of patient, right to choose doctor, alternative procedure, hospital, right to be heard, which is neglected. Even NMC Act in 2019 removed right to appeal by the patient side. And ultimately, Supreme Court intervened, one of the High Court intervened, RTI filed by one of the doctor activists, Dr. K.V. Babu from South. And ultimately, government now including this right to appeal by the patient in that document. So this is how we are discriminatory. That is why I am saying, listening my word as a patient, then you will realize, then you will be empathetic to your patient. Right to be informed, again, in part of informed consent, right to seek redressal. If you open one grievance redressal in your hospital, maybe a small hospital, and just listen to the patient,
90% problem will be not there of litigation stage. You just put your hand folded and ये हमारी limitation है, मैं नहीं कर पाऊंगा. Just be realistic in explaining the prognosis, not assuring 100% success or whatever coming in the newspaper. You are seeing newspaper, full page advertisement, totally unethical, big photograph of the doctor from your city itself. And nobody is raising voice. And then you are saying ki we are good, we are doing some right. No, you are not right, because we are always seeing ourselves as a doctor, not as a patient. That is why we are not empathetic to the patient. Right to consumer education. Again, the full department of consumer to community medicine is for the right to health education. These are the rights recognized by the Charter of Patient Right, notified by the Clinical Establishment Council. That means they are now legally binding. They are already binding, but now they are in a point-wise fashion. So you just download that copy, try to implement them, try to educate your patient, and one thing more added in those rights, patient responsibility. And that is again not possible without putting a poster in your OPD or hospital, so that patient know that they have certain duties towards yourself. They have to respect doctor. They have to tell the true history of the treatment, past record. If they are not telling true history or you are not able to extract, there are 100% chance of wrong diagnosis or misdiagnosis. Ultimately, wrong treatment, or this is a case of negligence. Again, from your city, I will not take the name of the hospital, very reputed hospital, and for last 2 days, there are very advertisement coming from that hospital itself, where a surgeon attended a patient of breast in lump, and a patient was from Madhya Pradesh, Riga, and he was diagnosed after mammography and X-ray and ultrasound as filariasis case, not suspected malignancy. He was given treatment for filariasis for 3 months, follow-up case. Every time there was a problem to the patient, condition deteriorated. Ultimately, patient was gone to the BHU cancer department. They immediately said it is a case of cancer in the breast, which is with secondaries. And they referred the patient to the Tata Memorial, Mumbai, where few cycle of only chemotherapy completed. Ultimately, patient died. Patient husband was an advocate, practicing advocate. He sued the doctor and hospital in the State Consumer Court, Lucknow, and ultimately court awarded 50 lakh compensation for wrong treatment, wrong diagnosis. So these are the recent cases. Again, one of the High Court judgment of Odisha High Court, what they have said, judge quoted Bernard Shaw. We had not lost faith, but we had transferred it from God to medical profession. A common man treats the doctor as Dhanvantari. He has the tremendous amount of confidence on the doctor, the comforting and reassuring word of the doctor. This is important. Since we are not having time to spend time with the patient, give healing touch by touching pulse or just putting hand over the patient skin so that he will feel a connection with you. Very powerful and sometimes create a miracle to the patient. COVID में मैंने feel किया. I was visiting every ward with the patient where even after death, patient relatives are not coming forward to come for the cremation, last ritual, and we did our honest service until cremation. And that is why I am surviving as a principal in Banda, a criminal bed. Everybody knows कि डॉक्टर साहब ने प्रिंसिपल साहब ने तो पूरी कोशिश की. After 35 days per day, I have no complaint. So you have to be realistic. You explain your honestly what are the limitations, what you have, what you don't have. Even I have information patient from Allahabad, Kanpur, Lucknow, they come back and admitted in our hospital because our doctor are giving nothing but the personal touch. Our nursing staff, personal touch. We are there. We will help whatever possible, and that survived the patient. Those who lost faith in themselves, कि मुझे कुछ नहीं, मैं मर जाऊंगा, they lost life. So here these words of judiciary are important, which we have to understand. कि nobody is against you.
वी हैव जस्ट इंप्रेशन कि सब लोग हम लोग के अगेंस्ट हैं, वी आर सब टारगेट, ऐसा नहीं है. Very hardly 10 or 20% case are against you which are won by the opposite party, and those cases which are won mostly by the doctor side. Patient side is doctor. Kunal Shah case, where 11.6 crore compensation awarded. Who was the opposite side? Doctor himself. Who died? Patient, doctor herself. So that is why you have to remember, because जब हम डॉक्टर साइड को देखते हैं तो we forget कि एक दिन हमें भी उस बेड पे लेटना है और कभी ना कभी लेटते हैं. So that is why empathy body is important. That is why the doctor should shoulder their responsibility with all care and caution. Rise to the occasion, believe in hard work and discipline, behave with sensibility, not thinking only of their average interest of amazing huge wealth, burying larger collective interest of common men, which would strengthen the patient-doctor relationship. This profession is never meant for earning money. But obviously, with the passage of time, with your experience and knowledge and branding, money will come. And that money is only important just for your quality of life, not to collect them and give in one case of consumer protection. Ultimately, you have to rely on and introspect. Need to understand the concept of medical negligence. We have not understood the concept of medical negligence. Why? Because it is very complex. The law dealing with this is law of tort, a full subject in the law of tort. Tort you can very well understand as a doctor, tortuous course of nerve, of artery, of it, very complicated, not a straightforward. That is why court has never relied on a precise definition. It will depend upon case to case and fact of that particular case. The conduct of the doctor clearly reflects that they have been negligent and ignorant from very beginning. This is quoted from one of the recent judgment. What was the expectation of the law from the medical profession? The respondent did not take proper care in diagnosing the lump, even when it is spreading to the other breast, failed to bring in task of reasonable degree of skill and care. आजकल जो हम लोग आप किसी से भी कहो, द मोमेंट पेशेंट से कि ब्रेस्ट लंप है तो पहला डाउट जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जाना चाहिए, रूल आउट द मोस्ट ब्रेस्ट कैंसर, विच वॉज नॉट डन इन सिटी लाइक इलाहाबाद. और ऑन्कोलॉजी, फुल फ्लेज ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट वॉज देयर इन दैट हॉस्पिटल. Radiologist was also made party in this case, but court ignored because the mammography report clearly created doubt about the malignancy, even though surgeon totally ignored that. I don't know what was it may be his experience कि नहीं ये तो फाइलेरिया का केस है. So here we have to be little bit precautionary. Medical negligence lead to medical malpractices, means professional misconduct, unethical practices. I will pass on many things which are these are some of the stages where chances of medical negligence are there. First stage is at the stage of diagnosis. So please spend time in taking proper history, past history, whatever told to you during your UG or PG time. Get investigation done available. If not available, put it in the record. I advise patient has no resources or this test is not available. If there is a doubt in diagnosis, take second opinion. Refer the patient to the concerned specialist, because the scenario changed from generalist to specialist and now to the super specialist. So if oncologist is there of the super specialty and you are treating, पहले का time था जनरल, even MBBS doctor सब कुछ ऑपरेशन करता था. Now this is not the time. So that depends upon if available and patient. मेरे यहाँ बहुत सा ऐसा होता है गवर्नमेंट में, पेशेंट वही आता है जिसके पास कुछ नहीं होता है. हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं डॉक्टर साहब ये कर, तो आप कहते हो रिफर कर दो. अब ये तो जाने को तैयार ही नहीं है, तो मैंने इनसे लिखवा लो कि हमारे पास जो सुविधाएं हैं, जो एक्सपर्टाइज है, उसी में इलाज करना चाहते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है जाने के लिए. जाने का मतलब है पेशेंट तो वैसे ही मर जाएगा. और बहुत से पेशेंट ऐसे हुए ऑन द वे आइदर टू इलाहाबाद और कानपुर वहीं जाते हैं या झांसी, दे डाइड इन द transit, and that is again negligence, because laws require you have to refer the patient when you think there is a time for the patient, and you have to arrange
inquire bed is available or not. You have to arrange for the ambulance 102 or 108, whatever is available. So there are enormous unrealistic expectations from you. Again, if you want opted this profession by choice, you have to bear with this. There is no go back. देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है. स्लाइड इज नॉट मूविंग. हाँ जी, टाइम मुझे बता दीजिएगा. मेरे साथ ये प्रॉब्लम है भाई कि मैं टॉपिक से डेविएट होता हूं, क्योंकि जब नॉलेज होगी तो आप चाहोगे एज ए टीचर. मैं टीचर भी बहुत अच्छा हूं, अपने आप को क्लेम करता हूं. तो टीचर का काम होता है कि जब तक आप सेटिस्फाई, मैं नहीं सेटिस्फाई हूं, मेरा स्टूडेंट कैसे सेटिस्फाई होगा. कम बताओ लेकिन वो कंप्लीट बताओ. So not only diagnosis, then error of diagnosis, delay in diagnosis, these are the cases which filed before the consumer courts. Unnecessary surgery. What is unnecessary? Whenever there is a wrong diagnosis, obviously you will do according to your diagnosis, and then later on it proved wrong. Again, it is a case of unnecessary surgery, so not only unethical but also medical errors. Error in administration of anesthesia. PAC is important. Devoting time with the patient during PAC is important. Your fitness clear by anesthesia is a protection for the surgeon also. So that negligence can happen during pre-PAC and during anesthesia. During anesthesia, if you have given wrong dose of that muscle relaxant or the wrong gas, these are the cases which fall under the doctrine of res ipsa loquitur. Childbirth and labor malpractices. What are the situation? The mishandling of a childbirth during when complications with induced labor, misdiagnosis, a newborn child born. Say for example, if it is a premature child and you have not advised for screening by a pediatrician for retinopathy of prematurity. I have a recorded judgment of two Supreme Court again, where more than 1 crore compensation has been awarded in both cases. So again, very difficult for gynecologist, pediatrician. You just forget to written in your prescription or discharge slip, get follow up from the pediatrician or to rule out retinopathy of prematurity. Long-term treatment, negligent treatment, obviously when diagnosis is wrong, so you may continue. The case of that breast lump is important. This is the newspaper where this is the most important judgment which copy one should have. Dr. Sahai sir refer one our colleague Dr. Archana Sharma, sudden demise by suicide from Rajasthan. The doctor was very knowledgeable, gynecologist. She was, I think, associate professor also. Husband was psychiatrist, and she was so scared of just lodging FIR under section 302 IPC, murder, which is totally wrong on the side of the police, and she committed suicide. So that is why it is important to keep these judgments, keep updated about these judgments, keep this copy of at least Jacob Matthew judgment till government bring guidelines. Still it is in pipeline. 2005 में Honorable Supreme Court ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा था कि यू शुड ब्रिंग गाइडलाइंस. टिल दैट टाइम under Article 142 of the Constitution of India, they framed guidelines which are binding on everybody. That means that is law of the land. But you are not aware of your protection. So how you will say you will get immunity from that? And this is the accepted definition by the Honorable Court. Quoted maximum time citation in favor of Dr. the judgment of Jacob Matthew. Then Martin D'Souza. Then that consent case of Dr. Prabha Manchanda. What are the elements? I am just passing on because these are taught to you in your UG. But have you understood what are your duty? Where they are written? Again, I refer that document. Indian Medical Council, Professional Conduct, Ethics, Etiquette Regulation 2002. 3 chapters mentioned about the general duty of doctor to the patient, duty of doctor in consultation, duty of doctor towards each other, duty towards the paramedical, and lastly unethical practices list and professional misconduct list, and finally disciplinary control over the doctor by the
State Medical Council or the Medical Council of India, now National Medical Commission, Ethics and Medical Registration. So until in what is important here, even you have not done your duty, there is a breach of duty, but there is no damage to the patient, he cannot sue you in a court of law. And whenever damage is proved, obviously court has to award damages. Damages here not plural of damage, but it is a technical term for the compensation in terms of monetary, whatever the loss, patient calculate, different formulas are there based upon which you have to pay to the patient if the patient won the case. It is not based upon fees charged by you. It is from the patient's socio-economic status. So those who are dealing with the clientele which are जो अच्छी लोकेलिटी में प्रैक्टिस करते हैं, जिनके पास इन्फ्लुएंसर, एजुकेटेड, इकोनॉमिकली हाई पेशेंट आते हैं, आपको इंडेमिनिटी इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए और हायर साइड पे कराना चाहिए. दिस इज अगेन व्हाट इज कॉल्ड वैक्सीन फॉर इम्यूनिटी अगेंस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस. This is judgment of 1969. Incidents happened in 1953 again from Bombay, Maharashtra, where court defined your duties. Are you aware of this judgment? 1968 का Supreme Court का first judgment which defined what is the expectation of law from the medical profession. What a duty of care in deciding whether to undertake the case. जब आप एडमिट करते हो पेशेंट को, you have choice to admit or take patient in your care except in emergency. When you are taking patient, that means you are impliedly giving contract that you are competent and experienced enough to diagnose, treat and give outcome as per the medical literature. If you have done wrong, obviously outcome is this case of breast lump where oncologist is the best person. So never exceed your domain. Decide always, are you competent to handle this patient? Then only allow that patient under your care. A duty of care in deciding what treatment to be given, and third duty, a duty of care in administration of the treatment. These are the duty again repeated in many later on judgment. And what is the expectation of law for standard of care? Neither very high nor very low, average standard. And who will decide that standard? Your colleague, peer review, medical opinion, medical literature. If there is a protocol, standard treatment guidelines, standard operative procedure, please follow them. Deviation from that standard guidelines, prima facie a case of medical negligence. So finally, doctor-patient relationship has to be improved. I will pass on quickly again another judgment of the Supreme Court in P.B. Desai of Bharat State of Maharashtra, surgeon oncologist, which was given punishment, minimum punishment, criminal case, very famous case, where doctor even not enter the OT, just said from outside the OT, close it. And the patient was a wife of IAS, again from Rajasthan. Patient was influential, no problem of money, taken consultation from US, and they said non-operable. Indian doctor under pressure or whatever reason, I cannot claim, take chance operation. The moment he opened laparotomy, totally plastic, and that all the intestine are totally adherent. He said no, close the case. Ultimately, case was heard in the Supreme Court, and Supreme Court said yes, this is a case of negligence, not only civil but the criminal negligence. And here court discussed in detail about doctor-patient relationship. So I will not discuss in detail, just pass on these slides. So it is again implied contact. 90% our practice is implied. The moment you take consent in writing, it becomes a written contact. That is why informed consent is very important. Samira Kohli judgment of again Supreme Court in 2008. Please keep copy of the judgment, more than 150 page judgment, not possible to cover by Dr. Vijayanath's lecture or my lecture or discussion between chairpersons and the speaker. Again, new situations do arise. You have to learn that art, not to give cure patient but satisfy your patient.
and that is possible by exact prognosis. Neither exaggerate, not undermine. Exaggerate करोगे पेशेंट क्लियर होगा, भाग जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा. और 3 जगह पेशेंट ने अटेंड करा है और डॉक्टर अनइथिकल है, दे आर कमेंटिंग अबाउट योर ट्रीटमेंट, प्रीवियस डॉक्टर कमेंट. Patient lost faith and again mistrust come into picture, which Chief Justice of India has mentioned in one of his speech in Delhi. So again, same thing, not to undertake any procedure beyond his control. Supreme Court verdict. Professional secret, you should not disclose anything. कोविड टाइम पे बहुत हुआ था. उसके बाद एक मैं अगेन आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस. I received a letter from Director General Medical Education on the instruction of Principal Secretary, who is not doctor. DGME was not doctor. Minister was not doctor. Unfortunately, he was the law minister at that time. Now he is a deputy chief minister and also medical education minister. Given instruction to all the principal, send these details, name, age, diagnosis, everything. And many doctor, I'm 100% sure, because being a principal, I'm in touch with all the principals. They are giving this, all violating the professional secrets, even MTP cases, even hysterectomy. So this is you claiming that you are right, you are following the ethics. I think no, I have not given. I immediately put a text to the principal secretary, sir, I am not going to give. This is violation of this Article 21. These are the ethical regulation, and it will be embarrassing for the minister, sir, and you and DG. सबने कहा तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें तो लटका दिया जाए. हमने लटका देना दो. I will not lose my value, which I learned as a doctor. So this where you have to draw some line कि यहाँ से ज्यादा झुकना नहीं है. So this is the concluding of that judgment. The degree of responsibility on the practitioner is higher than that of any other service provider or professional, including advocate and judges. So you have to be again, that is why soft target in your terms. Ethical character, the relationship have 2 characters, ethical character and legal character. Ethical is dealt by the State Medical Council or NMC, and legal by the court of law, maybe consumer court. So the moment it is in writing, whenever it is a contract, it is illegal. Whenever it is verbal and ethically violation, it is unethical. For which minimum punishment, again warning, then removal of name from register for temporary period or permanent, depending upon gravity of offence. And in consumer court, in terms of compensation. If a patient died, wrong operation, right side, wrong side, or wrong patient, wrong drug, whatever wrong, again arrest sexual offender and criminal negligence case may be filed against you under different sections of the IPC. So this is regarding again what court mentioned about your document which is supposed to be known to you. Judges are knowing, doctors are not knowing. Again, fault is with the forensic medicine department. I think we are giving less time to teach everything. Recently 2022 and 23 बैच के लिए जो हमारे पास टाइम आवर्स आए हैं, उसमें 20 आवर्स में फॉरेंसिक मेडिसिन खत्म करनी है. What to taught, what not to taught, or to whom we will say, because those who are our bosses in UP at least, they are non-medical person. 3 days before, one doctor has been given charge of DGME after finishing of tenure of one of the IAS who has been given charge. 3rd day, yesterday night, I received again another IAS has been given charge of DGME. Do you think he will follow the ethics? Do you think you will listen to your actual problem? And we are not making any hue and cry. We are saying we are not united. We are just making bedroom politics and not taking hue and cry. So again, just passing on time is very less. Always be empathetic to patient. Every patient is a potential litigant. Patient satisfaction is the key to immunity against negligence. Need for adoption, implementation and monitoring of Charter of Patient Right, now mandatory statutory provisions. Steps for enforcement you have to adopt if you are owner of hospital. Display them, make it bilingual, not in English. Patient is in not knowing English, so it should be in local language which patient can understand. Orient your staff about these rights, respect those rights.
यूज IT फॉर मैनेजमेंट ऑफ दैट ग्रीवेंसेस, ट्रैकिंग ऑफ रिकॉर्ड। आपको पता होगा IGRS पे आजकल कंप्लेन करना बहुत आसान है, सब कुछ ऑटोमेटिकली है। आयुष्मान जो पेशेंट डील कर रहे हैं उनको भी ये पता है कि IGRS कंप्लेन अवेलेबल है। Again, same thing in different level we have, because UP is a big state. So you cannot compare with the Delhi कि दिल्ली में एक कमेटी बना दी तो काम हो गया। Those gynecologists sitting here, MTP Act अभी 2021 में अमेंडमेंट हुआ है, where there is a provision of medical board. Do you have medical board notified in your district where High Court is there? In whole UP, one board, and that too in Lucknow. A patient having no time in the gestation period to get benefit of MTP. You have made one board and nobody is making you and cry. Provision is mentioned कि every district should have that to multiple boards so that बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी देखिए after MTP Act 2021 almost every month a case is filed either in the High Court or Supreme Court to get relief for MTP. Then what is the fun in making the act? 71 का था, अमेंडमेंट किया 2002 में, 2002 का किया 2021 में, 21 के बाद भी पेशेंट को कोर्ट ही जाना पड़ रहा, तो फिर व्हाट इज द फन इन मेकिंग आवर कंट्री टू बी कॉल्ड डेमोक्रेटिकली रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजन ऑफ अपील आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू फील risky by attending the patient, obviously you will not do justice with the patient, you will fall ill ड्यू टू स्ट्रेस कि पता नहीं कौन सा पेशेंट और कितना पैसा मांगेगा। तो ऑलवेज टेक इंडेमनिटी इंश्योरेंस डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलिटी, क्लाइंटेज, मॉनिटरी स्टेटस, एंड देयर आर मेनी रिस्क मैनेजमेंट कंपनी, अगेन दे आर डिसीविंग यू, यू हैव टू चूज राइट वन, दोज हु आर हैविंग एग्जैक्ट मेडिको लीगल एक्सपर्ट। ओनली वकील विल नॉट हेल्प यू। वो आपसे जब तक मेडिकल लिटरेचर आप नहीं प्रोवाइड करोगे, जब तक आप उसको एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दिलवाओगे, और अगर आप एटिकेट आपके अच्छे नहीं है, आपके कलीग से आपके व्यवहार अच्छा नहीं है, सो नोबडी कम फॉरवर्ड टू गिव ओपिनियन इन योर फेवर। दैट इज व्हाई एथिक्स इज इंपॉर्टेंट। दीज आर 5 goals again after NMC, competency based medical education. Please remember these 5 at least. Those who are sitting in the back door, you should be competent clinician, or everything is written in almost 5 or 6 pages. What is the meaning of competent clinician? That is why it is said, never go beyond your expertise. Leader and member of the healthcare team. Patient management is not a single one person's responsibility. It is a teamwork. And as per my experience, it is the leadership which is not taught to the doctor. It is a teamwork which is not taught to the doctor. नर्स कुछ कहती है, डॉक्टर कुछ कहता है, और मेडिकल कॉलेज सिस्टम में तो यूनिट सिस्टम होता है, where professor or associate head the unit, then assistant professor, senior resident, junior resident, then other staff, and they are not having teamwork. Operation, a whole team, anesthesia, they are not discussing with each other, patient is fit or not fit. जब complication होती है तब कहता है तुमने तो बताया नहीं था मुझे। So there we have to learn leadership as well as healthcare team management. Communicator, you should be good listener, you have to be good communicator in vertical as well as horizontal direction. You have to inform your boss, you have to inform your subordinate, you have to inform your colleague. Then only, because it is not only communication, but it's effective communication. And what is effective communication? As discussed in the previous lecture by the chairperson, कि आपने तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली, बता भी दिया, सब साइन भी ले लिया, पेशेंट को तो कंप्रीहेंशन हुआ ही नहीं। दैट इज व्हाई वर्ड यूज्ड इन दिस कंसेंट डिटेल जजमेंट, कंप्रीहेंशन। जो आपने कहा पेशेंट ने उसको समझा भी नहीं, सो यू हैव टू री आस्क क्वेश्चन, और ओपन एंडेड क्वेश्चन, कुछ और तो नहीं पूछना है। दैट डिपेंड्स अपॉन द अदर साइड, हाउ एजुकेटेड और हाउ इंटरेस्टेड he or she is in knowing or educating himself about that particular disease. Last, lifelong learner, that is why we are sitting at the age of almost 80 years. Dr. Sahay sir is with us with blessing of the God to learn this. 88, and we are in civil. So this is important. CME is, that is why continued medical education. It is not medical education की डिग्री ली और आपका काम खत्म। वकील साहब का हो सकता है काम चल जाए, हमारा नहीं चल सकता।
न्यू डिजीज अभी देखिए कोविड के कितने वेरिएंट आ रहे हैं, अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम उसके हिसाब से पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे, वी कैन नॉट क्योर द पेशेंट, वी कैन नॉट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज. एंड लास्ट ड्यूटी और एक्सपेक्टेशन, प्रोफेशनलिज्म. Doctor should be professional. What is the professionalism? I think many of you sitting with due respect to your knowledge, not knowing the meaning of professionalism. बहुत से प्रोफेशनलिज्म को कहते हैं कि मैकेनिकल अप्रोच, जो एक्चुअल है judicious and habitual use of your knowledge, skill, experience, empathy, communication in each patient depending upon that particular situation of patient. Patient is a psychiatric need different approach. Counseling, there are n number of steps for counseling, but we have no time. So again, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हो, situation, contextual, but we have to learn that. So these are the goals which we expect to get immunity from medical negligence. Obviously, you have to follow, you learn. This copy is available on the Medical Council of India NMC website. So these are the terminology. Just I'm passing on because time is constant. Everything has been discussed. These words have been used. This is one of the module in ETICOM 4.9 deals with the medical negligence. So teach your students because they are spread in 4.5 years. I don't think कि किसी ने भी इन मॉडल्स को प्रॉपरली टॉच किया है, इंक्लूडिंग इन माय कॉलेज, बिकॉज मैं ही सब कुछ थोड़ी पढ़ाऊंगा. नहीं समझ रहे हैं ना, यही प्रॉब्लम. एक जियो हुआ था और मेरे इनिशिएटिव पे हुआ था कोविड के टाइम पे, जब सुरेश खन्ना जी मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, कि हर फर्स्ट और थर्ड सैटरडे को मेडिकल इथिक्स सेमिनार होगा. मुझे नहीं लगता कितने कॉलेजों में आज भी हो रहा है, मेरे यहाँ होता है, मैं खुद अटेंड करता हूं. अब समझ लीजिए, प्राइवेट में हो रहा, गवर्नमेंट में नहीं हो रहा, क्योंकि वी आर डोंट बॉदर अबाउट दिस इंपॉर्टेंस ऑफ योर प्रोटेक्शन, योर इम्यूनिटी कमिंग फ्रॉम दिस. और इसमें अगर वो पढ़ेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ ए केस 1 आवर, एनएमसी का डॉक्यूमेंट है. आप बताइए, एक केस मेडिकल नेग्लिजेंस का 1 घंटे इंट्रोडक्शन दे सकते हो? हम 45 मिनट में नहीं कवर कर पा रहे हैं टॉपिक. तो अगर आपको पता ही नहीं कि 1 घंटे में हमें करना क्या है, एक केस करना है कि कई केस करने हैं, और उसको कैसे फिर क्या करना है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग 2 आवर्स की डिस्कशन ऑफ क्लोजर ऑफ केस 1 घंटा. आप बता दो, कोई क्लेम कर ले मेरे अलावा कि 1 घंटे आप इस पे बोल सकते हैं एक टॉपिक पे, एक केस के लीगल एस्पेक्ट लिखा भी है, मेडिको लीगल, सोशियो कल्चरल, प्रोफेशनल, इथिकल इश्यूज पर्टेनिंग टू मेडिकल. तो थ्योरिकल क्या हुआ, वेस्टर्न से कॉपी करके डाल दिया. वेस्टर्न एटीट्यूड इज डिफरेंट दैट टू इंडियन. वी हैव टू अडॉप्ट, कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स एंड डिमांड. Or effective communication, again used by the court in one of the judgment. They have just defined 6 tasks which are important, already told to you, just in brief for UGs. What are the steps where chances of negligence are there? There are situations where usually doctor feels guilty कि हाँ negligence हो गई. ऐसा नहीं है भाई. अभी केस है again I think from Allahabad itself, where a surgeon done LSCS, given anesthesia himself, patient died. Case went to the National Consumer Court. नीचे वाले कोर्ट ने कहा डॉक्टर साहब गिल्टी है. नेशनल कंज्यूमर कोर्ट exonerated doctor seeing emergency condition. Taking consent was there. Doctor clearly explained, उसने कहा नहीं मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं आप ही से कराऊं. और अल्टीमेटली डॉक्टर साहब एक्सोनरेट हुए. सर्जन ने एलएससीएस किया जो गायनिकोलॉजिस्ट को करना चाहिए, खुद एनेस्थीसिया दिया, कोर्ट एक्सोनरेटेड. बट यू हैव टू डिफेंड, यू हैव टू टेल द कोर्ट द ट्रुथ और व्हाट इज रिलेवेंट फॉर द कोर्ट, नॉट द होल record, medical record, what is relevant in that particular case. That is why case studies are important, actual cases. Emergency circumstances, NCDC exonerate doctor and hospital from negligence for conducting cesarean section without necessity. Doctor not responsible of patient, not favorably reacting to treatment. So whatever the literature says, failure rate इतने percent acceptable. That means you cannot guarantee 100%. पर आप पहले ही से डिफेंसिव होने लगते हो, आप एडमिट कर लेते हो, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने लगते हो और पैसा दे देते हो, वो भी लीगली नहीं साइन कराते हो.
और उसके बाद फिर पेशेंट कोर्ट में जाता है, कहता है डॉक्टर साहब गलती नहीं थी, उन्होंने पैसा मुझे क्यों दिया, और आप फंस जाते हो। इसलिए फॉरेंसिक मेडिसिन की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। These are few judgments. You keep copy of these judgments to be get immunity from medical negligence cases. This judgment, those who are interested in understanding the whole concept of the informed consent, although in this judgment, court brought two concepts: real consent and informed consent. Technically, we are always talking about informed consent, but the court said, in current scenario, seeing the literacy rate and knowledge of the patient and doctor, real consent is enough. What is the difference between two? There are two parties. One is doctor in hospital, another is patient side. So what is this informed consent? Is a concept of a Western country, USA, where patient is educated, highly educated. And here, onus on the doctor to inform everything to the patient. But in a real concept, with a UK concept, it is the responsibility of the patient to ask from the doctor, not the doctor to tell everything. But still again, since you are not aware, you are not able to defend that, the court has mentioned this. So what is the adequate information, what is relevant, this is written in these paragraphs. I am not taking time. Summary of this judgment, important. Time is not there, so I am concluding now. Adopt and enforce the patient right notified by the Clinical Establishment Council. Try to improve doctor-patient relationship by enhancing communication. Set some grievance reversal. कोई एक बैठा दो कि आपकी जो शिकायत हो यहाँ पे करो, आप एक शिकायत पेटी या ग्रीवेंस रिवर्सल बॉक्स डाल सकते हो, कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर दो जो पेशेंट से कम्युनिकेट करें, आप खुद भी कर सकते हो। मैं बीइंग ए प्रिंसिपल हर पेशेंट को अटेंड करता हूं, चाहे नेताजी का फोन हो, चाहे चीफ मिनिस्टर, किसी भी टाइम। दिस आई डेवलप्ड बाई हिम। सब कहते हैं यार कोई प्रिंसिपल तो करता नहीं, मैंने कहा मैं भाई प्रिंसिपल नहीं हूं, मैं डॉक्टर पहले हूं और ह्यूमन डॉक्टर पहले। और उसका नतीजा है 5 साल हो गए मुझे रेगुलर अपॉइंटेड हुए कमीशन से सिलेक्टेड। मैं अपनी जगह हूं, मेरे साथ के जितने सिलेक्टेड प्रिंसिपल थे, मेरे टीचर भी थे, सब हटा दिए गए। जहां चीफ मिनिस्टर गया शिकायतें मिली, हटा दिया। मेरे यहाँ चीफ मिनिस्टर भी आए, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी आए, मैं रहे हूं, और इन स्पाइट ऑफ माई सरनेम यादव पॉलिटिकल। सो दिस इज हियर कि अगर इफ यू फॉलो राइटली, नोबडी कैन डैमेज यू, and if you are knowledgeable, obviously you can defend your case own self. So patient-centric approach, very much told by Dr. Vijaynath, contribute to improve the quality healthcare. Definitely this will decrease number of medical negligence cases and violence against doctors, because violence cases are usually related to perception by the patient side about the outcome. अगर उसको आपने प्रॉपर प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन नहीं की है और उसको लगता है आपने कहा 10,000 में इलाज हो जाएगा और उसका 1 लाख का बिल पकड़ा दिया, तो डॉक्टर में चांसेस हैं कि कंफ्लिक्ट होगा। आपने कहा पेशेंट ठीक हो जाएगा, अश्योरेंस दिया, पेशेंट की डेथ हो गई, ऑब्वियसली की वायलेंस होगी। सो हियर देयर इज नीड फॉर रियलाइजिंग दिस फैक्ट। बी एम्पैथेटिक, प्रैक्टिस विद इन योर डोमेन ऑफ स्पेशलाइजेशन, नो योर ड्यूटीज, मेटिकुलर रिकॉर्ड कीपिंग, इन्फॉर्म कंसेंट, फॉलो एसओपी प्रोटोकॉल, बी ethical in professional conduct, keep updated about your knowledge by attending these CME and conferences, and be in touch with medical legal experts. Thank you very much. Thank you, Dr. Yadav, for a nice and vast subject. You had mentioned it so easily, but as we know that we doctors, we are very simple and we don't care about law. We must look after the patient and we manage it without knowing what are the consequences, and that is the problem. So it is very important that we should learn and educate ourselves regarding the medical legal consequences, and that is very important, and we are very much lacking. And as you told that there is very less, just 20 hours has been allotted in our MBBS course, and that is very unfortunate. But I think that this should be a continuing medical education, and every time whosoever attend all such things, he should have learned and educate himself also. And I think that you had elaborated so much that if anybody is interested in asking any question,
It is open. Yes. माइक आप ऑडिबल हो तब तक बोलो. Sir, I just want to say that we all are humans. Humans first and then doctors. We are liable to make mistakes. It's but natural. So in our medical profession also, our medical conduct also, we are liable to, probably we can do mistakes. But unfortunately, what happens that misdiagnosis, which is very much possible, as you talked about, misdiagnosis and expected complications of the treatment are the part of the treatment. They are part of the treatment. If they are taken as negligence, then what are we left with? As you talked about Dr. Archana Sharma case of Rajasthan, it was the same. The expected complication was taken as negligence. Although the lady was ignorant about her rights, about the judgments that you were talking about. But what was her fault apart from that? The step taken by her is her fault. Yes, I agree. The whole medical profession on downside. Escapism is not a solution. She was educated, well educated. Husband was psychiatrist, and she taken extreme step. उसे अच्छा भी लड़ना चाहिए ना. मैं बता रहा हूँ, मैं कोविड में जब इन्फेक्टेड हुआ, मुझे नहीं पता था, मैं जब घर से हस्बैंड वाइफ दोनों, कि मैं जिंदा वापस आऊंगा कि नहीं. मेरे सारे डॉक्टर बैठे हुए यहाँ पे, कुछ जो ट्रांसफर होके आए उनसे पूछिए. आई वाज होपफुल. और उसके बाद से मैंने प्लेज ली कि दिस सेकंड लाइफ गिवन बाय गॉड टू हेल्प द पेशेंट, एंड आई एम डूइंग माय बेस्ट. सो हम यहाँ पे ना, आपको जो आपने एक उसकी मिसडायग्नोसिस की बात की, एक और डिफेंस है आपके लिए, एरर ऑफ जजमेंट. एरर ऑफ जजमेंट इज नॉट नेग्लिजेंस, but you have to prove that na it is an error of judgment. We have to prove it from our knowledge and skills that yes, it is an error of judgment. It is possible. So that is not negligence. That is not negligence. Known complications are not negligence, but you are not telling to put the literature with this percentage is known complication. That is why we are losing case. और केस फाइल होना is not important. आपके अगेंस्ट केस अपोजिट पार्टी ने क्या जीता है, then that is important. उसके लिए आप यहाँ, जैसे पिछले डिस्कशन में ये आता कि उसके बाद भी उसने केस किया तो क्या हो गया, उसके बाद आप अपील में जा सकते हो, रिव्यू में जा सकते हो, रिवीजन में जा सकते हो. अभी देखिए राहुल गांधी को वो कर दिया, खत्म हो गई क्या स्टोरी. We will move to the High Court for appeal, then to the Supreme Court. Supreme Court में triple Constitution bench, but again, yes, who will come to fight that struggle? Thank you, sir. Thank you. Anybody else? बाद में हमसे I think we are already running short of time. I think we will not entertain more questions. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your from your very vast knowledge. You have tried your best to curtail in short and deliver us as much as possible you can. So we are very thankful to you, sir. We among us have a very legend in the field of forensic medicine who have worked throughout his life with extreme sincerity and with ethics. And fortunately he is my esteemed teacher and professor and ex serviceman of BHU, Dr. S.K. Tripathi, sir. I would like to invite Dr. S.K. Tripathi, sir, on the dais, please, sir, to facilitate the speaker and the chairperson, sir. Dr. Mukesh Yadav, sir. Dr. N. Gopal, sir, please. Oh God. Dr. Garg, sir, please.
Now we are really running short of time. Now I would like to invite Dr. Adarsh Kumar sir, who is Professor Department of Forensic Medicine and Toxicology at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, on the topic of negligence, recent insights. Sir, please welcome, sir. I would like to invite Dr. Mohit Jain sir, Dr. Vikas Sachdeva sir, and Dr. A.D. Shukla sir to please chair the session. Mohit Jain sir, मेरा वाला मिनिमाइज होगा और बंद कर दिया तब से कॉल बहुत देर लगेगा एक पर्सन को तो बुला लो मैं पर्सन को बुला Dr. Vikas, Dr. A.D. Shukla sir, वो है तो लेजर है एक्स्ट्रा पॉइंट है हाँ जी Dr. Santosh Kumar, ophthalmic. Dr. Santosh Kumar, Department of Ophthalmic, please. आइए डॉक्टर साहब. Respected chair and august audience, very good afternoon to you all. After listening to our previous speakers, Dr. Vijayanath and Dr. Madhav, I think practically nothing is left for me to add upon. Still, I will try my best to little bit contribute more on this very complicated topic of medical negligence. Definitely, the time was allotted to me is 45 minutes. It was supposed to start at 11:30, but now we are starting at 1:30. So there is a definite gastro break as well at 2 p.m. So I may be eating little bit into your gastro break as well. Well, the topic which has been given to me, negligence, recent insight, and I must congratulate Dr. Archana. Oh yes, now it is coming. Yeah. So I like to acknowledge my sincere thanks to the whole organizing team of this forensic medicine department, Motilal Nehru Medical College, Prayagraj, especially Professor Archana Kaul, for giving me this opportunity and for selecting this very pertinent theme of the topic, that this negligence and copra, a kaleidoscopic insight. So I think this word itself, it is a bit catchy. I think everybody of you must have, when you have seen the theme of the CME itself, you must have tried to understand what exactly is kaleidoscopic. I could remember when I was you can say a young child and all, at that time we used to have the arts and crafts exercises. And at those times when exercises was given to us to make some kind of this hexagon shapes, cardboard, along with the broken bangles of different colors and all, putting mirrors behind that and trying to just see, to observe what exactly is there, the different colors, different you can say shapes, what we are coming of that. In fact, that was the meaning of exactly kaleidoscopic. So I think the Professor Archana has tried to just cover it by selecting this particular word
that the different aspects of this negligence, medical negligence, which can be covered under this one day theme, CME on this. As soon as this Prayagraj or the name comes to this city, I think this is already covered by our Dr. Bansal, that a little bit introduction about the Prayagraj city, how much holy city it has been famous. Erstwhile it was called as Allahabad in the name of Allah. I am not going into the chronology of that. Now your city, it's a rare combination of a very pious Hindu city as well as developed by the Mughal emperor in the name of Allah. And incidentally, if you might have observed that this particular week of the period of the month, we are having not only the Navratra, the pious days, but from yesterday, we have started the Ramzan as well. So again, this day becomes extremely important and pious as well in this pious city of Prayagraj, where we are discussing this CME. And as soon as this Prayagraj, or the holy city of Allahabad, comes into our mind, the picture of Sangam Triveni comes into picture. Kumbh Mela, which happens every 12 years, that comes instantly to our mind. Go further, Allahabad is the city, the place, although it's not a capital of the state, but it has got the High Court as well. The Lucknow bench has created afterwards. And of course, the Public Service Commission, the highest body of selecting all those class 1 vested officers and all. That is also the building is here only in this city of Prayagraj, holy city of Prayagraj, famous for that. And this city has produced, has given us not only that, 4 prime ministers. This one city has given us 4 prime ministers and probably the maximum number of IAS as well. Maybe comparable to the JNU. I think still Allahabad or Prayagraj gave us the maximum number of IAS. And to top it all, why it is important and close to me, because it gave me my better half as well. My wife belongs to this city. So Allahabad has got a very special place in my heart. So in nutshell, I think my time starts now for 45 minutes. So this will be our overview. I'll be just touching upon few of these aspects of medical negligence. After covering all those court cases and ethics and all those, I will try to touch upon what are the various safeguards as a doctor which are available to you, which will be helpful to you in your day-to-day practice, and especially the concept of defensive medicine, which is already there, but just the word which has been coined, and now it is everybody is talking about this, and of course few of the concluding remarks, recommendations. So I'll begin with the quote by Sir Edgar G. Spartling, 120 years ago. He wrote in 1902. I'll just say that quote: "As the culture made progress, the priest-physician was found ever in the forefront." So physician and along with the priest, pujari. What was true as to influence wielded by the medicine man of the ages past ought to be and will be many times, manifold for the enlightened medical man of today. Unquote. It still holds true even after 120 years. It's a bit slow. You will agree. Now this practice medicine now has become too much risky after listening all those things. Mutual faith has been replaced with the mutual suspicion. Undue expectation. Why it has happened? Because of this undue expectation from the patient side, where the doctor says that before you examine me, promise me nothing is wrong. This is undue expectation from the patient side. And simultaneously, the exaggerated promise from the doctor side. He will say, no, keep the faith. I will take care of everything. Exaggerated promise beyond his competencies may also be sometimes. So all these medical negligence options, when all these remedies are available to a patient or to a consumer, violation of fundamental right. Our Mukesh boss is very fond of mentioning this Article 21. Yes, it's there. So whole this right to health and health, everything is based upon that. So that empowers the patient. Consumer Protection Act, Indian Penal Code, when we talk about the criminal negligence, the law of contract is there, law of torts is there. And in addition, in various ICAMs and all, we have seen even the PILs, the public interest litigation. So all these remedies
are available to the patient as a consumer. Now, we can say in the current scenario, the medical care certainly is not or not what is used to be, say 25 years ago, say 50 years ago. The whole world has changed and the medical profession practice has changed like anything. This type of articles are news. Doctors in the dock every second day. The articles we find in the newspapers, which just paints the doctor in a different kind of picture to a common person. These kind of news cuttings you will find almost every day. You take the newspaper of any of the place, Hindi, English, whatever, you will find these kind of news highlighted by the media, putting the doctor, putting the whole profession in a different, you can say, painting in a different brush. Doctors asked to pay compensate for the patient's death. Doctor faced 10 lakh compensation claim like that. Hospital to play faulty test. All these kind of things. All these doctors come under Consumer Act, of course, case against the ENT specialist. All these kind of news, and now this type of news, if the general public is reading every day, now you can understand how much it is affecting the psyche of the patient and how much it is changing his understanding, or you can say the faith which earlier what having in the doctors. Now after these kind of things, that mutual faith is gradually losing every day. Somewhere all these kinds of things are responsible for that also. And of course, there is a lot of judicial activism and honorable courts. So many medical negligence suits have been filed against the doctors, and where this Jacob Matthew case already has been touched by Dr. Mukesh Yadav. Before that, if you see, in that State Commission of the Madhya Pradesh, the Jacob Matthew case came in 2005. 5 years ago, that Consumer Forum said that trial of medico-legal case cannot be well justified without the expert witness. This was re-emphasized by Jacob Matthew case, and then they made the certain guidelines. Here, they have specifically mentioned in the absence of production of expert evidence of the opposite parties cannot be held negligent in their service. But that was a single judgment. Nobody bothered about that. Afterwards, of course, this is a landmark case in the history of, you can say, Indian scenario, when we talk about the medical negligence, where all these terms were clearly defined and much enhanced. And also, of course, as Dr. Mukesh Yadav has said, that yes, along with the direction to place some kind of mechanism to take care of that. Till that time, these you can say the guiding principles are there. The central government was asked to make some kind of mechanism. Even after 18 years or so, we have not to reach to that stage. Now this directive, what is on the prosecution of doctors, they have said that negligence in the context of medical practitioner necessary calls for a treatment with a difference. A simple lack of care, our previous discussion, when the doctor was here, probably he has left, he was just discussing about all these. Simple lack of care, an error of judgment or an accident is not at all proof of negligence on the part of medical professional. If we just understand these meanings, I think the meanings of these words and apply in our real life situation, we will be, you can say, much knowledgeable to take care of all these issues. Because we are not aware, of course we are aware sometimes, but we are not able to handle in a proper manner or to understand the intricacies of these and apply in our real life situation. So who is an expert? When we talk about the expert, talking about the medical negligence suits and all, there comes the role of expertise, that yes, who is an expert? So the degree of care which is expected by an MBBS doctor is not equivalent to any other, say, postgraduate doctor, and that is not equivalent to a super specialist doctor. The expertise of the person varies, right? So it is not only the qualification, also who is the expert. So it has to be judged according to that scenario, right? And MBBS competence of an MBBS doctor cannot be judged on the basis of the expertise which a super specialist doctor has. It cannot be equated. Who is an expert? It was, in fact, I found this interesting definition
by this Niels Bohr, our nuclear physicist who got the Nobel Prize. An expert is a man who has made all the mistakes which can be made in a very narrow field. So that is called as an expert. That is just a lighter vein, but we know how much difficult it is. So 4 days of negligence already covered by Dr. Mukesh Yadav and previous speaker. Duty, dereliction, damage, and that damage should be a result of the direct causation or the intervention, whatever is being done. All these 4 ingredients of the negligence have to be proved before labeling it as a case of negligence. I'm just, because of the paucity of time, I'm just rushing it. So what are the usual plea of defenses against the negligence which is available to a doctor? Just you can say extending these all those 4 Ds. No duty towards the patient, duty performed in accordance with the prevailing standard, therapeutic misadventure, error of judgment we already touched upon, contributory negligence by the patient and all, not talking about the composite negligence, the corporate negligence, all those things. And of course, then there is a doctrine of res ipsa loquitur, when the fact speaks for itself, and then it's an open fact finding kind of thing, where the onus to prove guilty shifts. Normally, it is the patient or the plaintiff who has to prove that the doctor has erred in the judgment. But in the case of res ipsa loquitur, doctor has to defend himself. While patient doesn't have to prove anything. So patient is freed from the responsibility of providing evidence to prove negligence by a doctor, where the burden of proof is applied. This is shift from patient to doctor, or you can say the complainant to defendant, right? So all these excuses. And we know that all these cases of like this leaving swabs, instruments inside the patients, right? All these cases, operation on wrong person, wrong limb, wrong part, etc. But actually, when you go into the intricacies of these, sometimes it becomes even more challenging. Can I have a glass of this water bottle, please? I'll share one experience where it looks like a very simple case of res ipsa loquitur, but how it just, when we inquired, I was a part of the inquiry committee. What happened? One lady was operated on the neck for some ailments, right? So just to cut the story short, there were 2 ladies of the same name, Rajwati, like that, almost of the same age group, right? 35 to 40, same age group. So when the OT list was prepared, one lady, the number 1, it was there, number 1, and the other lady was in the OT list, it was mentioned at number 3 or 4, right? And the number 4 lady, there were already 4 or 5 times the surgeries were postponed. What happened? That the husband of that lady, the bribed that OT technician, OT the person, and said that please, जो मेरा patient है ना, इसको number 1 पे कर दो, इसको पहले ऑपरेट कर दो, ऑलरेडी 5 बार ऑपरेट हो चुका है, 4 बार टल चुका है, और उसको 4 उस पे कर दो, right? When the poor surgeon just put a leak, and then we realized that this is not the same person, because as we know our system is there, right? किसकी क्या responsibility है? Resident आएगा, वो आएगा, सर्जन आकर के सीधे ऑपरेट करना शुरू करेगा, लिक करेगा, लिक भी रेजिडेंट का काम होता है, it varies from place to place. But as soon as he realized that probably what was the diagnosis, it is not matching what he was supposed to do the surgery on that. Now it created hangama, and the poor doctor just taking this wrong patient, taking this plea that the operation was performed on a wrong patient. It was highlighted, case was पूरा media में आ गया, doctor को खिलाफ arrest, jail और ये वो सब शुरू हो गया. The inquiry committee was formed, and then the facts came like this. Now whose fault it is? जिसने bribe किया, उसके husband ने उसका fault है, या किसका fault है और कितना fault है? Right? When we talk about negligence, there is issue of apportionment. When we especially talk about the compensation part, then all these issues come even more into picture. That okay, once it is settled that yes, it is there, but out of 100%, 60% doctor's responsibility, 20% nurse's responsibility, 20% other team's responsibility. What is the responsibility of the senior resident who is part of the team? How much he is vicariously responsible? Giving you another example of this leaving the swabs in a gynae case. Right? So what happened? Again the same story. That ठीक है, उसको जो है स्वाब मिला, उसमें नेक्स्ट टाइम जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें हो गया कि भाई इस डॉक्टर साहब ने जो ऑपरेशन के दौरान स्वाब छोड़ दिया है. Now again it went into litigation, and when we are conducting the inquiry, now whose responsibility is to count the number of swabs?
Is it the surgeon who is doing is it his responsibility to count? किसकी responsibility है? 15 swab थी कि 20 swab थी, becomes difficult because we are not having that foolproof system. SOPs standard that yes, it is the responsibility of the nurse. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंस्ट्रूमेंट सेट में अगर इतने सेट में ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतनी सीजर हैं, इतनी ये हैं, इतनी वो हैं, तो all that as soon as the operation finishes, we must count that. The number of swabs, she must count that and verify that all the numbers are same. It's not, there is no, you can say, lesser number of that. So, whether it is the doctor or the surgeon who is fully responsible for that act, it becomes question mark. Right? So, sometimes the cases which look very simple, even in cases of res ipsa lacetur, it becomes extremely difficult when we talk about the all those issues in much detail. So, what are the safeguards against these negligence suits? So, as very rightly said, that uphold the dignity of the medical profession. I think that's the baseline how to avoid all these kinds of suits. So, immense interest in the welfare of the patient, doctor-patient relationship. We have discussed enough more than that, and of course, the cost-effective treatment. Where in India we are talking about the, you can say, very less paying capacity and all those. We always have to keep that thing in our mind. The cost-effective treatment. Then update the medical skills, like having this kind of CMEs. This CME itself has been awarded 3 credit hours. So kudos to Professor Archana for having this. So by updating this regularly, you can say attending this kind of CMEs, where we actually learn. It's not for the certificate purpose. What happens usually, frequently, what I have seen, that CME में register करा लिया है और उसके बाद में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, हाउ कर रहे हैं, बाद में सर्टिफिकेट तो मिल ही जाना है, क्योंकि मतलब सिर्फ क्रेडिट आवर से है. Why? Because स्टेट मेडिकल काउंसिल हैज मेड मैंडेटरी दैट आपको 5 साल के रिन्यूअल के बाद में 25 आवर्स का एक क्रेडिट चाहिए. आई थिंक अभी यूपी में शायद ये नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, बट अदर स्टेट मेडिकल काउंसिल्स, दिल्ली आई कैन से दैट, Punjab I can say that, all these are following that. So it's just a kind of compulsion, but there is not actual learning. I'm sorry to say that the crude fact, even with all professional brothers, they are actually updating their knowledge or just having this for the certificate purpose. Anyhow, our idea is to just update these kind of medical skills by participating in these type of CMEs where we actually learn from. Beware of all medical related laws. I think most of us forget about the forensic medicine persons who talk about the general practitioners and all, hardly 2 or 3 laws. They might be remembering, they might be knowing that to be very little extent. I think whatever laws which are pertinent to our profession, which we come across, we must understand that. We must understand, because only then, when we have that knowledge of those, it's not much, maybe only 10 to 15 laws. If we have got that command, if we clearly understand that what exactly is the essence of that law and how it is to be applied in our practice, that's where you can say the art lies, right? And the social services, health education, free camps, rehabilitation, we are talking about all these kind of things. They give a different kind of message to the general society, general persons. When you organize, when these kind of are in, so now you can imagine the person who is regularly organizing this kind of free camps, naturally the you can say the impression what the general public carries, that this Dr. Saab is not much into money making practice, because he is doing some kind of charitable work also. In reality, if it is so, right? So then now that is another safeguard. I'm talking about something different. So your impression to the general public, the general public perceives you in a different manner when you have got all these kind of social services which you regularly extend to your public, your area. So I am just summarizing these safeguards, what can be taken. I have just mentioned it all starts from C itself, right? C, competence of the doctor, that is the hallmark. So doctor has to competent every time by whatever means and all, communication enough has been taught, and we have just modified the AdCom modules and all. So many times we have seen that it is basically
you can say, this communication gap between the doctor and patient, which leads to the litigation. So ultimately, it just boils down only to that part. There is a lack of communication between doctor and patient. Consent, right? There are myriad of examples of consent: implied consent, oral consent, written consent, and so many. Confidential. So you must know how much is to take, and very rightly discussed we already that it has to be an ongoing process. The blanket consent, just merely taking the signature on the printed paper, that is not the meaning of consent at all. It has to be a continuous ongoing process at every step, right? I think previous speakers have elaborated much on that, so I'll be just stopping here. Confidentiality, maintaining the confidentiality of your patient's treatment records and all those things, whatever you have come across as a professional practice, it is your responsibility to keep them confidential, not divulge unless it is a scenario of privileged communication where you are supposed to divulge, but then still there is a procedure what you have to follow. It's not that you are just giving in the media and whatever, as Dr. Mukesh has said, that somebody else that provide the names, details, and everyone. No, you are not. You can give the number. Yes, we have operated 50 number of patients in this period, but not the individual details, right? So we have to understand that how much is to reveal in a particular situation and to whom, right? So that is the meaning of confidentiality, that we have to maintain whatever we have come across with the patient. Careful prescribing, I already touched upon that. Unnecessary prescribing should not be there. Clinical records, maintenance of the clinical records, all that is essence, because that will be the only thing which will save you from litigation afterwards. I will elaborate further upon that also. Yes. So besides your clinical skills, so 5 things are essential. Essential when we're talking about this: communication, that's the whole art, and the documentation, right? Second, and that communication of documentation, the third step, and that documentation of whatever you are communicating. And fourth one is, the last one is, whatever has been communicated and documentation is there, the preservation of that documentation. In fact, that is the clinical records. So that is essential. So these 5 things are essential to, you can say, besides your clinical skill, you may be a very good clinician, but you have to simultaneously follow this. You may be a very good surgeon, but if you are not effectively communicating with your patient, you are liable to have some kind of medical negligence suit, right? Then, yeah, in other words, we can just simplify: first examine thoroughly, then prescribe cautiously, always write legibly. Of course, now we are marching towards the computerized records, but always write legibly. Doctors are known for having a poor handwriting, sometimes intentionally also. We have seen that no, केवल एक particular medical store वाला ही आपकी writing को decode कर सकता है. दूसरी जगह कहीं prescription लेकर के जाओगे तो वो समझ ही में नहीं आएगा कि कौन सी medicine लिखी हुई है. Right? All those kind of practices, malpractices, I should say, are there. So always write legibly. I'm not talking about that writing should be calligraphic, very beautiful. No, it cannot be. बहुत rare होता है. लेकिन it should be at least readable by everyone. Everyone can understand what exactly is written. And finally, whatever has been written, read out fluently to the patient, to the relatives, as per the situation, so that he or she exactly understands what is there, right? And we have seen for the illegible handwriting, now the court has taken the cognizance. It's not that I'm theoretically. In this particular case, doctor says on oath that she will improve her writing. In case of Maharashtra, Nagpur, what happened in that case? She made an MLC, and while giving the evidence in the court of law, she was even unable to identify her own handwriting. She was unable to interpret. So now court took cognizance that please take care of this illegible handwriting, right? इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही केस है. लिखावट समझ नहीं आ रही, हाई कोर्ट ने डॉक्टर को तलब किया, राइट? टेढ़ी मेरी और अस्पष्ट लिखावट ना पढ़ने के कारण सीतापुर जिला अस्पताल के किया और 10,000 रुपए का उसको पेनाल्टी भी लगाया, राइट? So look simple, but then now the courts are viewing all these things in a different manner. Fines doctors 5,000 rupees for poor handwriting. 3 different cases, 3 different scenarios, right? So what are the newer options or the newer concepts
which are coming. Of course, Dr. Mukesh Yadav has touched little bit about the professional indemnity insurance cover and insurance medicine. If you go in the Western world, there is a huge cost of that. Insurance medicine. Every doctor is professionally, you can say, have got the professional indemnity. And the same concept, I think now it is there in our part also. We are also having, you can say that the indemnity, the cover as well. What I will touch upon here, specifically elaborate further, is the concept of defensive medicine. What is there? What is the defensive medicine? When the doctor ordered tests, procedures, or visits, or avoid high-risk patients or procedures primarily to reduce their exposure to malpractice liability. So this is the, you can say, the defensive medicine, concept of defensive medicine has gradually came into our practice. Now we are also, you can say, not immune to it. We are also following that. So many of the situations. So this MACOD has exactly defined what exactly is the forensic defensive medicine. Quote, the ordering of treatments, tests, and procedures for the purpose of protecting the doctor from criticism. Right? It is nothing, he is not doing anything welfare for the patient. It is just taking care of, just to safeguard himself. He is taking this rather than diagnosis or treating the patient. So under that concept, he is doing that because he has to, in this, you can say, the era of negligence and all, the doctors are practicing more and more into defensive medicine. So other workers, unquote. Other workers have extended this definition to include the avoidance and the reduction of risk taking as well. Because every doctor has got a different personality. If you must have seen, the surgeons are relatively bold and they can take much decisions. Physicians are something else. You talk about the different speciality, right? So you can understand it's, of course, it is a personality based, but it's also discipline based as well, because it is inherent in the practice of that particular branch. So sometimes this also affects this how much one doctor, he may take the risk and all, does all those kind of things. Other doctor, no yaar, mere bas ka nahi hai, chodo isko refer kar do, jaane do. All kind of things, personal things are there, right? So this what different, I'll give you a few examples. This performance of excessive imaging studies. अच्छा जरा सा वो आया, अच्छा सीटी नहीं, तुरंत बस न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, सिंपल सा आप हेडेक बताइए, वो सीधे आपको एमआरआई प्रिस्क्राइब कर देगा. वो एमआरआई करा लो. क्यों? रीजन मे बी टू फोल्ड. That system है, dichotomy है, that is one aspect also, right? But then sometimes if the doctor is having that kind of, you can say, perception that यार कल को litigation में जा सकता है, नहीं उसको एमआरआई तो करना ही करना है, सीटी या जो भी है करना ही करना है, knowing fully well इसका इंडिकेशन नहीं है, फिर भी करेगा. Sometimes it goes vice versa also. अभी पेशेंट का सिनेरियो, एजुकेशन लेवल बहुत बदल गया है. टच टू that also. Now we are having the googled patient. The patient is having so much knowledge after, you can say, going through the internet and googling each and everything about that particular disease. He has got more information than you, and then he will question you, he will ask you so many questions. So sometimes it is done that lag. Institution of polytherapy, right? Invariably एक नहीं यार 5 specialties को involve कर लो तो हम safe हो जाएंगे, right? Like that. And unreasonably low threshold to perform cesarean section rather than wait for natural birth. Now we have seen it very commonly. Previously, if you see the natural birth or the versus the cesarean birth. Now what is the scenario? Every second birth is going for cesarean section, not waiting for the time, not EDD है 15 दिन बाद, नहीं जी अभी करा लो यार, लीकर में ना कम हो रहा है, इसका आ रहे हैं कुछ इसके ना मूवमेंट्स कम हो रहे हैं. All these kind of things, knowing fully well इसमें इंडिकेशन नहीं है, लेकिन सीजरियन सेक्शन करेगा तो उसको ऑपरेशन का पैसा मिलेगा and all those kind of things. So somehow, somewhere, all these things are also responsible for all the scenario what we are facing. I'll just give you a very simple example. One example where a 7-year-old boy, he has got a sore throat, right? So his doctor checked him for this streptococcus infection, and the screen and culture were negative. Now there can be 2 approaches for that. What is that moment? Doctor hesitates. He remembers that उसका जो एक colleague था, उसने एक antibiotic नहीं दिया था, who did not give antibiotic to a young girl with a sore throat and negative streptococcus test.
The girl was one of the few patients who developed streptococcus infection despite a negative screen. Right? Now the patient pharyngitis worsened and she developed post-traumatic rheumatic fever. She had rare and terrible complications. Her doctor had done everything right, but there was a long and painful lawsuit. The lawyers argued that if he suspected streptococcus infection, he should have started the antibiotics. Now, shockingly, this doctor lost the case despite all things in place. Now, this fellow was having that knowledge of his colleague that this has happened to my colleague. He goed like that, he went like that. So now what he did? Now this little girl's outcome was just so sad and unfortunate that the jury felt that they had to give the family something, and he recalls that his doctor friend was left financially and emotionally devastated. Just a simple case of streptococcus infection, not providing because of negative screen, not prescribing the antibiotics and all. Now this doctor decided not to risk the fate and prescribed the antibiotic. Now what happens? The antibiotic does nothing for the patient's viral pharyngitis because it's a case of viral pharyngitis, but it does kill off his healthy bacterial flora and allows the overgrowth of antibiotic resistant organisms, which infect his ingrown toenail, causing cellulitis, causing bacteremia, sepsis, and ultimately death. Now, what is the diagnosis in this case? Sepsis due to multiple drug-resistant organisms. Who is the culprit? Defensive medicine. Now, that's why I told you it's a very difficult situation, right? So, in this kind of you can say situation, always seek expert consultation if needed, right? Not for the purpose of dichotomy. If needed, that word is very important, right? Don't do dichotomy. That's totally unethical and all. So, if needed, you are supposed to seek expert consultation. Don't think that yes, I am the boss and I know each and everything. If it is going beyond your control, you must be very receptive to seek the opinion from your concerned specialties and other specialties, whatever required, and when needed. So what one was if needed, and second is when needed, right? It's not that as soon as it comes and you immediately referred it to your super specialties and all those. So you have to understand when this referral is needed for seeking the expert consultation. So we talk about the defensive medicine. These are the, you can say, the fields of medicine, the practitioners which are involved, the general surgeons, neurosurgeons, orthopedicians, obs and gynecologists, radiologists, emergency medicine physicians. These are prone to have, you can say, defensive medicine approach in current scenario. There was a study in JAMA itself where the way back in 2005, defensive medicine among high risk specialists, and they tried to see that in highly this volatile malpractice environment, what is how they are faring, right? But just going through the literature, I tried to search. This is according to physician's specialty, how they are prescribing for this malpractice risk and all, and how it is changing. So, what is the sources of the defensive medicine? Again, as I told you, consequences of being sued. That's at the baseline that doctor is afraid of being sued. So that's one thing why he goes into the defensive medicine. Consequences arising from the missed or delayed diagnosis, as well as the quality of expert witness. So all these reasons for the practicing defensive medicine, using technology to pacify demanding patients. As I told you, now the Google has made everything so much information there. In fact, there is information overload. So patient is sometimes knows much more about that particular disease once he has got cross consultation with someone else, and he Googles and he try to have all the information and then try to question you and try to discuss you. It becomes extremely difficult for you to handle that, right? So sometimes the defensive medicine practice is done to bolster their own self-confidence, and not only that, create a trail of evidence that they had confirmed or excluded particular disease or entities. Just in the background that yes, we have to safeguard ourselves. तो हमारे पास एक पूरा evidence हमने written में create कर दिया. ये देखो हमने ये भी करवाया था, ये भी investigation कराया था, ये भी किया था, वो भी किया था. Knowing there is no indication, of course, but then just to create this trail of evidence as a means of defensive medicine out there. So now you can understand that how much
this in our India. Still, we are not developed country, we are developing country, right? So how much burden, financial burden it will be on our population, on our general population, we can understand that, right? So sometimes what will be the consequences for the patient? Sometimes, yes, it's not always negative, may supplement the care by additional testing or treatment, replace care, referral to another physician or health facility, and reduce care as well when there is a refusal to treat a particular patient in the garb of the defensive medicine. Right. So these are the positive consequences for the patient. Every time it may not be negative because the referral of difficult cases to more specialized physician or better equipped hospital may be quality enhancing treatment for the patient. So this increased patient explanations or more detailed note taking when we refer, that of course is clearly beneficial. Otherwise, we just write one word, refer to it without even giving sometimes the discharge summary, or if it is written discharge summary, just mentions few lines, not mentioning the particular details or the proper details of whatever intervention, whatever treatment has been done, whatever interventions has been done, and all those, right? So sometimes it is beneficial for the patient because if it is written in a proper manner when you want to refer the patient to for the super specialty and all, then it helps indirectly to the patient. So, but it takes a toll on the interpersonal quality of care and the patient-physician relationship. And that's the whole, you can say, that's why we are seeing that how much cost of the treatment is increasing day by day. And as an outfall of that, we are, you can say, losing that doctor-patient relationship. Some physicians may spend additional time with the patient and provide more complete information about the treatment risk and alternatives because of the malpractice risk, but others may just react with suspicion, confrontation, and the abandonment of the patient as well. So all these lost days of practice. But when if you are sued as a doctor, now you directly you will have a lost days of practice and you are involved in engaging all kind of lawyers and counsels. So ultimately it affects your the financial well-being as well as a doctor. All these, right? Indirectly, it's a denial or the termination of policy. If you have got the professional indemnity insurance, those who have got that probably might have experienced. If there is a potential or many litigations against you, the insurance cover will go on increasing and increasing, and sometimes even may you lose. The insurance companies may deny for your renewal and all, or the cost may be increased. So inflated premiums, especially in the certain high risk specialties, as I told you, what are the high risk specialties and all, and in particular geographical areas as well, right? Metro cities and all, where all these litigations and all, they are much more than that. So, and the other consequences, the psychological on the doctor, damage to the self-esteem of the doctor. Any suit, medical negligence suit against a doctor, it definitely damages the self-esteem of that doctor, no matter whatever you can say senior doctor or the junior doctor he is. So definitely it affects the self-esteem of the doctor. And there are emotional accusations towards the legal system. हम लोग अभी बात कर रहे थे कि legal system बेकार है हमारा और डॉक्टर को इस तरह से पेंट कर देते हैं. All those sometimes annoyance and sometimes even to the animosity. No, बिल्कुल बेकार system है and all those things. What we say, right? So often questioning its ability कि हमको जो है ना fairly judgment किया नहीं practice का, right? Because there are no medical persons and all those kind of things, right? So what are the consequences this arising from the delayed diagnosis? Every advancement in technology dictates a corresponding advancement in the technical expertise and the clinical approach as well. Now we have seen the you can say the very strange signals from our judiciary. Now this concept of reasonable care has no objective yardstick. And how it is to be defined, that what is reasonable care, as I shared in my opening remarks, that yes, and the courts, what they say, they read subjectively in determining the liability. So what is the current practice now? Because of that reason, now every case of negligence, alleged medical negligence, is now being referred to the state medical council, so that whether that doctor has given the reasonable care, that will be decided by a competent body, like the state medical council, right? And based upon that, the honorable court will take into consideration. But that's another pathetic scenario. We have seen the state medical council also sitting on the deck, not deciding the cases even for years. So many problems even in that system as well.
right? So what could be the other consequences? The more physician ordered tests or perform the diagnostic procedures with low predictive values or provide aggressive treatment for the low risk conditions. Now, as I shared you one example of a streptococcus infection, the more likely such practices are to become the legal standard of care. If everybody practices that system, after a certain time, that becomes a norm. As we have shared that law and medicine, both these branches are always dynamic. As the law changes with the passage of time, our medical practice also changes with the time. The procedures, the things which we are doing 10 years ago, we are in today's scenario, they are not acceptable, not accepted, right? So we have to understand that. Limited resources, funding constraints, how far defensible, I'll just rush through that. Medical price charging, right? So something like that. We see that how this insurance business and all these comes into picture. आप किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाइए जो कि इंश्योरेंस का आपसे कवर्ड है, पहले आपका ट्रीटमेंट तो गया भाड़ में, सबसे पहले पूछेगा आप इंश्योरेंस से कवर्ड हो, और कवर्ड हो तो कौन सा कवर्ड हो, उसको पहले वो देखेगा कि उसका वो कितना इसमें कवर्ड है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड करेगा और फर्दर करेगा. Now you can understand how much tricky and how much complicated it becomes when we talk about that. Medical audit is there. What we are taking care of these audit things. Yes. How far it is efficient in shedding the tears? Yes, of course we can afford at the big hospitals, or you can say the medical college levels and all. We have got that monitoring kind of system where we try to maintain the quality of the care through evaluation of whatever medical and clinical documentation has been done, and responding constructively to the outcome of the evaluation, and of course the regular updating. So at AIIMS I can say that yes, we were having a PIPS, what we called as earlier, it used to be called as Death Review Committee, but the name death connotes a different kind of meaning. So we have changed it with terminology and we called it as a PIPS, Patient Improvement and Performance Improvement and Patient Safety Program. So in any case of unexpected death, so if the autopsy is done, then all those findings, whatever, whether the clinician has gone wrong despite his best efforts, we used to discuss in a closed door. Idea is not to implicate anyone, idea is to how to improve our system. Because so many times we have seen it is actually the fault of the system itself, administrative failure on many occasions, and not the individual fault. So try to improve ourselves every time, right? So no one is stressing about the defensive medicine. Our undergraduate, young and undergraduate students are sitting over the backside. So I'm not you can say advocating this for the residents and all, and take decisions based on the patients and not on the entertaining possibility of being sued. Dichotomy, I think I will just skip. Yes. So there should not be fee charging should not be there for any of the referrals, and quality of the expert witness as well. When you have done all these things, medical, you can say as a doctor, you are always a witness, because in a case of suit, malpractice suit, you are the prime witness. The case will start from you. You have to defend yourself, right? So if you are going to walk the walk and talk the talk of an expert witness, you must be professional, ethical, truthful, and of course non-biased. So these four qualities you have to imbibe in your practice. So more sincere approach is the need of our, when we talk about these very complicated issues of this medical negligence. And I was interesting, I have seen this kind of a photo. Now you can see he has designated the death of that person. You see the last line, died due to negligence of Sujata Birla Hospital and Dr. Chawla. Now this is the kind of, the day are not far when these kind of things, unfortunately in our Hindu culture there is no kind of this system, but yes, Muslims and all who bury their body and who make all these kind of things, there could be this kind of diagnosis or this kind of thing, because he was so much pissed from the doctors. He was so much annoyed with the doctors that he inscribed on the, you can say, deathbed also, that is stone laid on that. So, but everything, even in this, you can say, gloomy scenario, there is a, you can say, silver lining. And as I shared you, the Jacob Matthews case,
which the guidelines which tell that directed the Supreme Court, the central government to frame the guidelines. Now, just if you see, just 10 days ago, there are talks that now the guidelines for determining the medical negligence are underway. Health Ministry says that the matter is under consideration. Right. So it's all after all these efforts and halla bulao and all those kind of things, we are marching in a positive direction where we will have some kind of mechanism, maybe some kind of medical, just like what we have the accident tribunal, maybe we may have the medical accident tribunal cases as well. So to be perfect, to save patients, you have to learn medicine, but to save yourself, learn forensic medicine. Okay, that's the carry home message. And if you want to learn forensic medicine more, there is another forum which I can provide you as organizing president and this conference, IMLECON, as you see, IAMLECON 2023.com, 1 to 4 June 2023, where we'll be discussing all those issues threadbare on a much more, you can say, much enhanced manner and all. So you all are, I will take this opportunity to invite you all for attending this conference, our conference, IMLECON 2023. It has got all the information. Please log on to the laptop, not on the mobile. Thank you for your patient listening. Any queries, I am available over this Gmail. Thanks for your patient listening. And I think I stopped exactly at 45 minutes. You have delivered very good lecture and you have, और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वर्चुअल ऑटोप्सी के फाउंडर भी हैं. So Dr. Adarsh or Dr. Sudhir Gupta, both are the founder of, co-founder of the virtual autopsy in India. We started in All India Institute of Medical Sciences. तो 2017 में इसका सेमिनार हुआ था, उसके वर्कशॉप हुई थी रोहिणी में. तो मुझे लगता नहीं था कि इतनी जल्दी इंडिया में आ जाएगा, लेकिन डॉक्टर I think I was there in that workshop as well. जो NICFS में हुआ था, रोहिणी में. तो उस परिकल्पना को डॉक्टर आदर्श और डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने मिलकर साकार कर दिया और अब वहाँ पे सीटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे के माध्यम से बहुत अच्छी वर्चुअल ऑटोप्सी हो रही है और राजू श्रीवास्तव के केस से बड़ा उसको प्रसिद्धि मिली. Am I right? बिल्कुल. Actually, we were searching for the opportunity, and as we say, when there is a will, there is a way. So the Raju Srivastava was a very appropriate case because there was nothing in that case. It was ideally the autopsy should not have been conducted. But since it was a medical legal case, so as per the police formalities, the autopsy was conducted. So we advocated that, okay, the autopsy, the general person feels that autopsy means just opening the dead body. And everybody is afraid of that. Nobody wants to get their relatives cut, right? Because that's the general scenario. So we told them that हम autopsy करेंगे, but हम with the help of CT scan और X-ray से करेंगे. तो उसमें क्या करेंगे हम body नहीं open करेंगे और जो internal वो हम CT scan और X-ray से document कर देंगे और external findings तो हमको दिख रही है. राइट. और एक्सटर्नल फाइंडिंग में कुछ था ही नहीं. 42 दिन हमारे पास एडमिट था, सारा उसका 250 पेज का ट्रीटमेंट रिकॉर्ड हमारे पास है. एवरीथिंग इज देयर, नथिंग टू जस्ट एक पेन डाउन करना था और पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना था. तो दैट वाज अ चेंजिंग सिनेरियो. एंड आफ्टरवर्ड्स हमने बहुत सारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो भी एडमिटेड केसेस होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ऑटोप्सी इज जस्ट वेस्टेज, तो वी आर जस्ट चेंजिंग आवर प्रैक्टिस ग्रेजुअली. So yes, but that's one thing that we can be proud of, that yes, we have taken that lead and we are doing that autopsy, or you can say to be legally correct, I would say the term, exact term should be the digital autopsy. Autopsy is just you can say something कुछ हवा में हो रहा है, तो यहाँ हवा में नहीं हो रहा है, but with the digital means. Instead of opening the dead body, we are not cutting the dead body, we are documenting the internal findings with the help of scans and all. एंड अगेन उसमें भी कहूंगा, जो हमारे मोदी जी का बहुत पेट वर्ड था कि आप लोगों को आपदा में अवसर ढूंढना है, तो इनफैक्ट द कोरोना गेव अस दैट अपॉर्चुनिटी, दैट आपदा में अवसर, दैट वाज आपदा पूरे वर्ल्ड के लिए. और हमने उसमें अवसर क्या देखा कि जितने भी ब्रॉड डेड केसेस जो भी आ रहे थे, सारे ये वाले अपने जो भी ब्रॉड डेड थे, सारे कोरोना वाले, कोविड वाले, नोबडी वाज ट्राइंग टू इवन टच द पेशेंट. तो उसकी ऑटोप्सी भी करनी है बिकॉज सारे ब्रॉड डेड है, हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है. हमने चेंज किया सिस्टम, हमने पुलिस वालों को पढ़ाया कि ऐसे ऐसे आपको अपने इंक्वेस्ट पेपर में चेंज करने हैं
और हमने उन सारी डेड बॉडीज की सीटी और उससे एक्सरे से उनकी इंटरनल की डॉक्यूमेंटेशन फाइंडिंग्स करें। तो कॉज ऑफ डेथ हमारे लिए इजी हो गया। द पर्पस ऑफ ऑटोप्सी इज टू गिव कॉज ऑफ, so we could give the cause of death without opening the dead body because कोई इंजरी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, और ये हिस्ट्री है, और उसके बाद में एक्सरे में ये फाइंडिंग मिल रही है, सीटी में ये फाइंडिंग मिल रही है। तो कोरोना में हमारा जो सिस्टम था आपदा में अवसर, we have used it to the best possible manner, and because of that we have reached to that stage that now we are just refining ourselves and other cases also where we can actually use the technology for the benefit of the society. Thank you, sir. It was an excellent talk, particularly for we clinicians who have got very little exposure for forensic medicine. Is there any question from audience? Yes, I'll be happy to take. Sir, I would like to ask two questions, if you allow. Yes. So first is that we clinicians have got very heavy OPDs, and we don't have time to interact with the patients, and we don't have time to write a diagnosis. So many times we indulge in writing abbreviations and acronyms which are not very universal. For example, if it is TB, it is well known what is the full form of TB. But when it is PND, for example, it may be paroxysmal nocturnal dyspnea for a cardiologist, or it may be post-nasal drip for an ENT person. So does this also constitute an illegible handwriting, or does this constitute something else? Yes, it does. In fact, I'll share you our example of our professor colleagues are there from forensic medicine. There is a one terminology which is very fond of everybody is writing, CLW. Now, what is CLW? The doctor has written with the intent of clean lacerated wound, or whether it's a clean lacerated wound or it is a cut lacerated wound. So now, as soon as you use this word, short form CLW, अब आपने अगर डिफेंस को सूट कर रहा है कि उसको CLW कहना चाहता है, तो वो कहेगा डॉक्टर साहब तो CLW है, आपको कहे हाँ ठीक है, हो सकता है कट लैसरेटेड बोल रहा, जहां आपने बोला कट लैसरेटेड है, आपकी ओपिनियन को वहीं चैलेंज कर दिया, क्योंकि कट डिनोट शार्प इंजरीज एंड द लैसरेटेड डिनोट्स द ब्लंट इंजरीज। फंसा लेगा आपको कि डॉक्टर साहब ये वेपन क्या था, शार्प था कि ब्लंट था, एंड यू डोंट हैव एनी आंसर। सो वी ऑलवेज एडवाइज प्लीज डोंट यूज द एब्रीविएटेड फॉर्म्स एज फार एज पॉसिबल, unless and until it is standardized and everybody is convinced with that. TB may be an exception, everybody knows, but is it penalizable? It depends in the context of the case. It depends. If it's not, in fact, the penalizable, it may penalize, but the court may view in a different manner in the context of the case. Ultimately, it is the learned judge who has to decide that whether he is convinced your explanation that okay, this is the, you can say the usual norm, visual terms what we use in our day-to-day practice, and there is no confusion is that. The idea of the court is there should not be any confusion or contradiction in whatever terminology you are using. So that's why we advocate when we are, especially in the medico-legal case, medico-legal these sheets and all, where you are writing the MLCs and everything, you should write in a proper manner. And even because in your medical documents also, if you adopt that practice, that will save you. That will save you instead of writing the abbreviation. And of course, now we are talking about the electronic medical records and all those. So issue of illegible handwriting and all these, this will go away. In fact, अभी सुबह के ही मैं न्यूज देख रहा था, इंडिया अभी हाई कोर्ट इलाहाबाद ने यूपी गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ना वो सारी कंप्यूटराइज कीजिए। आज मॉर्निंग का ही सर्कुलेट हो रहा था। So we are gradually marching into this, you can say, the technology we must use, because when this electronic EMR and all, that will safeguard us. So बहुत easy हो जाता है हमारे लिए। Thank you, sir. With this, we come to the end of this session. Dr. Tripathi sir, SK Tripathi sir. जितना अभी इन्होंने कहा है, उसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ। अब जो अभी आपने क्वेश्चन किया, जब मैं एमडी कर रहा था, 79 की बात है, ठीक है, 79 की बात है, उस समय एक स्प्रिट फिशर की एक फोरेंसिक मेडिसिन हैंडबुक, जो कि आजकल जो नवनीत सरता वगैरह जो पतली सी होती है ना, सिर्फ उतनी बड़ी हमारे लाइब्रेरी, बीएचयू लाइब्रेरी में थी। मैंने उसमें पढ़ा, उसमें एक कोटेशन मुझको मिला जो प्रिवी काउंसिल के लॉर्ड जस्टिस का था। उन्होंने लिखा था कि डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड डॉक्टर एज एन वेपन।
ये उसके अंदर दिया हुआ था और बहुत सारी और चीजें थी। मेरे दिमाग में ये खटक गया, मैंने उसको तुरंत उसके आगे एक सेंटेंस लगाया और वो सेंटेंस ये था, दीज मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय अस, मीन्स वी डॉक्टर्स। नाउ सो if you have made your document properly, then these medical documents will be used as iron shield in the court of law. Exactly. Got the point? आपने जो भी प्रश्न किया, आधा उत्तर वहां से मिला और आधा उत्तर डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से मिला। डॉक्यूमेंटेशन क्या है भाई? ये तो जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, डॉक्यूमेंटेशन के तरीके बदल रहे हैं। अभी एक डॉक्यूमेंटेशन का आपने एग्जांपल सुना, इन्होंने कहा कि हम वो पेन से लिखकर डॉक्यूमेंट नहीं किया, मैंने राजू श्रीवास्तव जी के केस में हमने डिजिटली डॉक्यूमेंट किया। सो नाउ डिपेंड्स ऑन रिगार्डिंग द कंसेंट, रिगार्डिंग वेरियस अदर थिंग्स, इफ योर डॉक्यूमेंटेशन इज परफेक्ट to the point, then you will be saved yourself in the court of law. One more thing, sir. Our medical profession starts with documentation and ends with documentation. Now start from the registration, case paper बना, ठीक? उसके बाद तो तमाम इन्वेस्टिगेशन, ये वो ऑपरेटिव नोट्स और मेडिसिन के तमाम नोट्स और डे टू डे जो आप जो जा रहे हो बेड पर, वो उसके नोट्स वगैरह वगैरह वगैरह, और अंत में पेशेंट इज क्योर्ड एंड डिस्चार्ज और रेफर टू सम अदर प्लेस फॉर फर्दर मैनेजमेंट, और he died, he succumbed to died and death certificate. So your documentation is so important. One more thing, sir. आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें आपने कहा कि हम ये लिख देते हैं. Now be remember, whatever you are documenting means तुम एक अक्षर भी उस पर अगर लिख देते हो तो वो कोर्ट में मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मेडिको लीगल केस में, नो नॉट एट ऑल. If issue has been made against the doctor there in court of justice in whatever say the manner, your each paper diagnosis or whatsoever will be one evidentiary document. So be careful when you are preparing any document. Think about that. Those documents may be put in the court of law as an medical legal document. Thank you. Yes, true. एक सर टेक्निकली जो आपका क्वेश्चन था ना, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करता हूँ कि अगर जैसे टीबी तो इज ए नोन, उसका पता है कि एब्रीविएशन क्या है. एक्चुअली CLW मींस कंट्यूज्ड लैसरेटेड वुंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज बाय एंड लार्ज. तो वो आपकी आंसर जिसको कि पीपी यूज करेगा, क्योंकि जब आप कट बोलते हो तो आप शार्प फोर्स की बात कर रहे हो बाय एंड लार्ज, और लैसरेशन वो तो ब्लंट फोर्स की बात करता है. तो वो आपके वेपन झूठा साबित करना चाहता है, क्योंकि वो कहेगा कि वेपन ही आपका गलत है, तो आपकी रिपोर्ट को चैलेंज कर रहा है वो. तो टेक होम मैसेज इस बात का ये है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, लर्नर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन. सो एटलीस्ट तो आपको प्ले तो किसी वर्ड से करना ही नहीं है, बट बीइंग ए क्लिनिशियन यू शुड बी डबली श्योर दैट दो टर्मिनोलॉजीज ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन व्हिच यू आर नॉट श्योर दैट व्हाट दे स्टैंड फॉर, यू शुड नेवर एवर यूज देम. ठीक है. सो नंबर 1. और नंबर 2, सर ने जो बोला, मैं तो बहुत सर के बच्चे से भी कम उम्र का बंदा हूं, तो ये तो एक कागज की बात है. मैं तो कहता हूं कि आपने किसी भी टुकड़े पे भी कुछ भी लिख दिया, फॉर्मल ओपीडी की तो आप बात छोड़ दो, आपने व्हाट्सएप पे लिख दिया, किसी कागज के एक टुकड़े पे भी कुछ लिख दिया कि ये लो जी, और साइन नहीं भी किया, सो दैट इज, मुझे लगता नहीं है कि मुझे बताने की जरूरत है. तो वो तो हमेशा ट्रेस हो ही जाएगा कि हाँ डॉक्टर साहब ने लिखा था, क्योंकि रोस्टर निकल जाएंगे 10 साल पहले के, सब कुछ हो जाएगा. So it is even hazardous to write anything not required, even not on a piece of paper as well. So CLW by and large, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो वो एमओ को फिर भी पता होता है. CLW को कंट्यूज लैसरेटेड वुंड ही बोल रहा है, लेकिन अगर कोई बंदा इग्नोरेंट है तो पीपी उसका डेविएट कट लैसरेशन की तरफ करेगा, जो कि बाय एंड लार्ज कट लैसरेटेड वुंड कोई होता ही नहीं है ऐसा, क्योंकि वो शार्प फोर्स है और वो लैसरेशन जो है वो ब्लंट फोर्स की बात है.
तो वो तो डंडे और चाकू में डिफरेंशिएट फंसा देगा ना, वो बोलेगा डॉक्टर साहब आपका वेपन ही गलत है, तो बेनिफिट डाउट किसको मिलेगा? एक्यूज को। तो आपकी रिपोर्ट चैलेंज हो गई और उसका काम बन गया। So that's very clear. I think did these two discussions are very clear that you write the full form, provide as far as possible the abbreviated terminologies, and as the document goes, I'll just and one very common what we think with I'll share this document की बात कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन जो जितनी भी लैब्स होती है कुछ लिखते हैं नीचे एक लाइन डाल देते हैं नॉट फॉर मेडिको लीगल पर्पस, वेरी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। इट डजंट स्टैंड एनी वैल्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वो खाली नीचे की लाइन लिख देने से कि नॉट फॉर मेडिको लीगल पर्पस आप समझते हो कि नहीं मैं तो सेफ हो गया, कोर्ट में कुछ हो नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल गलत है, सोचना नहीं होता है। एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बस एक कोर्ट से फिनिश करना चाहूंगा, इन द eyes of court of law, whatever has not been documented has not been done, right? So you write properly and make a proper document, whatever I have shared you all these 5 steps of documentation and all. Chairpersons and the audience. Thank you, sir. Thank you, sir. Once again, I would like to invite Dr. S.K. Tripathi, sir. So please, once again, sir, please. का रखा हुआ है लाना चाहते हैं जा जल्दी जा लास्ट होने वाला है लेकिन बाहर है यार वो होना का है चलो सचिन The candidates of faculty paper presentation and chairperson, please come on the dais. Faculty paper presentation, the candidates, Dr. Raghav, Dr. Mohit, Dr. Pudam, Dr. Sangeeta, उधर वाला तो मारेगा ना ये वाला मारेगा पोडियम मारेगा and the chairperson, Rakesh Chaurasia sir, Dr. Anubha, Dr. Shama Dwivedi, and fourth, पानी लेते हैं अलग भाई Dr. Tariq Bhanu sir.
आइसक्रीम ये नहीं है पता हो बहुत कैसे चला है वही लगी कब Please proceed for gastro break. सबको भूख लगी। लाइव कट कर देगी भाई के लिए लाइव कट लंच लंच हो गया कट करने जा रहे हो नहीं लंच हुआ पूछ लीजिए लाइव कट करना नहीं का पीला कह रहा है जाएगा लंच लंच का टाइम हो गया जाओ बैटरी तो चेंज करना है क्या करना है चलने तो बैटरी चेंज करके लगा दो क्या भैया कहाँ गया 2 दिन जा हम वही क्या खा जाओ जल्दी जाओ जाओ वही के लोग तो हाँ हो जाए हो जाए पहले कैमरा कायदे से फैला दो पहला काम तो हमारे पास ए भैया कैमरा पहले सही रखो अब कितना सुबह अबे सही साइड में रख लेना साइड में रख ले लाइव नहीं करे लाइव चल रहा है ना लाइव चल रहा कैमरा हटा के लगे अबे यहाँ इधर रख दो मतलब सेंटर पे अंदर रख दो आगे से रास्ते हाँ वो करेंगे सबसे हट जाए तो मार्टिन पर तो रोहित डॉट तो गुप्त ना देखो क्या है ना रोहित डॉट ठीक है पीछे रख दो ना पीछे हाँ आज बताई थी पीछे लगा के रख दो यहाँ पे आओ मतलब 10 छापे का पहुंचो पर रोज क्या तक गया हुआ था हाँ बाबा
आपके क्या भीड़ भाड़ गई निकल गया बता नहीं तब क्या बता आना पड़ती ठीक पहले देखिए इनविटेशन दे रहे हैं जो भी लाना दो लाना ठीक कौन कुछ चल रहा है कहीं रख चलवा अभी क्या था जो भी लाना दो लाना अरे उसमें चुप चुप नहीं अमन वो पकड़ो कहीं रख देगा नहीं वो अनुभव लेके बैठो रख देना आप यार न रख दे भाई जा खा अरे तो वहाँ तो कोई बैठे रहा है वहाँ कोई दिक्कत हम लोग खाने का कैमरा चारों जाई रास्ता जाए लायक है ना हाँ तो बस ठीक है चारों जाई कैमरा तो गलत जगह लगा है कैमरा सब यहीं रख नहीं कोई दिक्कत नहीं अभी कोई आएगा नहीं फील्ड के पीछे जो जगह है ना फील्ड में फटाक लगा दे अबे अभी कोई आएगा नहीं जाओ चल विकास भाई आइए हैं खाली सब खाना खाए भाई गिरी तो हम लोग को छोड़ ना पहले रोज ना हमें विकास भैया तो भरोसा है विकास भाई भरोसा है तोरो भरोसा है अरे हम देखेंगे एक बार और कुछ नुकसान कर सामान नुकसान कर उतना इतना भरोसा है लोगों के इंसान पे वो स्टैंड कौन छू ये जो सामान रखना ये रख बैटरी सब चार्जिंग लगा देखो हां ये तो लगा है ये तो डिस्चार्ज जेब में फाड़ के लिए रखते चार्ज वाली जेब में डिस्चार्ज वाली रखी है लेकिन सामान तो कौन ना हुई ये तो चार्ज लेते आना भाई जो भी लाना दो लाना हम लेते हैं खाएंगे सबका जो भी लाना दो लेते हैं मंगा आइसक्रीम मंगा हुआ है 2 रुपया ना जैसे धूप चला बाहर जैसे धूप चला कॉल पर है तो लगा तो आते हैं कमरा बंद कर गई सब बाहर निकल जाए अंदर चारों के बाहर बहुत पूरी बजन दे कोई सुनवाई न करे खटखटा ये टोटो बगा खत्म खाना खाएगा चले चला ये दिखा यार ठीक है वो कहाँ है अरे हम लोग गए सात सर्किट सर्किट है तो फिर चलेगा फिर चलिए फिर चलिए क्या खाना खाएगा वो क्या बजे तक चलेगा यार डॉक्टर भरेगा खाना खाएगा ठीक है कोई लड़का आवा कोई हाँ भैया आएंगे बुआ आएंगे तब चला 8 बजे अभी खत्म है अभी फिर दूसरा और लंच भाई आप खाना
आईडी चली कहाँ थी? निकाल नहीं गया तू? आईडी चली कहाँ थी? आईडी निकाल लिया था। तुम लोग? हाँ, वो तो माइक चल रहा था ना। भैया उधर ही गए बाहर। चलो चल भाई खाना ले पी ना पानी ले पी लेता है सील पाए सील पाए आप पी जा गुलाब खाई तो कौन इसको बंद करवाओ यार अभी बंद चल रहे तो अब तभी अब पानी पाओ ऊपर ना खा गया उससे बेस्ट कुछ नहीं समझ में उससे बेस्ट भयानक आग जल रही है। हाँ भयानक आग जल रही है। बिना फॉर्म मारे काम नहीं ये लोग भी हैं लीक हो कर गया रहे हैं। ये लोग भी हैं लीक कर रहे हैं। तो धुआं धुआं हो गया है। उठा बोल के सचिन सचिन इसको उठा बोल के बाहर कर दो समझे एक अट्ठा लोग बाहर रखो उठा बाहर बाहर कर दो ना धुआं भर जाएगा पूरे उसमें नहीं आराम है अरे
भर जाएंगे पानी डालते हुए काला बहुत बता फटकारा मारने लगा भाई। भर जाएगा फिर गलत बता वही कर रहा हूँ उसको बाहर रख लेना अरे एक बार जाई दिखती बेचारा। चला जाएगा आराम से आराम और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे अरे हमका ना जला दी निकल क्या गंदा है। आप पानी डाल के हाँ फोटो अच्छी है अरे तो आज महंगा पहन रहा है ना नहीं वो सस्ता होगा राशन क्या तो बता दो ये रखिए जैसे ही चालू ना ना उसको तुम अपने मोबाइल से ऐसे पूरा चश्मे नहीं लगाए चश्मे लगाने की एक लेट चीज होगा चेहरा साफ नहीं है लाइट और थोड़ा पास आके जूम कर खींचो ना थोड़ा सा ऑन कर दो कैमरा घुमा ऐसे कैमरा खोलो कैमरा इधर घुमा इधर कभी कैमरा में तो पता नहीं ना ऑन कहाँ ये लेकिन पूरा ब्लैक हो गया है चालू कहाँ हुई बोलो ये अंदर में आ गया है क्या हुआ कहाँ से ऐसे आइए आप ऐसे ही एक कार्ड खाना खा लिया तुम लोगों ने जो है ना
यहाँ देखिए कैसे बोल रहे हैं ये पॉइंटर चाहिए कोई नहीं है वहाँ पे अच्छा कहाँ मुझे दिखती रहा जब मैं गई थी अभी रखा हुआ 20 रुपया
நான் கால் பண்றேன் சரி நான் நீ ஜாயின் பண்றதா பண்ணுறது ஹால் 8 இருக்குல்ல ஹால் 8 இருக்கும் போகிறோம்
I am ready. Welcome back, delegates. None of us can deny the fact that there is gender inequality deeply embedded in the society, and the healthcare facilities are no exception to this fact. To discuss this inequality, our next topic for today is negligence, current scenario of women healthcare in our country. Dr. Mosmi Singh will enlighten us on this topic. Dr. Mosmi Singh is currently Professor of Forensic Medicine Toxicology, and she is also in charge of Forensic Radiology Unit in KGMU, Lucknow. There she is running an age estimation clinic. She is a member of Indian Academy of Forensic Medicine and Indian Academy of Biomedical Sciences and Emergency Medicine Association. She has more than 12 years of teaching experience in medico-legal field work. She has guided PhD as well as postgraduate students. She has been an examiner in various universities of India as well as Nepal. Delivered guest lectures in various scientific conferences. She has been a part of many publications in national and international journals. She has served as task force in the COVID task force at her institution as well as at the district level.
She was resource faculty for online training for strengthening and capacity building of doctors and nursing. She has conducted various trainings for all government and private medical colleges of Uttar Pradesh. She was critical reviewer of training module for the same. She has served as a resource faculty in 4th International Craniofacial and Dental Summit in Sri Lanka. Teaching is her passion, so she got Best Teacher Award in her institution. She has received various awards of honor in Forensic Medicon. Welcome, ma'am. For chair this session, I would like to request Dr. Khushi Parveen, Professor and Head, Department of SPM, Dr. Piyush Saxena, Professor and Head, Department of Medicine, and Dr. Aarti from Ophthalmology. ये ऑन कर दें. इधर से जाने का रास्ता है? सर जी. ये इधर से. अच्छा ऊपर जाएंगे आप? खड़े हो ऊंचा हो. Excuse me. ये यहाँ से कुछ बंद करके गया था मैम. इनसे कह दीजिए चलेगा. इनका वाली प्रेजेंटेशन लगा ली. हाँ हाँ सर. Thank you so much, dear Archana ma'am, for having me here as a part of this program. I want to congratulate the whole organizing team, Dr. Archana Kaul, Dr. Archana Kaul, Dr. Rajesh Kumar Rai, Dr. Dinesh Kumar Singh, and each and every resident who has worked in team for making the program grand success. And I must appreciate the theme, Negligence and Copra, a kaleidoscopic insight into the legal and medical dilemma. For this area is having relevance for all specialities. I must compliment Dr. Vijaynath, Dr. Mukesh Yadav, Dr. Adarsh for giving us an insight about the topic and giving relevant information. Their talk will definitely going to inspire doctors to more explore about this. So I will be discussing here the current scenario of women's healthcare in our country in reference to negligence. Before starting my talk, I have a question for all of you. Like, what do you think about our Indian healthcare system? Does our Indian healthcare system treat the women of country in fair and just manners? And if the answer yes comes in your mind, then we don't need to discuss further. But if you have any doubt in answering yes, then the discussion will go on. So whatever the scenario is, how the programs make, like first we should recognize what is the problem and then we make as per problem the effective programs. The only effective program is not needed, effective and sustainable. The program which can sustain as well to remove in achieving the optimal health for our Indian women. As overall we can see the life expectancy has increased in India, like women have more life expectancy, higher life expectancy than men, as there have been substantial improvement in the management of conditions that were responsible for largest number of deaths and disabilities. Like in 1960, the life expectancy was 40 years, but now the life expectancy has increased. Like in 2023, it is more than 70. So it is a continuous cycle. Whatever is the problems comes and we search for solutions, we implement them, and now the scenario is. But whatever life expectancy has increased, now we have to work to improve the quality of life with this life expectancy. So first we find out what are the women's health challenges. There are so many challenges. I am opting few of them, 3 of them. So what do you think when a woman have at maximum risk in her lifetime? Obviously when she gives birth to a child. So the first women's health challenge which I have opted to discuss, that is maternal mortality. As all of you know, maternal mortality, what is maternal mortality?
As per WHO definition, the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and site of pregnancy from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes. अगर हम ओवरऑल बर्डन देखेंगे इस प्रॉब्लम का ग्लोबली, अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं जो ग्रीन कलर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्रीज which have achieved the SDG target 3.1 and that is less than 70 maternal deaths per 1 lakh live birth. चलिए वर्ल्ड मैप पढ़ा देती हूँ आप लोगों को. अगर हम यहां से देखेंगे तो ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अफ्रीका. अगर अफ्रीका को देखेंगे आप तो हम लोग बहुत बेटर कंडीशन में, हम लोग यहाँ पर है ग्रीन और रेड के बीच में. तो अगर हम अफ्रीका से कंपेयर करेंगे तो हम बहुत ही बेटर सिचुएशन में. लेकिन एज हमें इंप्रूव करनी है तो हम उन कंट्रीज को देखेंगे who have achieved their SDG target 3.1. So here in column we can see the where we are. Like in 2020 it was 417 in India. It was 417 per 1 lakh live birth and now we have reached around 100. And now we have to improve till 2030 less than 70 per 1 lakh live birth. So what are causes which are responsible for a maternal death? There are complications, and other than complications, there are other factors which may be responsible for these deaths. So we have to find out. I will present 4 case scenarios related with maternal death. So before starting the quick scenario, what are the complications which are responsible for these maternal deaths? There are 5 major obstetric complications which are responsible for majority of maternal deaths in developing countries. Like they are hemorrhage, infection, unsafe abortion, hypertensive disorders of pregnancy and obstructed labor. So जब भी एक maternal death हो रही है यहाँ पर तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या कॉजेज हैं. अब क्या कॉजेज रहे, कभी बहुत सारे केसेस में जब केसेस फाइल होते हैं तो किस तरह से चीजें होती हैं, इस तरह की मैं 4 केस सिनेरियोज आपको दे रही हूँ. उसके बाद फिर हम लोग उससे डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई और कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है. So here is the case scenario 1. Here a pregnant woman admitted in primary health center and the report states that the doctor left the health center while the woman was in labor. So the nurse subsequently conducted the delivery but when the nurse was conducting she was not became successful and the case led into the complications. So when the case led into the complications, woman was referred to the district hospital and where the doctors of district hospital they conducted delivery, but both mother and child both died. So when the both woman and infant died, the husband filed a case with the State Human Rights Commission which recommended compensation for the husband. And it also initiated disciplinary proceedings against the doctor for not being available during the delivery and against the maternal health audit committee members for absolving the doctor of responsibility. The commission also ordered the state government to strictly monitor doctors' presence to provide 24-hour delivery care in all PSCs. So this was the case scenario. This was the first case scenario where doctor was not available during and the staff conducted the delivery. Then here is the case scenario 2. Here a government doctor association announced a boycott of all the maternal death audit committee as they said that these meetings became teasing, ragging and fault-finding meetings by the administrators and leading a lot of stress to the obstetricians and anesthetists. So gynecologists said that they were insulted even when deaths were not preventable. And साथ ही साथ एसोसिएशन का जो प्रेस था उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया कि जो गवर्नमेंट है वो एडिक्वेट नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट पोस्ट नहीं कर रही है सेंटर्स पर. तो हमें ये देखना है कि जब भी हम कोई ऑडिट हो रहा है, क्लिनिकल ऑडिट हो रहा है या डेथ रिव्यू कमेटी हो रही है, वहां पे हम क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. इसका ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, to find out the probable cause of death, to find out the probable preventive cause of death. So whenever in future similar kind of case comes, that those gaps which have been left, they can be filled. But these kind of discussions, they are never a part of any audit. Like some centers have post of government भी कह रही है कि भाई बहुत सारे ऐसे centers है जहां पर 7 पोस्ट है डॉक्टर्स की, लेकिन 2 ही डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है
और दोनों डॉक्टर्स के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल है कि वो ऑल्टरनेट 24 आवर्स की ड्यूटी दे रहे हैं वहां पर। Here is the case scenario 3. A media report suggested that at least 7 to 15 pregnant women died in 3 government hospitals in one district in a 4-month period. तो फिर एक इंक्वायरी सेटअप हुई, और जब इंक्वायरी सेटअप हुई तो उसमें ये पता चला कि जो उन्हें ब्लड दिया गया था दैट वाज स्टोर्ड एट एन इनएप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड लीडिंग टू रिएक्शंस एंड डेथ. सो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ऑर्डर क्रिमिनल एक्शन एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंसर्न हेल्थ स्टाफ. However, 1 महीने के बाद एक 3 डॉक्टर्स की कमेटी बनती है और they probed the death and they concluded that they were not linked to the blood transfusion. So it is not always the complications of the जो भी conditions है, जो भी disease है, they are responsible. There may be any third factor which may be responsible for death of the person. Then here is the case scenario 4. A local language weekly magazine reported the admission of 24-year-old pregnant woman who has been admitted in the government medical college hospital. उसका रूटीन जितना एंटीनेटल चेकअप था वो सब नॉर्मल था एंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स वर नॉर्मल एंड लेबर पेन्स बिगिंस द फॉलोइंग आफ्टरनून. उसके फैमिली मेंबर्स ने ये स्टेटमेंट दिया कि वहां पे कोई सीनियर डॉक्टर वाज नॉट अवेलेबल, सो 4 to 5 जूनियर डॉक्टर्स कंडक्टेड द डिलीवरी एंड वुमेन प्रोलॉन्ग लेबर में चली जाती है. फिर जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को कॉल करते हैं एंड ही कंडक्टेड द डिलीवरी एंड टुक इट टू द रिससिटेशन रूम. फिर वो पेशेंट फिर उसके अटेंडेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि हमें हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ेगी टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर. इन बिटवीन बच्चे की डेथ हो जाती है ड्यू टू एस्फिक्सिया और बहुत सारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिस्पाइट द ट्रांसफ्यूजन विद सेवरल यूनिट्स ऑफ ब्लड द मदर आल्सो डाइड. सो मेडिकल कॉलेज डीन टोल्ड द मीडिया दैट द बेबी डाइड ड्यू टू एस्फिक्सिया and the mother died due to excessive bleeding, and Dean also denied any allegation by the relatives of deceased women of any negligence by the doctors. अब अगर हम अपना हेल्थ केयर सिस्टम देखेंगे तो हमारे यहाँ अराउंड मोर देन 3 लाख एलोपैथिक डॉक्टर्स जो है वो रजिस्टर्ड है विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल, और हमारा जो पॉपुलेशन है दैट इज 1.4 बिलियन. तो हर पेशेंट को एक सीनियर डॉक्टर अटेंड करेगा ऐसा मुश्किल है. हमारे यहाँ जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो अराउंड 1:1000 to 1:834 के अराउंड है. अब इन सारे जो हम 4 केस सिनेरियोस देख रहे हैं जिसमें फर्स्ट में वो कह रहे हैं कि डॉक्टर वाज नॉट अवेलेबल, स्टाफ हैज कंडक्टेड द डिलीवरी. सेकंड में हम देख रहे हैं कि ऑडिट में जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो रहा, वहां पे ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया. थर्ड में हम देख रहे हैं देयर इज थर्ड फैक्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डेथ ऑफ द मदर. एंड फोर्थ में हम देख रहे हैं सीनियर डॉक्टर नहीं है, ये लोगों को प्रॉब्लम है कि सीनियर डॉक्टर शुड बी देयर. सो ओवरऑल हम अभी तक हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर हमें चीजें पता, हम लोग जब इन्हें हमारे हॉस्पिटल्स में जहां भी फैसिलिटी में डेथ होती है वहां पे क्लिनिकल ऑडिट्स होते हैं. क्लिनिकल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ये होता है टू फाइंड आउट एनी प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ. इन प्रॉब्लम्स को और अच्छे से सॉल्यूशन करने के लिए एक चीज और बनाई गई है दैट इज मैटरनल डेथ सर्वेलांस रिस्पॉन्स सिस्टम. वो उसे ये कह रहे हैं कि मैटरनल डेथ सर्वेलांस रिस्पॉन्स सिस्टम दैट कैन ब्रिंग सिस्टमिक चेंजेस and prevent maternal death without damaging the morale of the health professionals. How it works, like it is a confidential review kind of system. इसमें ऐसे चीजें काम करती है कि whenever a woman of reproductive age dies, so the health worker identifies and reports that death, and he gather all the information from the family about the death from the family members. देन जहां भी डेथ होती है उस फैसिलिटी में हम देखते हैं वहां पर रिव्यू तो होता ही होता है एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ. देन दिस होल एग्रीगेट डाटा whatever health worker observed, what the family members statement and what is the death review committee report. This whole aggregate data goes to at another level, maybe district, maybe regional, maybe country level, and they analyze this whole aggregate data and make recommendations. They analyze whether is there any preventable cause of death. If there is any preventable cause of death, then they make recommendation to the response team. And response team, इसका फायदा यही है कि यहाँ से चीजें हेल्थ सिस्टम तक जा रही हैं और हेल्थ सिस्टम इनैक्ट कर रहा है recommendations to prevent future death. Like whenever a similar kind of case come to the facility, जो भी चीजें रह गई थी इस केस में वो इस बार न रह पाए और उन कमियों की वजह से जो प्रिवेंटेबल कॉजेज थे उन कमियों की वजह से दोबारा वो दैट शुड नॉट बी रिपीटेड. इसका ये काम करता है दैट इज मैटरनल डेथ सर्विलांस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम.
मतलब इट इज अ मॉडिफाइड एंड एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ आवर क्लिनिकल ऑडिट एंड मैटरनल डेथ रिव्यू ऑडिट्स। सो अब ये दो चीजें हमें और करनी है, जो भी स्टेट्स हैं जहां पे मैटरनल मोर्टेलिटी ज्यादा है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कम है, वहां पे हमें फोकस करना है तो कि हमें उनकी रिपोर्टिंग बढ़ानी है टू असेस द रियल बर्डन। सो अकॉर्डिंगली जब प्रॉब्लम पता चली कितना बर्डन है, उसके हिसाब से प्रोग्राम्स बनेंगे। एंड स्टेट्स विद हाई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी and low NMR, they should implement confidential review into maternal deaths to further reduce. Like अगर कहीं 1 हो रही है, they should proceed for 0. So this effective implementation of maternal death review can improve the accountability for health outcomes and critically the health system reforms required to achieve our SDG 3.1, that is less than 70 maternal deaths per 1 lakh live births till 2030. अब ये केस सिनेरियोज आपने देखे, इसमें से एक मैटरनल डेथ से रिलेटेड मैंने जजमेंट और निकाला है कि जब भी कोई मैटरनल डेथ हो रही है उसके बाद जब वो केस ट्रायल के लिए जा रहा है, तो हाउ अ डॉक्टर कैन सेव हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इस जजमेंट से ये चीज पता चल रही है जो हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, स्टिल आई एम डिस्कसिंग अगेन। देयर वाज अ डॉक्टर R.K.M. राजगोपाल हु वाज द प्रोप्राइटर ऑफ लक्ष्मी नर्सिंग होम, और इन्हीं के नर्सिंग होम में डॉक्टर S. विजय लक्ष्मी वाज द कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट। तो जो भी पेशेंट एएनसी के आते थे वो उन्हें असेस करते थे, पूरा एएनसी केयर करते थे। उसके बाद वो पेशेंट 9 मंथ्स प्रेग्नेंट होने के बाद वहां पे डिलीवरी के लिए आती है, डॉक्टर के.एम. राजगोपाल उसे ट्रीटमेंट देते हैं, उसे एडमिट कर लेते हैं, और डॉक्टर S. विजय लक्ष्मी भी आकर के उसे देख लेती हैं, और दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई हाँ हम इसकी नेचुरल डिलीवरी प्रोसीड करेंगे। सो द नेक्स्ट डे द fetus was alive, but the patient noticed in the afternoon the absence of movements of fetus in the womb. So they called an radiologist for scanning, and radiologist scan and confirm the death of the fetus. So both doctors informed the patient and her husband about the death of the fetus in the womb due to retroplacental clot. अब इन द व्यू ऑफ डेथ ऑफ द फीटस उन्होंने नेचुरल, हालांकि उसके हस्बैंड ने कहा कि आप सिजेरियन करके उसे रिमूव कर दीजिए, बट डॉक्टर ने कहा चूंकि डेथ हो चुकी है तो हम सिजेरियन करना इज नॉट ओके, हम नेचुरल डिलीवरी के लिए वेट करेंगे। तो नेक्स्ट डे उन्होंने उसकी नेचुरल डिलीवरी कराई। सो पेशेंट कंटिन्यू टू टेक ट्रीटमेंट फॉर पोस्ट डिलीवरी केयर फॉर अ पीरियड ऑफ 8 days, एंड देयर आफ्टर शी वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। 10 से 15 दिन के बाद द हस्बैंड ऑफ द पेशेंट लॉस्ट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन एलिजिंग द डेथ ऑफ अनबॉर्न बेबी in the womb of his wife, and that was due to medical negligence. The patient was stated if the doctors had performed cesarean section on the same day when she was admitted, they could have saved the child. अब इस बेसिस पे पुलिस के पास जाता है, वो एफआईआर करता है, एफआईआर रजिस्टर हो जाती है 304A IPC के अंडर, केस भी ट्रायल के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है कि जो डॉक्टर था डॉक्टर ने ये चूज किया कि भाई डॉक्टर ने उनको वहां पर वो प्रूव कर लेते हैं पहले वाले में कि भाई नेग्लिजेंस हुआ है, उनको कॉम्पनसेशन हो जाता है। लेकिन जब कॉम्पनसेशन उनको हो जाता है उसके बाद डॉक्टर फिर अगेन फाइल करता है कि भाई ये डिजर्व नहीं करते, इसमें नहीं, ये सॉरी मैं दूसरे केस का मैंने डिस्कस कर दिया, सॉरी so many case scenarios, so coming again, तो वो रजिस्टर कर लेते हैं 304A IPC में। The evidence on the record revealed that till the afternoon of second day of admission, the patient and her husband were indecisive whether the patient should undergo natural delivery or she should undergo cesarean delivery. So in circumstances that the doctor had not taken steps to conduct cesarean section, that cannot be termed as culpable negligence on the part of doctors. और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर कॉजिंग डेथ ऑफ अ पेशेंट, अ कोर्ट हैज डिफिकल्ट टास्क कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस वे करना, ये इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उन्होंने कहा फॉर कन्विक्टिंग एनी डॉक्टर फॉर क्रिमिनल नेग्लिजेंस द स्टैंडर्ड शुड बी ऑफ प्रूफ ऑफ रेकलेसनेस एंड डेलिब्रेट रॉन्गडूइंग, दैट इज मीन हायर डिग्री ऑफ morally blameworthy conduct. So to convict any doctor, the prosecution has to come out with a case of higher degree of negligence on the part of a doctor. Mere lack of proper care, precaution and attention or inadvertence might create civil liability, but not a criminal one. अब इसमें उनके पास ये था कि भाई जो रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट था, वहां पेशेंट अलाइव था, वो नेचुरल डिलीवरी ही के लिए, तो पहला स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यही है कि वो नेचुरल डिलीवरी के लिए ही जाएंगे। उसके बाद इस केस में ये कहीं मेंशन नहीं था कि जो डॉक्टर्स ने ये कहा कि नेचुरल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन के बीच में पेशेंट ने डिसीजन नहीं लिया।
तो सिजेरियन सेक्शन अगर आप कह रहे हैं किसी को ऑप्शन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां कोई सिजेरियन सेक्शन के लिए इंडिकेशन होगी। वो इस केस में पूरे मुझे कहीं नहीं मिली कि सिजेरियन सेक्शन के लिए क्या इंडिकेशन थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को डॉक्यूमेंट किया था कि पेशेंट वर इनडिसिसिव रिगार्डिंग ऑप्टिंग दी नेचुरल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन सेक्शन। वो चीज जो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, जैसे सर कह ही रहे हैं डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, तो वो इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे फेवर में गई है डॉक्टर के। Then the second issue which I am discussing here, that is unwanted pregnancies. In India, 1 in 7 unintended pregnancies in the world takes place in India, and over 60% of unintended pregnancies and 30% of all pregnancies, they end up in abortion, and 40% of all abortions performed globally, they are unsafe. So unintended pregnancies and subsequent abortions, they are intimately linked with the overall development of the country. So unintended pregnancy से related मैंने 2 केस सिनेरियोज लिए हैं डिस्कस करने के लिए, and the first case scenario is, यहाँ पर there was a she was having pregnancy of 14.5 weeks, and she went to the doctor for abortion. Doctor aborted pregnancy of her patient. Then she was and she charged 2,500 rupees for procedure. बार बार हम लोग फीस क्यों लिखते हैं कि हर बार हम जब कोई केस डिस्कस करते हैं तो हम फीस लिखते हैं कि डॉक्टर ने इतनी फीस ली, डॉक्टर ने इतनी फीस ली। जो डॉक्टर फीस लिख रहा है, वो जो केस में बार बार फीस लिख रहे हैं, उसका मतलब है कि वहां पे जैसे ही आपने फीस ली, आपकी ड्यूटी स्टैब्लिश हो गई। अगर आपने कोई पेशेंट आपने डील किया, उसे फीस ली, आपकी ड्यूटी स्टैब्लिश हो गई, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है किसी भी केस के लिए। So उसने 2,500 rupees लिए और उससे वो प्रोसीजर कर दिया। Next day patient came again with pain in abdomen. Doctor examined again and giving some medicines, but she did not get relief this time also. Next day again she met the doctor and complained of not getting relief. So a doctor again charged something and prescribed 1 injection and some medicines. She requested the doctor for reference to a government hospital, but the doctor refused to do it. But next day she visited herself into a government hospital, and there she was operated upon. डॉक्टर्स ने उसे ऑपरेट कर दिया और उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा कि आप जहां से भी करा के आए प्रोसीजर, he or she was an inexperienced doctor and who negligently conducted the incomplete abortion. So the doctors of government hospital took out the remaining product of conception which was led by the previous doctor, and however she could not survive and died after 2 days. उसके बाद husband ने he put the allegation that the doctor acted negligently on previous doctor by conducting incomplete abortion. So the investigating officer framed charges against the doctor under section 314 IPC. So इस केस में what are the point of discussion? पहली बात तो जहां पर abortion हुआ, जिस हॉस्पिटल में हुआ, वो हॉस्पिटल 20 years से रनिंग था और उनका जो हॉस्पिटल था वो रजिस्टर्ड था अंडर MTP एक्ट 1971। दूसरी चीज, जिस डॉक्टर को उन्होंने इनएक्सपीरियंस वर्ड यूज किया, शी वॉज अ ग्रेजुएट, post graduate in the subject obstetrics and gynecology, and she was practicing for last 20 years. तो ऐसे डॉक्टर को आप इनएक्सपीरियंस नहीं कह सकते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी ने इन एक्ट के अंदर किसी भी लेडी का एबॉर्शन किया है विद इंडिकेशंस, तो दैट दिस एक्ट नॉट ओनली परमिट्स द टर्मिनेशन by the authorized medical practitioner but also accords protection to such medical practitioners against legal proceedings. Therefore it becomes imperative to, इसको 314 में वो रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें करना भी था तो वो 304 में करते, 314 में नहीं कर सकते वो। अब इस केस में देयर इज ऑल्सो नो रिकॉर्ड ऑन द कॉज ऑफ डेथ। जब जहां वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, उन लोगों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया। जब वो उन्होंने उसको दोबारा ऑपरेट किया, उसके पहले उन्होंने कोई यूएसजी नहीं कराया कि उसका जिससे प्रूव हो सके कि हाँ इनकम्प्लीट एबॉर्शन था। तो यहाँ पे एक चीज और आ गई कि अगर उसने प्रीवियस डॉक्टर को उसने पुट किया एलिगेशन, तो देयर इज अ नोवस एक्टर्स इंटरवेनेंस, लाइक ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर भी अब हो चुका है। So it would not be known as whether the death occurred due to the faulty operation performed by the previous doctor or due to improper treatment given by the doctors at government hospital. Even for civil liability, it is held that a person is not liable for damage done in the chain of causation between the act and the damage is broken by the intervening act of a third person unless it is foreseeable consequence of his own act. तो जब वो पहले डॉक्टर के पास गई, पहले दिन आई चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब दूसरे दिन आई थी तब उन्हें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए था।
उन्होंने नहीं कराया, कोई बात नहीं, दूसरे डॉक्टर के पास जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर कर रहे तो उन्हें ऑपरेट करने से पहले उन्हें रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, उन्होंने भी नहीं किया। अब इस केस में हुआ क्या मुझे भी नहीं पता, कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि इसमें कोई चीज आप प्रूव भी नहीं कर सकते। देन हियर इज अ केस सिनेरियो 2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देयर वाज अ प्लांटिफ who had 3 children and they wish to have no more। वहां पे उस समय एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रन हो रहा था, एक कैंप चल रहा था। So they underwent the wife underwent sterilization operation। After few months she became pregnant and delivered a male child। कुछ दिनों बाद उन्होंने जब मेल चाइल्ड हो गया तो कपल ने स्टेट को कंपनसेशन के लिए उन्होंने एक्यूज किया, और डॉक्टर को उन्होंने कहा कि जो सर्जरी हुई है वो नेग्लिजेंस हुआ है उसमें, तो उन्हें अब चाहिए कॉम्पनसेशन फॉर ब्रिंगिंग अप द न्यू बॉर्न चाइल्ड। और स्टेट को इसके लिए कॉम्पनसेशन के लिए वो नेग्लिजेंस उन्होंने जो जिस कोर्ट में गए उन्होंने नेग्लिजेंस भी ठहरा दिया। स्टेट ने वापस से रजिस्ट किया इस क्लेम को ऑन सेवरल ग्राउंड। स्टेट रजिस्टर्ड द क्लेम, they took the plea of limitation and also that the plaintiff had been cautioned that it is not necessary that the sterilization operation should always be successful, and they have said that there can be cases of failure। इस बेसिस पे स्टेट ने रजिस्ट करने की कोशिश की, बट उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया। दे चूज टू एड्यूस नो एविडेंस। इसके एविडेंस में कि उनकी तरफ से कोई एविडेंस नहीं, नेग्लिजेंस नहीं हुआ, इसके लिए उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। सो कोर्ट ने भी यही कहा कि उनकी ड्यूटी नहीं है, कोई भी जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है उसकी ड्यूटी नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर नहीं जाता। लेकिन इस केस में ये भी उन्होंने कहा कि हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि उस प्लांटिफ ने जो एविडेंस दिए हैं उसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि द रिंग विच वाज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड दैट वाज ऑन नीलोसल्फेज एंड नॉट ऑन द फैलोपियन ट्यूब। सो शी एट्रीब्यूट्स द प्रेगनेंसी पॉसिबली टू दैट कॉज। अब कोर्ट ने ये कहा कि जब उन्होंने ये एविडेंस दे दिया है तो अब रिबटल एविडेंस जो था वो डॉक्टर और स्टेट को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई रिबटल एविडेंस नहीं दिया टू शो दैट कि ये जो चीजें हुई हैं ये एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एज अ पार्ट ऑफ फेलियर हो सकती है। उन्होंने कोई भी एविडेंस नहीं दिया। इस बेसिस पे कोर्ट ने ये कहा इट वाज फॉर, अब कोर्ट ने कहा इट वाज फॉर देम टू शो बाय गिविंग एविडेंस दैट देयर वाज नो वांट ऑफ केयर फ्रॉम देयर पार्ट व्हाइल कंडक्टिंग द ऑपरेशन and the subsequent pregnancy was due to reasons beyond their control and due to natural or any other cause. So there is no such evidence in this case. So then the court considered the issue and has come to the conclusion that the subsequent pregnancy of the first plaintiff was due to negligence on the part of the medical practitioner who had conducted the sterilization operation. तो हमें सिर्फ इसी पे रिलाय नहीं करना है कि हाँ फेलियर के केसेस रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अगर हम किसी केस में फंस ही गए और हमारे ऊपर एलिगेशन आ ही गया है तो हमें उसको अप टू द लास्ट लेवल तक, कि अगर हमारी गलती नहीं है तो आपको ऐसे रिसर्च पेपर्स ढूंढने चाहिए थे, ऐसे आर्टिकल्स निकालने चाहिए थे, बुक से एविडेंसेस देते कि आप उनको एविडेंस देते जिसके बेसिस पे वो डिसीजन ले पाते। तो ऐसे कोई भी एविडेंस इस केस में नहीं दिए गए। Then the next issue, that is violence against women। Violence against women is a public health crime। अब violence against women जो ऐसा है, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि ये नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ होल स्टेट, होल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ऐसी, अब जिसमें रेप के केसेस देख लेंगे अगर आप और एसिड अटैक के केसेस देख लेंगे तो 2021 में मोर देन 170 केसेस रिपोर्टेड है। इतने स्ट्रिक्ट लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद 2021 में मोर देन 170 केसेस रिपोर्टेड है एसिड अटैक के, और मोर देन 31,677 केसेस रिपोर्टेड है रेप के। और इसमें वायलेंस अगेंस्ट क्राइम से डॉक्टर से जो रिलेटेड मुझे दो चीजें लगी जो हमें अपने जितने भी कलीग्स हैं हमारे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिसिन को उन्हें हमें बतानी है। दैट इज सेक्शन 357 सीआरपीसी एंड दैट इज सेकंड इज सेक्शन 166 बीआईपीसी। लाइक सेक्शन 357 सीआरपीसी फॉरेंसिक वाले तो हैं वो जानते हैं, लेकिन जिन्हें जानना एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जितने भी डॉक्टर्स, जो मैं उन्हीं से कहना चाहती हूँ, जो बच्चे अगर बैठे हैं जो प्रैक्टिस करेंगे और जो भी ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं उन्हें इनके बारे में पता होना चाहिए। लाइक सेक्शन 357 सीआरपीसी सेज all hospitals, whether public or private, whether run by central government or state government, local bodies or any other person, they shall immediately provide the first aid or medical treatment free of cost to the victims of sexual offense and acid attack। और जो 166 बी है दैट इज फॉर द पनिशमेंट।
कि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वी विल बी पनिशेबल अंडर 166B IPC. So these are my references, and in the last, thank you so much for listening. After lunch, it is very difficult to and I want to dedicate my presentation to the woman Hansa Mehta, and who shaped the Universal Declaration of Human Rights. जब ये Declaration of Human Rights बन रहे थे तो सब सारे कंट्री से डेलीगेट्स गए थे और हमारे यहाँ से हंसा मेहता जी गई थी, and who has been widely credited with change for the changing the phrase. Like phrase was all men are born free and equal, and she has suggested that all human beings are born free and equal in Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights. Thank you so much. Thank you, Dr. Mosmi, for your nice and elaborative presentation. Any questions from the audience? Okay. Ma'am, excuse me, I have a question. Ma'am, you just told us about the rape, the section 166B. I just wanted to ask, rape victims are basically MNC cases. अगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो विक्टिम जहाँ पे हुआ इंसिडेंट अगर लोग वहाँ पे उसे ले जाते हैं तो उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, उन्हें एमएलसी नहीं करना है, उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देना है, पुलिस उसे लेकर के जाएगी. Just a simple question, ma'am, कि जैसे फर्स्ट एड जब प्रोवाइड करेंगे उसमें लॉट ऑफ फोरेंसिक एविडेंस कुड नॉट बी लॉस्ट इन दैट. फोटोज ले लें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी डॉक्टर. ये मतलब सबको पता होना चाहिए. लेकिन मेडिकल लीव तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही डॉक्टर करेगा ना सर. नॉट नेसेसरी. अच्छा हाँ, तो फिर जहाँ भी वो जा रहे हैं फ्री उन्हें फर्स्ट एड देना है फ्री ऑफ कॉस्ट और उन्हें एग्जाम. वो इस बेसिस पे मना नहीं कर सकते कि ये not about refusing, but rape victim has to undergo some procedures, and she has to. The case has to be there. The forensic evidence needs to be collected because of that. So the government, any doctor who is first seeing the rape victim, if he is providing the first aid, it is his responsibility to collect the samples also, and he should send the samples along with the patient. फर्स्ट एड देने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और पुलिस ले जाएगी फर्दर मेडिकल कि सर कह रहे हैं कि नहीं वो जो डॉक्टर है वो भी कर सकता है, तो फिर मैं उनकी बात मानूंगी. So the forensic evidence is also important in this case, no? हाँ, फोरेंसिक एविडेंस देखिए, जो भी डॉक्टर एमएलसी करेगा वो एग्जामिन करेगा, रिपोर्ट बनाएगा और एविडेंस को कलेक्ट करेगा फॉर फर्दर एनालिसिस. जो भी करेगा वो ये उसके रिस्पांसिबिलिटी. Just to give you brief, after passing your MBBS or post graduation or further degrees, we get registration from state government. Once you have been registered, your state liability starts. So this comes under state liability. Each and every doctor has a state liability. They cannot deny that. For that, they can get punishment from MCI, rather say now different body, or even from judiciary courts. No, private doctors, they are well authorized. They are well authorized. But what is the basic problem with private doctors? They are not maintaining records, and they scare to go for court. This is the basic problem. Otherwise, as you have asked, every doctor has a state liability, so they have to preserve all evidences, and they have to prepare a medical legal records and all these things. Besides the treatment. It is a state liability. Now, you are having two duties, towards the state and towards patient and towards society. So, towards patient, you did whatsoever in your limitations. But towards the state, you have denied to work. That is unlawful. First of all, I should congratulate you, ma'am, for such a beautiful presentation. Other than that, what Dr. Tripathi sir has said,
with due regards to the content of the presentation, I would like to highlight 3 important points. जो मैंने बोला कि जो फीस जब हम लेते हैं तो वैसा नहीं है. The moment the doctor accepts the patient, the doctor-patient relation is established even before the acceptance of fees. So that was even one step ahead. मैंने बोला ये पर्टिनेंट है, बोल दूं. दूसरा ये था कि जो मैडम ने बताया कि डॉक्टर उसमें बच गया या नहीं बचा, तो क्रिमिनल लायबिलिटी से तो वो बच गया क्योंकि उन्होंने बोला कि कल्पेबल होमिसाइड तो ये नहीं बनता. लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन ये मिसिंग था. इट इज नॉट जस्ट कि पेशेंट को हमने बताया था तो मैम ने बोला कि हमारे पास लाइन थी एक कि पेशेंट ने मना कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता. यू हैव गॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट व्हिच हैज बीन एक्रेडिटेड बाय सो मेनी अथॉरिटीज. दैट इज ऑन इन्फेंट. हमको सबको पता है इन्फॉर्म फ्यूचर क्या होता है और उसका एक फॉर्मेट होता है. तो वो डॉक्टर बुक इसलिए हुआ टॉर्ट लॉ में क्योंकि उसने उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया. वो इस स्लाइड में प्रेजेंटेशन में मिसिंग था. और तीसरा जस्ट ए हम्बल सजेशन. आई मीन मैम इज सो सीनियर टू मी, तो नथिंग लाइक दैट. वो तो इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग. यस. तो किसी भी स्लाइड में जो है ना वो लीगल साइटेशन मिसिंग था. सो दैट इज समथिंग वेरी स्टार्किंग. नहीं लास्ट में भी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं है. देखिए अब उसमें है 5वीं स्लाइड में. अच्छा है उसमें, देखें लास्ट साइड. अच्छा नहीं वो मैं सोच रहा था कि लीगल रेफरेंसर से हो तो ज्यादा बेटर रहता है. एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप कोई भी डॉक्टर को टेलीफोनिक कंसल्टेशन ना दें. उस पर भी वो दे सकते हैं. अगर इमरजेंसी है तो दे सकते हैं, इमरजेंसी में दे सकते हैं. हाँ एग्जैक्टली. यू हैव टू फॉलो द टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस. टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस हैव टू बी अडोर्ड. ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं देना है. अगर हमें जो भी देना है, जो भी हम उसको कंसल्टेशन दे रहे हैं, हमें उसकी पूरी लायबिलिटी लेनी है. अगर उसका कुछ कॉम्पिटिशन हो गया और फिर वो तो कह देगा कि मैं मुझे दिया गया उसका साइड इफेक्ट नहीं बताएगा. मुझे एक केस है मेरे पास पड़ा हुआ है. सर एक्चुअली केसेस बहुत हैं, लेकिन लायबिलिटी कितने परसेंट केसेस में तय हो रही है हम लोग को ये देखना पड़ेगा. Called telemedicine in NIMHANS. They clearly established the duties and responsibilities during your teleconsultation. If you follow all those guidelines, definitely will not have any issue. It is there, sir. They have started exclusive department, telemedicine, and they are educating it. Because most of the other this one, they are not going the physical. That was the initiation to start the teleconsultation legally. It's now legally accepted. लीगली एक्सेप्टेड. लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि अगर आप उसको बिल्कुल दे रहे हैं तो उसको पूरी चीजें बताइए. That's what it is having all the this one. When you have to refuse, when you can accept. No, teleconsultation itself is completely recorded. अच्छा एक चीज और, जैसे डॉक्टर मोहित ने कहा, जैसे पहले कहा कि जो फीस लिखी हुई है ये बता रही है कि ये ड्यूटी आपकी ड्यूटी सेटअप हो गई. तो डॉक्टर मोहित ने कहा कि एक स्टेप आगे, तो वो एक स्टेप आगे ये है. और मैं उसे डिटेल करना चाहूंगी कि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, जो वो डॉक्टर मोहित ने कहा, तो किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर पेशेंट आपके पास आता है तो ड्यूटी सेटअप हो जाती है. ठीक है. आप गाइनी की नहीं है, आप अपॉइंटी के लिए. तो हाउ यू सर मैं बताती हूँ. इसको रिकॉर्ड नहीं कीजिए जो मैं बताने जा रही हूँ. इसे बंद कर दीजिए, इसे रिकॉर्ड बंद कर दीजिए. इसे बंद कर दीजिए, इसे अलग देखिए. देखिए मैं गाइनी की नहीं हूँ, हम लोग फोरेंसिक के हैं. और जब भी कोई डेथ हो जाती है और जब एमएलसी केस लगता है तो सर हम ही लोगों के पास आता है वो. जैसे अभी लास्ट जब आदर्श सर ने फोन किया था तो उस दिन हम पैनल करके आए थे. तो उसमें हम लोगों ने जब उसको ऑटोप्सी की उसमें, तो उसका यूट्रस जो था वो फ्रॉम दिस एंड टू नेक्स्ट है, पूरा इंसिजन था. तो मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड से पूछा कि क्या ऐसी कंडीशंस में तुम लोग को इस एंड से उस एंड तक इंसिजन देना पड़ेगा, जहां तक यूट्राइन आर्टरी का एक्सपोजर हो रहा है वो कट जाएगी. तो उसने मुझे बताया कि नहीं, हमें एक्सटेंड करना होता है टी शेप की तरह. हम जे शेप करना चाहिए, लेकिन मोस्टली हम टी शेप इंसिजन लगाते हैं. तो सर मैं गाने की नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्त हैं and we discuss and discussion is the key.
Excuse me, madam. I am Dr. K.P. Singh. I am a general surgeon. And in a OPD procedure, today is the era of Me Too. And when the patient and doctor relationship in OPD, and when a patient is come to in my OPD, and a female patient. सर एक है सर प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन में ढूंढ ही रही थी पहले आपको Ma'am, today's society and the era of Me Too, and there are false charges claimed to the in our society, and also doctor is a part of society. And when a patient is come in my OPD, and female patient, and we examine per-vaginal examination, and after that it is a routine procedure, routine in OPD. एंड आई थिंक जो टैब स्मीयर वगैरह भी लिया जाता है. तो अगर इसके बाद अगर कोई महिला अगर ऐसे डॉक्टर को डिफेम करने के लिए अगर ऐसे फॉल्स चार्जेस क्लेम करे कि उन्होंने मुझे एक्सटॉर्ट किया या एक्स्ट्रा टच किया या जो कुछ भी किया इस मामले में, तो ये एक सोसाइटी में ये इसमें आप थोड़ा सा अपना. ये तो बिल्कुल डॉक्टर फंस जाएगा. जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसके हिसाब से तो बिल्कुल डॉक्टर फंस जाएगा. आपको ये क्लियर इंडिकेशन दी गई है कि किसी भी फीमेल पेशेंट को फीमेल अटेंडेंट की प्रेजेंस में ही एग्जामिन करना है. अगर उसके साथ फीमेल, आपके पास नर्स नहीं है फीमेल, तो आपका जो फीमेल अदर पेशेंट बैठा हुआ है आप उसे बुला लीजिए. अगर वो भी नहीं है तो अपने हस्बैंड के साथ आइए, या आप किसी फीमेल को बुलवाइए उसे, और उसकी किसी थर्ड जो फीमेल किसी भी, या तो उसकी फैमिली से हो, अगर फीमेल नहीं तो उसका हस्बैंड हो, या तो कोई फीमेल अटेंडेंट मस्ट है. अगर आपके पास नहीं है तो जो फीमेल पेशेंट बैठी है ओपीडी में उनको भी बुलाइए, उनके प्रेजेंस में करिए. या मैम, अगर हम अपने कॉलीग को या किसी को भी फीमेल अटेंडेंट या कोई भी अपना स्टाफ को, फीमेल स्टाफ को भी रखते हैं, लेकिन डिफेंडेंस तो हो ही रहा है ना. नहीं, अगर लेकिन तब डॉक्टर विल नॉट बी लायबल. अगर वो अकेले नहीं कर रहा है. देखिए यही कह रहे हैं, देखिए दिस इज पार्ट ऑफ अवर जॉब. हम डॉक्टर भी हैं और हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, और दिस इज द पार्ट ऑफ जॉब. हमारी पार्ट का यह जॉब बन चुका है कि हमारे ऊपर एलिगेशन लग सकते हैं, लेकिन वो प्रूव ना हो, और वो हो ही ना. अगर वो है नहीं तो वो प्रूव ना हो. इसके लिए जो चीजें हमें सिखाई जा रही हैं वो सारी चीजें हमें करनी है. जैसे सबसे 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 ज्यादा स्ट्रांग हमें अपने डॉक्यूमेंट में रहना है. कोई पेशेंट आपके पास एडमिट है, आप उसे 4 बार जाकर बीपी नाप रहे हैं, आप उसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी डॉक्यूमेंट में एंट्री नहीं कर रहे हैं कि आपने हर आधे घंटे में जाके उसके वाइटल्स चेक किए. तो चाहे आप कितनी भी गुड फेथ में कर रहे हैं उस पेशेंट के लिए, लेकिन कुछ कंसिडर नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे कोर्ट में कि आपने 4 बार फॉलो किया था उसके मरने से पहले, और वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मरी है, ना कि आपके नेग्लिजेंस एटीट्यूड की वजह से. तो हर चीज आपको डॉक्यूमेंटेशन बचाएगा, और जो आपको गाइडलाइंस दी गई है वो बचाएंगी. जैसे ये क्लियर गाइडलाइन है, किसी भी मेल डॉक्टर को किसी भी फीमेल को एग्जामिन नहीं करना है अकेले. बताओ संगीता, तुम क्या कहना चाहती हो? ये कहना चाहती हूँ, जब आप एग्जामिन करेंगे तो आप उसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे ना. यस, तो आप उसे इन्फॉर्म करें. अगर हम पीडी कर रहे हैं तो एंड दैट टू फॉर जनरल एग्जामिनेशन, यू विल बी टेकिंग एन इन्फॉर्म कंसेंट, जिसमें आप उसे पूरा प्रोसीजर बताएंगे और आप उसके आउटकम्स भी बताएंगे. अगर आप गाइडलाइन इज गोइंग टू चार्ज यू, and you will also mention that there was no female available to do the examination, and in such condition you had to do the examination in presence of the. और किसी मेडिसिन के डॉक्टर को क्यों करना है, पर अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप क्या ऑफर में गायनी का डिपार्टमेंट, आप उन्हें उसे रेफर करिए. रेफरेंस भी तो एक चीज होती है. 93 में मैंने रेप के विक्टिम और एक्यूज दोनों का एग्जामिन किया था. तो वो लड़की लगभग 13 साल की थी और लड़का 14 साल का था. लेकिन अब जब पॉक्सो एक्ट बन गया है तो कोई अगर लड़की 12 साल से कम की तो पॉक्सो एक्ट में वही आएगी, तो उसका एग्जामिनेशन कोई पुरुष चिकित्सक नहीं कर सकता है. वो मेरी मजबूरी थी. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था, गायनपुर तब रहती नहीं थी, जैसे आज की हालत है वैसे उस समय था. तो आई हैव एग्जामिन्ड बोथ ऑफ देम. वन वाज द एक्यूज वाज 14 ईयर ओल्ड एंड विक्टिम वाज द 13 ईयर ओल्ड गर्ल. हालांकि बाद में कुछ हुआ नहीं. सर इसमें ये भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर ऐसे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो हम अपने सीनियर से उसको हम ऑन पेपर कर ले कि भाई या तो हमें कोई फीमेल डॉक्टर दीजिए, नहीं दीजिए तो हमें स्टाफ नर्स साथ में थी. देयर वाज सम प्रेजेंस ऑफ स्टाफ नर्स एंड प्रेजेंस ऑफ हर मदर. आई हैव एग्जामिन्ड. मुझे आज भी याद है 92 का है केस है, और फिर उसमें मुझे कोर्ट नहीं जाना पड़ा.
तो दोनों को बच्चे को भेज दिया गया था, जो बच्चों की जेल होती खुलनाबाद में, यहीं पे है इलाहाबाद में। अरे ऐसे ही करते थे, संगीता को तो हवाई जहाज में बैठा के पता नहीं किस खेत में पोस्टमार्टम करा डाला इन लोगों ने, तो क्या करें। I'd like to comment on the previous issue of that negligence when somebody has commented that being a forensic medicine, you are not expert in that particular branch. So I think now the world has changed a lot. It is all becoming multidisciplinary. And indeed, we have got a different kind of system. Every second day, we are facing the death due to medical negligence cases. Every second day, we are conducting the autopsies. So in that, what we have did, along with the forensic medicine experts, the experts from the concerned specialty, if it is a gynae case, the gynae person will be the part of that board, medical board, right? If it is surgery, orthopedics, depending upon the specialty involved, we have got a multidisciplinary board, trying to have even a multi-institutional board, because in Delhi we have got the liberty to involve the other institutes, and that is not feasible at you can say the small places and all. But in Delhi, we are doing that. So I think if you have got that concept of multidisciplinary, nobody is, you can say, supreme, right? So being a forensic expert, it doesn't mean that we are boss of everything. और हम ट्रीटमेंट भी नहीं जा रहे गायने का, हम तो बस जो ऑटोप्सी का फाइंडिंग होती है उन्हें Yeah, when it comes to legal interpretation and all, of course we are the boss, because we have got all that information. So for technicalities, as she said, but yes, मैंने उससे consult किया. तो अगर यही सिचुएशन मेरे पास होती तो मैं कंसल्ट करने के बजाय उसको मैं उस पार्ट का बोर्ड का मेंबर बनाता और उसको सिग्नेटरी भी बनाता, सो दैट कि बाद में टी शेप और डब्ल्यू शेप जो भी है. ओके, वी आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो एंड ऑफ द डिस्कशन. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you. And thank you, Mostly, for fighting well and well. Well. I am a fighter. Yeah, yeah. You represent here as a women empowerment with me. मैम आपके लिए दो शब्द बोलना चाहूंगा. इवन दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द वुमेन प्रेजेंट हियर. वाकिफ कहाँ जमाना था आपकी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से. I would like to request Vasla ma'am to please come on the stage. Chairperson, please.
चेंज करें, चेंज करेंगे, कौन लग गया वॉइस में आ रहा है। तो इसी ब्रांड में इसी को लगा देंगे, एक्सटर्नल है ना, तो इसी का भी Chairperson for the next session, Dr. Vasla Mishra ma'am, Professor in Head, Department of Pathology, Amla MC. Dr. S.K. Tripathi sir, Professor, Forensic Medicine, IMS BHU. Dr. Surya, Professor in Head, Department of Biochemistry, Amla MC. Please take your seat. Moving on to our next session, the topic of the day is forensic evidence, right way to collect the evidences. And to detail us on this front, I would like to call upon the stage Dr. Love Kesarwani sir to detail us on this topic. Dr. Love Kesarwani sir is currently working as Assistant Professor in the Department of Forensic Science, San Egan Norton University of Agriculture, Technology and Science, Prayagraj. Dr. Love Kesarwani sir has vast experience in field of forensic science. He has published more than 60 papers in various national and international journals. He has organized 20 seminars, conferences and workshops. He has guided 6 PhD students and 100 MSc students. A prominent content writer of EPG Pathshala program for MHRD UGC India, guest faculty of various institutions. Dr. Kesarwani sir is continuously involved in teaching, research and providing training to various police and private agencies in various fields of forensic science. Welcome sir. Dr. Sahil, are you there? Science. तो काम है क्या करना है? अच्छा तो मिल गया करवाते हैं करवाते अभी लगे हैं वसूली नहीं कर पा रहे हैं। आज करवाते हैं हम भी तो लगे मशीन में आगे करवाते हैं। Sorry, as ma'am was using her own laptop and this laptop was closed and the pin has to be punched in again. It will take some time. तो खोल लो हम निकाल कोई है नहीं है ना ठीक है निकाल लो
हाँ बन जाता है ऐसे बना सही वो है सचिन और तो अभी तो आज फाइनल हो गया बच्चा क्या हेलो, नमस्कार, मैं डॉक्टर लवकेश रवानी। भारत के स्वर्णिम युग काल में आप सबका सहस्र स्वागत है। ये बदलाव का समय है, हमारा राज्य बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है, इनफैक्ट मौसम भी बदल रहा है और बदलाव हमेशा सुखद होता है। मैं आश्चर्यचकित हूँ जो प्रीवियस प्रेजेंटेशन हैं उनको देख करके कि जब मैं पढ़ाई करता था या जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी की जो स्टेज थी और इस समय की, इसमें जबरदस्त बदलाव आया नॉलेज में, सोच में और कार्य करने की पद्धति में। मेरा शत नमन है प्रोफेसर वत्सला मैडम जी को, प्रोफेसर एंड हेड पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, डॉक्टर एस के त्रिपाठी, प्रोफेसर एस के त्रिपाठी, प्रोफेसर BHU, प्रोफेसर आदेश कुमार और हम लोग जो मैं बहुत बहुत से धन्यवाद करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना कौर जी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ अपनी व्यूज रिगार्डिंग इस जो टॉपिक है आज का, जो नेशनल सर्वे का जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग कुछ फिजिक्स साइंस से रिलेटेड आपके सामने कुछ विचार रख सकूं मैं। तो प्लीज देखिए नेक्स्ट स्लाइड कहां से, या हाँ दिस इज। तो हम लोग क्योंकि फोरेंसिक साइंस, मेडिकल साइंस, पुलिस, जुडिशरी ये सब आपस में कोरिलेटेड हैं, सब वर्क करते हैं एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में। जहां मेडिकल साइंसेज आती है, जहां पुलिस आती है, जहां जुडिशरी आती है, वहां फोरेंसिक साइंस भी आता है। क्या सही है और क्या गलत है, अल्टीमेटली ये फोरेंसिक पर्सनल के पास आता है उसको डिसाइड करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। जो एविडेंसेस या साक्ष्य जो दिए गए हैं उसकी बेसिस पे फोरेंसिक एक्सपर्ट डिसाइड करता है व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज रॉन्ग। अभी जो मेडिकल नेग्लिजेंस की बात हो रही थी या पेशेंट्स की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं या जो आज का थीम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड, जो इस तरह की जो भी चार्जेस आते हैं, तो इन चार्जेस को रिफाइंड करके या इन चार्जेस को एग्जामिन करके क्या सच है और क्या सच नहीं है वो फोरेंसिक साइंस जो है प्रेजेंट करता है या देता है या रिपोर्ट्स बनाता है। और जो फोरेंसिक साइंस की जो रिपोर्ट्स हैं वो कोर्ट एडमिसिबल होती हैं और जो फोरेंसिक साइंटिस्ट ने एक बार लिख के दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि अगर कहीं ब्लड मिलता है और फोरेंसिक एक्सपर्ट उसको लिख के दे देता है कि नहीं ये ह्यूमन ब्लड है और इस पर्टिकुलर व्यक्ति का ब्लड है, तो कोर्ट भी उसको डिनाई नहीं करती, कोर्ट ही भी उसको मानती है और पूरा 100% फुल प्रूफ तरीके से मानती है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ये जानती है कि अगर कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट किसी लाल पदार्थ को या सब्सटेंस को ब्लड कह रहा है तो वो 100% श्योर है। 100% श्योर है कैसे? क्योंकि वो जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है, जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में टेस्ट करता है, वो रिपीटेड टेस्ट करता है, 8 से 10 बार उसके टेस्ट करता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, केमिकल एग्जामिनेशन है, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है और DNA एग्जामिनेशन है। तो इतने सारे एग्जामिनेशन करके फिर फोरेंसिक एक्सपर्ट बोलता है कि ना दिस इज अ ब्लड। अगर फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बोल दिया ब्लड है तो इट मीन्स ब्लड। तो ये एक थोड़ा सा जो सच और झूठ का था उसमें ये हम लोगों का रोल काफी जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है चीजों को क्लेरिफाई करने का।
तो हम लोग आप लर्नड ऑडियंस हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा एक इंसाइट दे दूं कि फोरेंसिक साइंस जैसे आप देख रहे हैं कि साइंस इन द सर्विस ऑफ लॉ, जो भी बेसिक साइंसेस हैं, आप चाहे बायोलॉजी ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, जोलॉजी ले लीजिए, बॉटनी ले लीजिए, जो भी बेसिक साइंसेस हैं, उन बेसिक साइंसेस में से जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है, जैसे मैं आपको एक फिजिक्स का उदाहरण देता हूं, जैसे डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं ना कि डेंसिटी क्या, किसी चीज की कितनी डेंसिटी है ना, पानी में डाल दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, न्यूटन थर्ड लॉ है या न्यूटन्स लॉ है। तो इन सब ये सारी जो स्पेसिफिक जो प्रिंसिपल्स थे या जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, जो टेक्निक्स थी, इनको एक जगह क्लब कर दिया गया अलॉन्ग विथ कुछ फोरेंसिक साइंस की बेसिक जो स्ट्रीम्स हैं, जैसे फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन है, आपका डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन है, आपका थोड़ा बहुत साइबर, तो इनको क्लब करके एक स्पेसिफिक साइंस बना दी गई जिसको हम फोरेंसिक साइंस बोलते हैं, जो क्रिमिनल्स को नेल डाउन करने के लिए बनाई गई, स्पेशली क्रिमिनल्स को उनके रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। ये जैसे मैंने आपको पहले कहा कि फोरेंसिक साइंस कॉन्फ्लुएंस में वर्क करती है, इन कोऑर्डिनेट्स में वर्क करती है, किसके, मेडिकल साइंसेस के, पुलिस सिस्टम के, जुडिशरी के, हम आपस में कहीं कहीं रिलेटेड है। आप जो एविडेंसेस हमको पोस्टमार्टम या जब फोरेंसिक मेडिसिन का कोई बंदा या आपके कोई डॉक्टर्स जो है पोस्टमार्टम करके जो विसरल ऑर्गन्स या जो एविडेंसेस हमारे पास भेजते हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद जो पुलिस क्वेरीज डालती है या डॉक्टर्स क्वेरीज डालते हैं, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर विसरल ऑर्गन या एविडेंस जो आप भेजते हैं, उस पर उन क्वेरीज को सेटिस्फाई करके उनके हम आंसर देते हैं। आंसर्स वो भी फुल प्रूफ आंसर्स, 100% करेक्ट आंसर्स देते हैं। अब उन पर्टिकुलर आंसर्स के बेसिस पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो जुडिशरी है, लॉयर्स हैं, केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, केसेस को फ्रेम आउट करते हैं, केसेस को प्रोसीड करते हैं इन फ्रंट ऑफ द जज। और जज क्या करता है, जो डिफरेंट आर्गुमेंट्स है, साइंटिफिक आर्गुमेंट्स है, उनके बेसिस पे वो सेंटेंस करता है या एक्विटल करता है। फोरेंसिक साइंस अगर हम देखें तो इट इज अ साइंस विच डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस which are collected from the scene of crime, and sent to forensic science laboratory for investigation. मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हल्का सा हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा फोरेंसिक साइंस के बताना चाहूंगा। जो फोरेंसिक वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फोरेंसिस, या फोरेंसिस बोलते हैं उसका मतलब फोरम मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, साइंटिफिक पीपल हु आर डीलिंग विद द इन्वेस्टिगेशंस या हु आर डीलिंग विद द क्रिमिनल प्रोसीजर्स और व्हाटएवर इज। तो इसको पॉपुलराइज करने का जो श्रेय जाता है वो सर आर्थर कॉनडाइल को जाता है। आप सबने नॉवेल पढ़ी होगी शर्लॉक होम्स की, तो वो एक फिक्शन कैरेक्टर था जिसको जनरेट किया था सर आर्थर कॉनडाइल ने। उन्होंने फर्स्ट टाइम जो क्या किया, इस जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको किताबों में ला के लोग पॉपुलराइज किया। फिर वो धीरे धीरे साइंटिफिक फोरेंसिक साइंस के फील्ड में साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होते गए और उसको जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसको अडॉप्ट करते गए, फिर हमारी कंट्रीज में अडॉप्ट धीरे धीरे प्रिंसिपल्स और सारी चीजें सेटअप होने लगी। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि फोरेंसिक साइंस के फील्ड में या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के फील्ड में या फोरेंसिक मेडिसिन या टॉक्सिकोलॉजी के फील्ड में एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो एविडेंस है। ठीक है, तो एविडेंस सारा कुछ जो एविडेंस एनालिसिस है या जो एविडेंस रिलेटेड चीजें वो सब फोरेंसिक साइंस डील करता है। और फोरेंसिक साइंस को अगर हम देखें तो ये जैसा आप देख रहे हैं ऑल आर इंटरलिंक्ड। क्राइम फोरेंसिक साइंस से इंटरलिंक्ड है, क्राइम सीन फोरेंसिक साइंस से इंटरलिंक्ड है, एविडेंसेस हैं, क्रिमिनल मोटिव्स हैं, क्रिमिनल है विक्टिम्स, ये सब सारे क्या है आपस में इंटरलिंक्ड है और सबको इंटरलिंक करके जो साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करेगा। ये थोड़ा सा मैं एक एस्पेक्ट देना चाहूंगी जो कंट्री में एक्विटल, मैं पिछले 2000 की बात से कर रहा हूं, जो थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं तो नहीं कहता, लेकिन जो एक्विटल कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है
एक्यूटल रेट बहुत ज्यादा है। आईपीसी में अगर कोई पकड़ा जाता है, ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंस विच कोरिलेट criminal with the crime scene, victim with the crime scene with the victim, crime scene with the culprit and crime scene with the evidences and with the victims। तो ये एक कोरिलेशन जो डेवलप होता है, जो ये सिद्ध करता है, जो बताता है कि क्रिमिनल उस पर्टिकुलर समय में वहां पे था और दैट पर्टिकुलर व्यक्ति या जो बंदा है वो रिस्पॉन्सिबल है उस क्राइम को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक्यूटल रेट बहुत ज्यादा है, कोशिश हमारी सरकारें कर रही है, अभी से बहुत बेहतर परिणाम आ रहे हैं और हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले आने वाले में 10 सालों 20 सालों में ऐसे फुल प्रूफ जो है सिस्टम्स डेवलप हो गए कि एक्यूटल रेट जो क्रिमिनल्स का है वो कम हो जाएगा। और जब एक्यूटल रेट कम होगा तभी क्रिमिनल्स में भय व्याप्त होगा, वो क्राइम करने से बचेंगे। अभी क्या है, उनको ये लगता है कि हम क्राइम करके जो है अच्छे लॉयर्स को हायर करके हम बच जाएंगे, और ये शायद आप देख भी रहेंगे, ये फैक्ट भी है। वेस्टर्न कंट्रीज में और हमारे जो इंडिया है यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है कि भाई वो किसी पे उनको शक होता है तो वो पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते, उसको पता नहीं चलता उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, उसके खिलाफ वो क्या करते हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू करते हैं। व्हेन दे हैव द प्रॉपर एविडेंसेस वो उस पर अप्रीहेंड करते हैं, उस पर केस चला दे, दे बुक्ड। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ हम पहले एफआईआर लॉन्च करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, फिर क्या वो जेल चला गया, बेल पे आ गया, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही, अरे वो जेल से बाहर है तो वो एविडेंसेस को टेम्पर करता है, जिससे चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती हैं। एविडेंसेस जो बेसिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन तीनों को कनेक्ट करने में, क्रिमिनल को, विक्टिम को और क्राइम सीन को। एविडेंसेस पे ज्यादा इंफोसिस इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि जब हम मेडिकल साइंसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो मेडिकल साइंसेस की कोई भी ब्रांच हो, कार्डियोलॉजी हो, ऑप्थेल्मोलॉजी हो, गैस्ट्रो हो, फोरेंसिक मेडिसिन हो, हर जगह अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज हुई हैं, कुछ निग्लिजेंस हुआ है, तो देयर इज द क्रिएशन ऑफ एविडेंस। एडविन लुकार्ड एक बहुत वेल नोन फोरेंसिक साइंटिस्ट है, उनका ये कहना है कि whenever there is a contact between two objects, whenever there is a contact between two objects, there is an exchange of material, knowingly और unknowingly। जब भी कोई दो चीजों का समावेश होगा, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस, और वही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस जो होता है वही एविडेंस क्रिएट करता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या हम फोरेंसिक प्रैक्टिशनर्स हैं, तो हमेशा हमें इन लोगों को इस बातों को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई एक्ट या कुछ भी हम कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो हमेशा बिकॉज ऑफ दिस लॉ है ना, लुकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल, एविडेंस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें जैसे अभी पहले के जो लेक्चर्स हुए हैं और जो स्पीकर्स ने बहुत सारी चीजें बताई कि मेडिकल नेग्लिजेंस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इस तरह मैं आपको फोरेंसिक के एस्पेक्ट में बता रहा हूं कि जब भी आप कुछ भी टच करते हैं, इवन बता रहा हूं मैं, आप अपनी पेन आप पकड़ते हैं, आप अपना चश्मा पकड़ते हैं, कुछ भी पकड़ते हैं, तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। फिंगरप्रिंट्स आपके चश्मे पे, आपके पेन पे, आपके पेपर्स पे, आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, स्टेथोस्कोप पे, हर जगह आते हैं। तो हमें सावधान, हमें सतर्क और सही तरीके से काम करना है, क्योंकि पुलिस, जुडिशरी, फोरेंसिक साइंस और मेडिकल साइंस, ये सब सारी चीजें वन और अदर वे इन्वॉल्व है और आईज की वो देख रही है, वो है, ठीक है। तो हम लोगों को इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो एविडेंसेस क्रिएट होते हैं, जो क्राइम सीन पे मिलते हैं, या जब आप पोस्टमार्टम करते हैं, जो विसरल ऑर्गन्स वगैरह भेजते हैं फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में एनालिसिस के लिए, तो जहां इनका एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो फिजिकल, साइंटिफिक, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशन होता है, उस प्लेस को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बोलते हैं। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेंट्रल स्टेट में है, 7-8 हैं करीब, और स्टेट वाइज है जिनको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज बोलते हैं, रीजनल है, और कैपिटल जो स्टेट की कैपिटल से उनमें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं।
मोबाइल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में ये कुछ डेटा है, आप देखेंगे तो। और अभी दे कीप ऑन ग्रोइंग, अभी ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन पे फंड एलोकेट कर रही है और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन पे ध्यान दे रही है ताकि चीजों को बेहतर किया जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सके ताकि क्रिमिनल अप्रिहेंड हो तो उसको उसकी सजा मिले इफ ही इज कल्प्रिट। ये फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज के कुछ डिविजन्स हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, कभी न कभी आप इसके अटेंडेड होंगे, कभी न कभी आपको जाने का मौका मिलेगा या कभी न कभी आपका वास्ता जरूर रहेगा। तो थोड़ा सा एक ये है, मैंने आपको बताया कि बेसिक साइंसेज से रिलेटेड जो डिवीजन है वो यहाँ पे होते हैं। जैसे आप देखिए केमिस्ट्री डिवीजन है ना, जहाँ पे आपका नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह है, अल्कोहल है ना। लिकर पॉइजनिंग के केसेस होते हैं ना, लिकर पॉइजनिंग आपने देखेंगे, शराब पी के, जहरीली शराब पी के मर गया, आपने विसरल ऑर्गन भेजा उसको, अब जानकारी नहीं है पोस्टमार्टम के समय क्या हुआ, विसरल ऑर्गन को अल्कोहल भी ही प्रिजर्व करके भेज दिया। अब उसकी बॉडी में ऑलरेडी इथाइल अल्कोहल है और इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग होंगे तो काफी रेंडर करता है। तो ये सब चीजें काफी हमको ध्यान रखने की बातें हैं। अब इस तरह टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन में है, आपके यहाँ भी फोरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में बहुत सारे एविडेंसेस आते हैं और आपके विसरल ऑर्गन्स आप भेजते हैं टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, तो उसमें भी काफी प्रिकॉशंस की जरूरतें हैं। ये आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिवीजन है, नार्को एनालिसिस है, पॉलीग्राफ एनालिसिस है, साइबर फोरेंसिक है। ये सब सारे डिफरेंट डिवीजन है जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में होते हैं और उनका एक अपना स्पेसिफिक अलग अलग काम होता है क्योंकि डिफरेंट तरीके के एविडेंसेस मिलते हैं क्राइम सीन पे या विक्टिम के पास या क्रिमिनल के पास या उसके घर में, उसकी गाड़ी में, उसके पोजीशन में, उनके जूतों में, उनके कपड़ों में, उनके हेयर्स में, बहुत सारी चीजें। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा पुलिस का पार्ट है, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता है। इवन जरूरत ज्यादा हाई प्रोफाइल केस है तो डॉक्टर्स को भी बुला लिया जाता है वहां पे ताकि ट्रीटमेंट वगैरह कुछ ऐसा हो तो दिया जा सके। तो प्रॉपर उसका क्राइम सीन प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको क्राइम सीन प्रोसेसिंग स्टेप्स है वो फॉलो करते हैं, तो वो आपका जाता है कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। ये इसके कुछ प्रॉपर स्टेप्स हैं कि जब वहां पे पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचता है तो कुछ उनके लोकेशन आइडेंटिफिकेशन है, प्रोटेक्शन है, फोटोग्राफ करे जाते हैं, फिर इंजर्ड पर्सन है, अगर डेथ है तो कोई बात नहीं, इंजर्ड पर्सन है तो उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए फिर उसकी रिकॉर्डिंग, सीन रिकॉर्डिंग होती है, फिर स्केचिंग्स करे जाते हैं, फिर सर्च मेथड्स, डिफरेंट सर्च मेथड्स होते हैं उसको अप्लाई किया जाता है, फिर कलेक्शन प्रोसीजर्स डिफरेंट हैं, फिर डिफरेंट कलेक्शन प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू एविडेंस है, फिर उनकी पैकिंग है, सॉरी प्रिजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन ताकि वो खराब ना हो सके और सबके डिफरेंट मेथड्स हैं, फिर पैकिंग है, फिर उनकी डिस्पैच है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ताकि वहां पे उसकी एनालिसिस हो सके, फिर वो चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होती है ना ताकि ब्रीच ना हो, बीच में कोई एविडेंसेस को चेंज न कर दे, टेम्पर न कर दे या डिस्ट्रॉय न कर दे। अब हम अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे फोरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी के एस्पेक्ट में और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट में, क्योंकि आप लोग डॉक्टर फैकल्टी हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम चाहे वो पीएचसी हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कभी न कभी स्टेजेस में आपको पोस्टमार्टम करने पड़ते हैं। तो पोस्टमार्टम के एस्पेक्ट से कौन से एविडेंसेस ऐसे होने चाहिए, उनका कलेक्शन का तरीका क्या है, उनका प्रिजर्वेशन का तरीका क्या है, पैकिंग का क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, वो सब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। ये कॉमन सा है, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब पोस्टमार्टम टेबल पे कोई डेड बॉडी आती है, कोई डिसीज आता है तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन विदाउट रिमूविंग द क्लॉथ पहला स्टेप होता है, सेकंड होता है एग्जामिनेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी आफ्टर क्लॉथ और इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी के एग्जामिनेशन होते हैं।
तो बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशंस प्रिकॉशन ये रखना है कि एक प्रॉपर फोटोग्राफ उस जो पर्टिकुलर बॉडी जो स्टेज पे है, जो ऑपरेशन टेबल पे है या जो एग्जामिनेशन टेबल पे है, वहां पे एक प्रॉपर फोटोग्राफ जरूर होने चाहिए, 2 4 6 स्नैप्स होने चाहिए विद प्रॉपर स्केल। एक मीटर स्केल आता है, ह्यूमन बॉडी को रिकवर करता है, ये देखेंगे आप प्रॉपर स्केल रख के, और क्या कहते हैं एविडेंस नंबर या कुछ भी इस तरीके का जो आइडेंटिफाई करके करे उस बॉडी को, तो उसके फोटोग्राफ्स वगैरह करें आप। पहले प्रॉपर तरीके से कराएं, तो एरिया से हेड की तरफ से, फिर एक थोड़ा सा एरियल ले ले, फिर चारों कॉर्नर से ले ले, लेफ्ट राइट हर डायरेक्शन से 6-7 फोटोज ले लें, ताकि प्रॉपर कंडीशन आपको रिकॉर्ड हो जाए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपने पोस्टमार्टम शुरू किया तो बॉडी की ये कंडीशन थी। क्योंकि लॉयर्स जो डिफेंस लॉयर हैं, जो प्रोसिक्यूशन लॉयर्स हैं, स्पेशली मैं डिफेंस लॉयर की बात कर रहा हूं सर, अभी फोरेंसिक इंस्टीट्यूशंस इंडिया में बहुत ज्यादा हो गए हैं। बहुत सारा बच्चे जो है 10,000 20,000 30,000 इस तरह के बच्चे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी करके निकल रहे हैं। दे आर प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर, या ये कह लीजिए एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, और वो ग्रुप बना के लॉयर्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं। वो प्रोसिक्यूशन की डिफरेंट जो कमियां हैं सिर्फ उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उजागर करने के लिए बैठे हैं, ताकि अपना जो उनका विक्टिम, जो उनका क्लाइंट है, उसको वो बरी करा सके। तो इसलिए मैंने कहा ना कि अभी हमें बहुत कॉन्शियस होना है, बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि सब जगह हमें वॉच किया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत साइंटिफिकली तरीके से। तो हमको हर चीज के बारे में नॉलेज रखनी है और उनके प्रिकॉशंस को लेके चलना है। तो ये एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर है कि आप फोटोग्राफ अच्छे से कराएं, उसकी एविडेंस नंबर हो या जो डेड बॉडी का जो भी एफआईआर नंबर वगैरह है, स्केल्स वगैरह प्रोवाइड करके। फिर हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बिफोर रिमूविंग द क्लॉथ हम शुरू करेंगे। ये है एग्जामिन करिए पूरी बॉडी का। वैसे टो से जनरली हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मैं ये बताऊंगा कि आप टो से शुरू करिए, वो थोड़ा सा बेटर कंडीशन रहता है। अब जैसे टो से मैंने शुरू किया बॉडी के एग्जामिनेशन का, अगर वो बेयर फुटेड है तो भी ठीक है, आप देख लीजिए कि उसके पैरों में कुछ लगा नहीं है, जो भी कोई भी ऐसा कोई कागज है या कोई मिट्टी है या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, धागा है, इस तरह की चीजें। और अगर फुटेड है तो फुटेड में काफी एविडेंसेस आपको उसके फुट से रिलेटेड मिल जाएंगे, जैसे ग्लास है, ग्लास पीसेस जो कहते हैं, सॉइल है, फॉरेन मटेरियल है, वेड्स हैं, फिर आपका क्या कहते हैं ये नेल्स है, प्लांट है, सिगरेट बर्ड है, वायर्स हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हम इसको अभी थोड़ा सा आगे भी देखेंगे। हमें ध्यान ये रखना है कि जब ये सब सारी चीजें हमें दिखे तो इसको हमें प्रॉपरली कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं जो लिंक करेंगे एक पर्टिकुलर क्रिमिनल को या उसकी वैक्यूम को उस पर्टिकुलर क्राइम सीन से और उस पर्टिकुलर विक्टिम से, जो ये साबित कर सके कि वो पर्टिकुलर क्राइम उस पर्टिकुलर क्रिमिनल ने किया है। चिप्स पेन चिप्स वगैरह मिलते हैं, तो आप नॉर्मल फॉर्सेप से कोशिश करेंगे, प्लास्टिक फॉर्सेप से लेके उसको जो है एक प्लास्टिक बॉक्स में उसको रख सकते हैं। क्लोथिंग्स वगैरह का है, और क्या कहते हैं सॉरी फुटवेयर्स में और भी सारे हैं, वो हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलेंगे, इसको करेंगे। फूड ग्रेन्स वगैरह हैं, फूड ग्रेन्स को आप फॉर्सेप से अलग कर सकते हैं। ग्लास पीसेस हैं, ग्लास पीसेस को आप अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। वो है क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन्स आपको दिख रहे हैं, वैसे अगर लेंस वगैरह देखेंगे तो उससे मिल सकता है। फाइबर्स हैं, हेयर्स हैं, टूथपिक है, सिगरेट है, फाइबर्स हैं। तो जितनी भी चीजें आपको मिलती हैं उसके शू से रिलेटेड, वो आप उसको अलग करके अलग अलग कंटेनर्स में पैक करें। कोशिश ये करें कि एक फॉर्सेप जिस चीज को कलेक्ट करने के लिए आपने यूज किया है उसको दोबारा नहीं यूज करें, क्योंकि कंटेमिनेशन का उसमें थोड़ा सा इश्यू रहता है। इसके बाद आप अगर ऊपर बढ़े तो विक्टिम के क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ से बहुत सारी चीजें मिलने के चांसेस रहते हैं, और हम इनको एक 1 बाय 1 देखेंगे। हेयर की बात करते हैं, मान लीजिए कोई कैरल हुआ है या कोई हाथापाई इस तरह की चीजें कुछ हुई है,
विक्टिम को शॉट करने से पहले, विक्टिम को स्ट्रैंगुलेट करने से पहले, विक्टिम को स्टैप करने से पहले, ठीक है। तो उनके क्लॉथ्स वगैरह पे आपको ये हेयर वगैरह मिल जाएगा, तो फॉर्सेप भी आप बेटर है इस्तेमाल करें। वो देख लें कि हेयर अगर ड्राई है तब तो सही है, अगर वेट है तो आप उसको ड्राई करना पड़ेगा, नॉर्मल एयर में ड्राई करें और उसको पेपर बैग में पैक करें, प्लास्टिक बैग में मत पैक करिएगा, उसको पेपर बैग में पैक करिएगा और फिर उसको आप कपड़े के बैग में या प्लास्टिक बैग में इस्तेमाल करें, ताकि जो उसमें बैक्टीरियल एक्शन है उसको रोका जा सके। ये आपका फाइबर भी उसी तरीके से, फाइबर से कपड़े के फाइबर्स होते हैं, है ना, जो रेशे हैं इसके, जो कपड़े जो आपने कपड़े पहन रखे हैं उसके रेशे होते हैं। ये थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आपको उसके जो क्लॉथ्स हैं विक्टिम के, जो डिसीज्ड के क्लॉथ है उस पर देखने मिलेंगे। इस तरह से आपको अगर मिलता है तो फिर आपको फॉर्सेप का इस्तेमाल करके और पेपर बैग में उसको रैप करना है। इस तरह मान लीजिए डेड बॉडी कई दिन बाद मिलेगा तो मैगट्स और फ्लाइज वगैरह होते हैं, तो मैगट्स और फ्लाइज वगैरह आपको मिलते हैं, तो उनकी कॉलोनीज को स्पेशली दो जो वायर्स हैं उसमें 40-50 कॉलोनीज को फॉर्सेप से कलेक्ट करके उसको पैक करके आपको भेजना है। आपका जीएसआर ये एक थोड़ा सा अलग सा एस्पेक्ट है। जीएसआर आपको गन शॉट वुंड्स के केस में मिलेगा, जब कोई फायर आर्म इस्तेमाल होता है, कहीं गोली वगैरह लगती है, तो उसका जीएसआर जो है जब एंट्री विंड होता है, एंट्री विंड के आसपास जो भी चारों विंड जो कपड़े पे प्रेजेंट होगा वो गन शॉट रिजल्ट, तो उस कपड़े के पर्टिकुलर एरिया को फोटोग्राफ करके उस कपड़े को आप चाहें तो स्कैल्पेल से उसको वो करके ड्राई कंडीशन में उसको पेपर बैग में पैक करके देन फाइनली उसको आप पैक कर सकते हैं। हाथों में इनकेस आपको लगता है कि इसके हाथों में प्रेजेंट हो सकता है जीएसआर, तो कॉटन सोप जो अल्कोहल होता है, नॉर्मल कॉटन सोप लेके उसको अल्कोहल से रब करके और उसको सुखा के आप जो है पेपर बैग में उसको प्रिजर्व करके उसको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज सकते हैं। देन बाइट मार्क्स है, आपको कपड़े पे बाइट मार्क्स मिल रहे हैं, उसके शरीर पे बाइट मार्क्स मिल रहे हैं, तो फोटोग्राफी इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप फोटोग्राफी करके जो है एक स्केल रख के उस पर और एक एविडेंस नंबर रख के उसकी अच्छी से फोटोग्राफी कर ले। नहीं अगर कोई आर्टिस्टिक आपके पास है तो उसके स्केचेस भी बना सकते हैं, तो वो एक मेथड होता है बाइट मार्क के कलेक्शंस का। कपड़ों पे मान लीजिए अगर बाइट मार्क के निशान है तो आप उसको कट करके भी रख सकते हैं, वो थोड़ा सा बेटर ऑप्शन हो जाएगा फोटोग्राफ करने के बाद। और आप जो है प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन करते हुए हेड एरियाज पे आए, हेड एरियाज पे आपको थोड़े से हेयर्स वगैरह रखने पड़ेंगे, वो डीएनए के लिए भी काम आता है, और हो सकता है कि उस हेयर में जो कल्प्रिट है उसका भी हेयर आपको मिल जाए, या हेयर में आपको ब्लड मिल जाए, या हेयर में आपको सलाइवा मिल जाए, या हेयर में कोई ऐसा लिक्विड मिल जाए, या हेयर में कोई ऐसा पेंट मिल जाए जो उस पर्टिकुलर एरिया को कोरिलेट कर सके। तो आपको बहुत केयरफुली उसका हेड पर्टिकुलर एरिया जो एग्जामिन करना पड़ेगा। एग्जामिन करने के बाद जो है जो भी हेयर्स वगैरह आपको लूज हेयर्स वगैरह मिलते हैं उसको पेपर बैग में पैक करके भेजना है। फिर ये जब आप इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन विदाउट क्लॉट्स करते हैं तो वुंड है, इंजरीज है, और क्या कहते हैं आपका दूसरे जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। बीइंग अ डॉक्टर और फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर्स हो तो आप उसको बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा जो इंटरनल ऑर्गन्स आप निकालते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स टॉक्सिकोलॉजी के केस में या इंजरीज के केस में, सस्पिशियस डेथ के केस में, तो उन जो टॉक्सिकोलॉजिकल जो ऑर्गन्स होते हैं, किडनी है, लीवर है, स्प्लीन है, ब्रेन है, ठीक है, तो उनको एक प्रॉपर जो आपको गाइडलाइन दी गई है कि इतने ग्राम्स जो ऑर्गन है वो पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उसको आपको इतने ग्राम्स लेने हैं। उसको एक वाइड माउथ बॉटल्स होते हैं आजकल बहुत अच्छे उसके ब्रोसेस के आ गए, पहले तो वैसे जार्स आते थे, बेकार से आते थे जो ग्लास के होते थे, और अक्सर वहां फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जाने में तोड़ भी जाते थे, ठीक है ना, तो वो जार्स का आप इस्तेमाल करते हैं और स्पेसिफिक थोड़ा आगे पीछे मतलब अप्रॉक्सीमेट वेट भेजिए, पूरा वेट नहीं भेजिए, क्योंकि कभी जनरली क्या होता है कि पोस्टमार्टम करते समय पूरा निकाल के जो है स्टमक दे दिया, पूरा वो दे दिया, तो वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनको एग्जामिनेशन थोड़े से करना है, विद इन 50 ग्राम्स में भी उसका एग्जामिनेशन हो जाता है, फिर वो जाके उसको जो है
इंसिनरेट करना पड़ता है, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो जितना स्पेसिफाइड है आप उतना ही भेजें। दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, पहले फॉर्मेलिन इस्तेमाल होता था प्रिजर्वेशन के लिए। फॉर्मेलिन क्या करता था कि एक ऐसा केमिकल था जो बहुत सारे टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस में हिंडर करता था। तो अभी गाइडलाइन इश्यूज हो गई, आपको ये पता होगा, और गाइडलाइन इश्यू भी कर दी गई कि जो इस तरह के ऑर्गन्स हैं उनको उसमें फॉर्मेलिन रिप्रेजेंट नहीं करना है ना, या तो अल्कोहल में करें। अगर ड्रंकन ड्राइविंग या लिकर पॉइजनिंग का केस नहीं है तब तो आप अल्कोहल में उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और सबसे सेफ साइड होता है सैचुरेटेड सलाइन सॉल्यूशन, सब जगह अवेलेबल है, सब जगह मिलता है, वो लेके आप प्रिजर्व करें। ऑर्गन्स भी बेहतर रहते हैं, कोई हिंड्रेंस नहीं आता किसी टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस में, और कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि जब हमको पॉइजन आइडेंटिफाई करना रहता है तो हमको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों लेवल पे हमको ये बताना रहता है कि कौन सा पॉइजन है। ठीक है, अब जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हमारी लेबोरेटरीज में है या जो हम इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, वो मिनिमम क्वांटिटी, इवन आप समझ लें कि पार्ट्स पर मिलियन क्वांटिटीज में वो आइडेंटिफाई करके और क्वांटिटी में बता देते हैं, है? ये जो मैं आपको बोल रहा था कि जो है जो एविडेंसेस वो करने हैं। अच्छा हाँ, ये जो अब कुछ मैं आपको स्पेशल केसेस के बारे में बताऊंगी जिसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे हमने आपको पहले डिस्कस किया था कि लिकर पॉइजनिंग के केसेस होते हैं ना, जहरीली शराब पी के मर जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम ऑर्गन्स का स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। जो आप स्टमक भेजते हैं उसका हम स्टीम डिस्टिल करके उसमें से लिकर एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन वी गो फॉर द एग्जामिनेशन, उसके इथाइल अल्कोहल एग्जामिनेशन और उसका इथाइल अल्कोहल एग्जामिनेशन करते हैं। तो जो प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है उस पर्टिकुलर स्टमक की, जब जो बोला गया है, जो बताया गया, प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी ही नॉर्मल सलाइन में डाल के आप उसको भेजें। ब्राइट बंडिंग के केसेस भी आपके पास बहुत आते होंगे। ब्राइट बंडिंग में क्या होता है कि उसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। ध्यान देने की ये बात है कि जब आपके पास डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आती है तो जो उसका स्किन है या जो उसके क्लॉथ्स बचे हुए, जनरली बचे हुए होते हैं, लेकिन जो बोन्स क्लॉथ है या जो स्किन है, इनको आप टाइट बॉक्स में जब आप उसका पोर्शन लेते हैं या जो कपड़ा या जो बोन कपड़ा है उसको जब पैक करते हैं तो एयर टाइट कंटेनर्स में आप कोशिश करें कि एयर टाइट कंटेनर्स में उसको पैक करें, ताकि जो उसमें इन्फ्लेमेबल लिक्विड प्रेजेंट है, जो लिक्विड उस पर्टिकुलर महिला को या पुरुष को बर्न करने के लिए इस्तेमाल हुआ है वो प्रेजेंट है, वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या जैसे 2 महीने 3 महीने वो लेबोरेटरी में पड़ा तो वो वेपर्स में उड़ न जाए। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि उसको एयर टाइट बॉटल्स में रखें, ताकि जब उसका फोरेंसिक एक्सपर्ट इसकी एनालिसिस करे तो जो इन्फ्लेमेबल लिक्विड इस्तेमाल हुआ है उसको बर्न करने के लिए उसको पॉजिटिवली आइडेंटिफाई करके पॉजिटिव रिपोर्ट दी जा सके, ताकि कैलकुलेट को जो है अप्रीहेंड किया जा सके। ड्राउनिंग डेथ के केसेस हैं आपके पास अक्सर आते हैं। ये हमारा इलाहाबाद तो जोड़ में यमुना पुल है, ये काफी पिछले कोविड से पहले काफी चर्चा में रहा। रोज ही 1-2 लोग उससे डाइव कर देते थे डेथ के लिए। तो जब ड्राउनिंग डेथ के केसेस आपके पास पोस्टमार्टम के लिए आते हैं तो जनरली आप जो ऑर्गन्स वगैरह फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या क्लॉथ वगैरह जो भेजते हैं, कोशिश करें स्पेशली क्लॉथ में तो थोड़ा ड्राई करके भेजिए ऑर्गन्स जो प्रिस्क्राइब हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जो स्कैल्पल या जो आप हैंड ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन को निकालने के लिए, दोबारा वो हैंड ग्लव या स्कैल्पल आप दूसरे ऑर्गन्स को निकालने के लिए इस्तेमाल मत करिए। क्यों? क्योंकि जब आप ये पर्टिकुलर ऑर्गन हैंडल करते हैं हाथों से तो जो उससे उसमें जो डायटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो डायटम्स क्या होगा अगर आप उसी स्कैल्पल से इस्तेमाल करके दूसरे ऑर्गन्स को काट के निकालेंगे या उसी पर्टिकुलर हैंड ग्लव से इस्तेमाल करेंगे तो वो डायटम्स उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हम जब उस बॉडी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी ऑर्गन से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें जैसे पॉजिटिव ड्राउनिंग अब केस हुआ है, वो उसकी डेथ हुई है ड्राउनिंग की वजह से या वो पहले उसको मार के फेंक दिया गया, तो ये हम तभी बता पाएंगे जब आप इस तरह की प्रिकॉशंस रखें। जब टीबिया या फीवर आप भेजते हैं तो जो आगे का इस्तेमाल या स्कैल्पल जो चीज भी इस्तेमाल करते हैं आप, वो फ्रेश होनी चाहिए, आपके ग्लव्स वगैरह उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप
प्रॉपर्ली उसको वो कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो कहीं कहीं से कंटेमिनेशन आ जाता है। फिर हम जब उसकी एनालिसिस करते हैं तो पता चला हमको उसमें मिल जाता, तो हमको हर केस में ये बताना पड़ता है कि वो ड्राउनिंग है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं, थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, जो फोरेंसिक मेडिसिन या टॉक्सिकोलॉजी या पोस्टमार्टम क्लास में। स्नेक बाइट के केसेस हैं, स्नेक बाइट के केसेस आते हैं तो थोड़ी सी आप ध्यान दें कि जब फोटोग्राफ आप करते हैं स्नेक बाइट के पर्टिकुलर एरिया को, तो वहां छोटा जो सेंटीमीटर स्केल होता है कलर्ड, ठीक है, वो सेंटीमीटर स्केल जरूर रखें और एक एविडेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर रखें और उसको जूम करके उसको फोटोग्राफ कराएं, ठीक है ना, उसको जूम करके आपको फोटोग्राफ करना। अब जब आपको ऑर्गन्स भेजना तो उस पर्टिकुलर एरिया को आपको स्कैल्पेल से काट के भेजना पड़ेगा, तभी हम उस पर्टिकुलर स्नेक जो स्नेक है या जो उसका पॉइजन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं, उसमें आपको बहुत डील करना पड़ता है और उसमें पॉलिटिकल और पर्सनल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है चीजों को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे आपको बहुत प्रिकॉशन रखना है और डे टू डे आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपने अटेंड करी होगी जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड विक्टिम्स को कैसे हैंडल करना है, उनके पोस्टमार्टम कैसे करने हैं, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी गई होगी। यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगा कि ये किट है जिसको सेक्सुअल असॉल्ट किट बोलते हैं, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करा चुकी है। इसमें सारे जो कलेक्शन किट्स हैं, जो कलेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे इसमें प्रेजेंट हैं, प्लस उसमें मैनुअल भी दिया हुआ है आप उसको कैसे कलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर जो ये किट है आप उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करें। बाकी चीजों के अलावा बाकी जो आप बाइट मार्क है, बाकी जो आप उसके स्ट्रगल मार्क्स है, वो सब सारी चीजें जो बता रहे हैं, उसके अलावा जब ये किट आप इस्तेमाल करें तो बेसिकली आप उसको थोड़ा सा जान के जाएं, उसके बारे में पढ़ के जाएं और उस किट को कैसे पर्टिकुलरली इस्तेमाल करना है उसके बारे में आप वो करें। एक चीज और जब मैंने डॉक्टर लव, या मैम आई थिंक, अच्छा ओके ठीक है लास्ट में मेरा आपसे आग्रह है, थोड़ा निवेदन भी है कि जब हम लोग फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में काम करते हैं या जब मेरे स्टूडेंट्स काम करते हैं या मेरे सीनियर्स काम करते हैं, अभी पर्टिकुलरली क्या हो रहा है कि जैसे सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, तो सेक्सुअल असॉल्ट के केस में हमने 10 चीजें भेज दी डीएनए एनालिसिस के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पेंडेंसी क्यों है, पेंडेंसी किस लिए। अभी हमने कपड़े को भेज दिया इसमें डीएनए पता करने के लिए, ब्लड भेज दिया, वजाइनल स्वैब भेज दिया, सेमिनल स्टेन्स भेज दिया, हेयर भेज दिया, स्किन भेज दिया, फाइबर भेज दिया और हमने बोला आप इसका डीएनए करिए। तो जब आपने इतनी चीजें भेज दी तो वो फोरेंसिक एक्सपर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन सब एविडेंसेस में से डीएनए निकाल के आइडेंटिफाई करें, सीक्वेंसिंग करें, विच इज अ वेरी बिग टास्क। हम उस चीज को 1 या 2 एविडेंस के बेसिस पे भी काम चला सकते हैं। जैसे आप ब्लड भेज दीजिए, आप सेमिनल स्टेन्स भेज दीजिए, आप वेजाइनल स्टेन्स भेज दीजिए या बक्कल स्वैब भेज दीजिए, इससे काम चल सकता है। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं, तो आप कपड़े से रिलेटेड जो भी है उसको भेज सकते हैं, पर बहुत सारी चीजें भेजने से आप उसको अवॉइड करें। मैंने कोशिश करी, आप बहुत लर्निंग हैं, कि थोड़ा सा मैं जो गैप है उसको ब्रिज कर सकूं, फोरेंसिक एक्सपर्ट या एविडेंस या फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या फोरेंसिक फील्ड और जो मेडिकल फील्ड है उसको थोड़ा सा और क्लोजली हम थोड़ा सा कोरिलेट कर सकूं, ताकि हम बहुत बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सकें। और हमारा जो बेसिक एस्पेक्ट जो मोटिव है वो ये है कि हम सोसाइटी में क्राइम को कम कर सकें, क्रिमिनल्स डरे ताकि वो क्राइम ना करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Dr. Love, for covering the sample collection so nicely and in detail also. I have only one question from all the learned forensic experts sitting here, that histopathology examination which is being sent to now pathology department, how it is going to help? Because they should also be eye collected properly, because we are facing that we are getting more than 20
because we are catering to this Allahabad zone. So getting samples from Kaushambi, from Fatehpur, all the Pratapgarh, because this was the only medical college, other was coming. But I don't think it is beneficial in any way, because what we are getting, samples are not properly preserved. Samples are not properly labeled. And what we have to do, they send the question, बताइए कि विष इसमें विष है कि नहीं, क्योंकि इट इज सेंड बाय पुलिस वाला, वो क्वेश्चन ये लिख देता है, हाँ वी कैन नॉट टेल ऑन हिस्टोपैथोलॉजी कि विष है कि नहीं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आ जाता है मृत्यु का कारण. हमारे पास जब डिटेल नहीं, इवन इफ वी गेट समथिंग एबनॉर्मल ऑन हिस्टोलॉजी इन हार्ट और एनी ऑर्गन, वी कैन नॉट reach a diagnosis until unless we have all the clinical details. So it is just a wastage of time, I think, manpower, chemicals, everything, because we have our routine biopsies also to report the patients who are alive and who can be treated. But we have to give them to these specimens also, and probably those who are collecting sample there, वो heart का sample आता है, properly dissected नहीं होता है. Sometimes it is cut open from the atrioventricular junction. Sometimes the large vessels are not there. Yesterday only there was one slide जिसको शायद resident ने process किया कि large vessel करके, and then mostly they are partially autolyzed. Some are completely autolyzed because samples are collected. I am talking about the medical legal, not medical autopsy. Samples are collected during postmortem. They are kept there. They are usually in saline. Then they are given to the Thana police. They keep it. When they come, sometimes when we open, maggots are there. This is the fact which we are facing. जब होता है कि अभी मेडिकल लीगल चलना है हिस्टोलॉजी लैब में, तो पहले से रेजिडेंट्स एंड टेक्नीशियंस वहां पे अगरबत्तियां जला के रखते, पता लग जाता है कि अभी मेडिकल लीगल सैंपल प्रोसेस हो रहा है. एंड देन इट इज ऑफ नो यूज, नो रिजल्ट, बिकॉज दैट इज टोटली ऑटोलाइज्ड. सो वी जस्ट process some pieces because it is liquefied, and then we say no morphology is seen, no morphology report is prepared. So after 1 month or 2 months, because they are giving us sample late, we give this. So how this examination, this practice is helping the patient in the medical legal, except I don't know. Abhi one case is being run because I think that heart was sent to Kanpur from Maheva somewhere. They said we don't have forensic expert. Sent to Jhansi, they again said it is not in our zone, we don't have forensic expert. Then it went to KG, it came also here, we all said we don't have forensic expert in the pathology. And then it all has gone to the DGMA office, and from there we got a letter day before yesterday कि क्या आपके यहाँ visceral heart की histopathology होती है. What answer all of us given? Yes, we do the histopathology of patients who are admitted. But we cannot do medical legal histopathology because we don't have a forensic expert. This जवाब सभी ने लिख के दे दिया. But these are the problems which we are facing. How it is justified? We are getting part of a liver को ना forming के घुसा दिया छोटे से डिब्बे में. So it is coming like this. कभी ब्रेन है तो ब्रेन का पता चला आ रहा है, फोरब्रेन आ रहा है, तो मिड ब्रेन नहीं है, फोरब्रेन में नीचे से काट दिया मेडुला ऑब्लोंगेटा से. How we are going to do? So these samples are not collected even properly for histopathology. So I want your comment. Should be done, or can all of you as a forensic experts advise the government that what should be done? Yeah, I think definitely that's a huge area of you can say concern for all of us, and we are facing this a lot. I think most of the problems what you have mentioned about the autopsy and all, as far as I know, the system in all over India, especially in the state of UP, almost 85 to 90% cases are being conducted by the plain MBBS doctors. And that's one of the reasons why, because they are not at all aware how to preserve these kind of viscerals. So that's the core. And we are, of course, trying to improve that system by having this creation of medical legal forensic expert in other districts. So we have created, after a lot of efforts, 75 posts of forensic experts for all over UP. And that's another issue, that even after creation and after 3 years of that, as of now, only 20 persons or even less than that they have joined. So forget about that. So that's a dream only, that every district will have at some point of time, maybe after a decade or so,
then every district will have forensic experts. So these kind of, you can say, general improvement in the forensic services will be there. So that is one issue. Of course, at the different forums, we are trying to advocate, we are trying to, you can say, give this information. As far as your issue is about the jurisdiction and you can say the work, whether it is fall under your domain, it is 100% falls in the domain of pathology, right? Because in India, we have got a different system. We are not a forensic pathologist. We are forensic medicine expert, right? I have worked quite some time here and many of the times, many years in Scotland also. So there it is forensic pathologist. They have got a 5 years structure. So here is the difference. We are not pathologists. In other states, if you go in Delhi, Punjab, Haryana, routinely these visceras are being sent to the Department of Pathology. There is a clear-cut jurisdiction. It is linked with the police station itself. So whatever the district autopsy is being conducted, whosoever is catering to that medical college, the Department of Pathology of that, if that is not having in that missionary or in that region, whosoever is the Department of Pathology is there, it is their responsibility to conduct you can say, the histopathological examination. There is what I have felt that why the pathologists are averse to this you can say practice, because they are being afraid of going to the court. That's our personal discussion, and the same thing I am facing at AIIMS itself. But what if I can share you what the system what we have adopted. We at AIIMS, we do this grossing as well as the tissue processing up to the slide preparation in the Department of Forensic Medicine itself. I'm talking about AIIMS. Now, how it can be replicated in other part of state of UP, that's a question mark. So what we do till then, when we process those slides, once in a week from the Department of Pathology, one consultant comes, our resident sits along with him, and we do the common reporting. In the office copy, backup copy, what we have there in the office copy, that the signatory is both that consultant and the consultant of forensic medicine, as well as the resident who has conducted the autopsy. But to the police, we don't give that report, because as far as your question about the cause of death, giving in all this is not at all your domain. This is the domain of the person who has conducted the autopsy. But for giving the cause of death, he needs the backup services, reports like toxicology, depending upon life histopathology, if it is a sudden natural death, and all those issues are there. So he needs backup from different specialties, depending upon case to case. Ultimately, cause of death giving is not at all your responsibility. You are just confined to to give whatever the findings are there. Your problem is genuinely right because you don't have that liberty of cross examination. And the poor MBBS doctor who doesn't know how to do, forget about MBBS doctor, even I have seen even the so-called forensic experts also don't do the exact cross examination. They just preserve, cut it and send it. So I think these are a few of the very, very complicated issues. For that, one cannot be responsible. It's basically our whole system. We envisage that in future, once we have that forensic experts are doing that, and then of course, because they know what sample is to be preserved and in which situation is to be preserved and how much minimum it should be preserved. That is also one of the issues. We have very clear-cut guidelines. If you leave it to the resident, he will preserve almost in 50% of the cases. Just to save his own skin, he will send the viscera for the histopathology examination. So we have made a guideline that no, resident will not refer it to the Department of Pathology. It will be reviewed by the consultant. Once consultant agrees that yes, this case needs definite histopathological examination, only then the viscera is preserved. Otherwise not. I think probably I have touched upon all your queries. So many things are responsible for all those things, for all those you can say. But I can share you because this problem arose. I am also the medical legal expert to the Human Rights Commission, National Human Rights Commission of India, and because it was only upon my instruction to the NHRC who has given this specific direction to the state of UP to improve that system. The problem happened, one case from histopathology from Radawat was sent to Lucknow. They refused, same query, no, we don't have any forensic pathology and all. Ultimately, finally, after wandering here and there, ultimately the police person sent the viscera to the FSL, Delhi. And now FSL Delhi, what he will do, it is not at all their domain.
They rejected. Finally, he requested us. He wrote letter to AIMS that please do this histopathology examination. Then we explained that, and we told them that to have this kind of system, because it was a custodial death case, so I used my position from NHRC just to improve the system. Now it is gradually developing. Every region and every medical college is being given this responsibility. Even private medical college are taking up this responsibility. I can share the PSMU, Muradabad. They have started doing the histopathology, Department of Pathology. So it's just a matter of perception. Because you are afraid of going to the court and all, so I have given you the solution for that also. If you adopt that practice, 99.9% you will never be called for the court evidence. It will be the forensic part. Whole body CT in what sense? We are doing the CT scan. We are doing the CT autopsy itself. We are doing the autopsy. Whole body CT we are doing at my department itself. CT is a different thing, altogether different thing. Here we are talking about the histopathological examination of Visra. You are talking about the whole body CT scan. That's altogether different scenario. Whether we are doing, you can say, supplementing the traditional autopsy. Okay. Yeah. That's I think. Please, I think enough discussion has been made over that. Now I'm just concluding. Regarding the preservation and as the question has been raised by the man, now here just I have to inform this house, sitting here, especially the students who are our coming generation, for this particular business, rather say for autopsy, for medical legal, or for in medical stream. In MBBS, you have been taught by pathology, even by forensic medicine, how to preserve any tissue for histological examination. What are the preservatives used for that? So why they get forget? कोई एक्सक्यूज उनके लिए नहीं है कि जब वो 10 साल बाद स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में जब वो पोस्टमार्टम करने आते हैं तब वो भूल जाते हैं कि हम उसको क्यों सैचुरेटेड सेलाइन में हम उसको रखें। अगर वहां पर अवेलेबल नहीं है तो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव उस समय कांस्टेबल है, कांस्टेबल को आप बोलिए कि हमको प्रोवाइड करिए आप फॉर्मलिन, मार्केट से लेके आके दीजिए, उसमें प्रिजर्व करेंगे, और नहीं तो हम कोई भी प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप साफ साफ मेंशन कर दीजिए कि ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ दिस which has not been provided by the state government or by the police concerned Thana. Therefore, the particular tissue has not been preserved, which may hamper for the further opinion to get regarding the cause of death. अगर इतना आप में दम है तो अपने हाथ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिख सकते हैं आप। जो फोरेंसिक मेडिसिन के जो भी स्टूडेंट या जो डॉक्टर बाद में हो सकता है फोरेंसिक मेडिसिन की वर्क में आएंगे फील्ड में, चाहे वो किसी भी स्पेशलिटी के हो, तो उनको ये बात याद रखनी चाहिए। तो ये तो बात हुई थी क्योंकि मैडम ने प्रिजर्वेशन की बात की थी, बट नेचुरल है हमारे यहाँ भी आईएमएस में, मैंने बीएचयू में भी फेस किया है, पैथोलॉजी वाले बेचारे रोते रहते थे, इसीलिए बदबू वाला सर को वो जार लेके चले आते थे। क्यों? वो हमारे पेरीफेरी में जो डॉक्टर है उसने तो प्रिजर्व करके रखा है सैचुरेटेड सेलाइन में, और पुलिस महोदय जो है वो उसको 2 महीने बाद लेके आती है, तब तक तो वो हाईली डिकम्पोज को एकदम उसके तो क्वालिटेटिव चेंजेस मत बोलिए, उसका तो पता नहीं क्या क्या हो गया उसका, हाँ तो सब हो गया वो। अब आपके उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जो कुछ जैसे कि आपने डीएनए लिस्ट में दिखाया डीएनए, तो डीएनए के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने फोरेंसिक साइंस लैब को सभी को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ये फैसिलिटी, वो टिश्यू, वो चीजें, वो किट जो है वो प्रोवाइड करें। जी सर। फिर बात आती है रेप विक्टिम्स के लिए। जी तो हम विक्टिम ना कह के अगर हम उनको कहें सफरर्स, तो उनके लिए भी किट है। तो हमारे डॉक्टर्स को वो प्रोवाइड ही नहीं कर रही है। अब कोर्ट हमको
अननेसेसरी जो है हमारे ऊपर ब्लेम करता है कि आपने ढंग से प्रिजर्व नहीं किया। आप अभी ब्लेम कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये किया नहीं, ये तो गलत है। ये एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट फोरेंसिक साइंस लैब और ये जुरिडिक्शन दिया गया है फोरेंसिक साइंस लैब को। मुझे अच्छे से मालूम है कि ये हर सेंटर्स पर हर हॉस्पिटल में ये प्रोवाइड करे, तो ये कैसे नहीं हो रहा है? तो एक कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए। हमारे IFM फोरम से ये एफर्ट लिया जा रहा है, लेकिन ये जो आपका जो फोरम है वहां से ये एफर्ट उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं लिया जा रहा है। तो मैं इतने पे ही कंक्लूड कर रहा हूँ। आप लोग अपने अपने फोरम से कोशिश करिए कि हमारे भारत में कुछ तरक्की हो जाए। हम ये जो प्रॉब्लम जिस तरीके से मैडम फेस कर रही है या जुडिशरी सिस्टम फेस कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रॉपर जस्टिस, हम वो न फेस करें। थैंक यू वेरी मच सर। सर डॉक्टर आदेश कुमार सर ने बहुत सारी चीजें फोरेंसिक साइंस रिलेटेड जो मुझे सर ने बोली। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Vatsala madam. Thank you, SK Department sir. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you, Dr. Love, for your nice presentation. I would like to request Dr. Vijay Nasa to please come on this dais to felicitate our chairperson and speaker. Ladies first. Ladies first. चाय कॉफी कुछ है वहाँ ले आओ। इधर चले नहीं बाहर चलिए यार सब एक घंटा में देखना है। Thank you, sir. It was a nice presentation. Now, for the next session, I would like to call upon Dr. Anju Singh, Professor, Department of Forensic Medicine, Medical College, Ayodhya. Dr. Vaibhav Srivastav, sir, Professor, Department of Surgery, MLN Medical College. Dr. Ajit Chaurasia, sir, Professor, Department of Medicine, MLN Medical College. It's an age-long question. That is, patient really a consumer? Since the Protection Act, to discuss this question and to enlighten us on his viewpoint, I would like to invite Dr. Rajesh Kumar Rai, sir, Associate Professor of Department of Forensic Medicine and Toxicology, Motilal Nehru Medical College, Prayagraj, to deliver his speech on the topic Consumer Protection Act. Is doctor really a service provider? Welcome, sir.
respected my esteemed teacher, Dr. Tripathi sir, Dr. Vatsala ma'am, Dr. Vijayanath sir, Dr. Ajay sir, other dignified dignitaries, my senior professors, dear colleagues, juniors, and my dear students. It is always privilege to talk in the last, because till then most of the audience become so much educated that your work reduce so much, and you can finish in a while, just in a flash. So my presentation will be just like that. And I know कि जब बच्चा डिलीवर होता है तो जो गायनकोलॉजिस्ट होती है, he have all the patience to deliver all the things, but not for the legs. He just want to pull it out. So this leg will immediately deliver. Don't worry for that. I will not give you such pain. And start with, but just a request for all of you कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी डिस्कशन किए उन सब में हम लोगों ने अपने को एक डॉक्टर मानते हुए बात की. So now my request is to treat yourself as a consumer. Just change a little bit of your mindset and don't think that you are a doctor listening a talk and this Consumer Protection Act जो सुनते ही एक अजीब सी एंजाइटी क्रिएट करता है हर डॉक्टर के मन में, उसको छोड़ के हम एक कंज्यूमर बन के इसको सोचते हैं. Because most of the time we are consumers. Only sometimes when we act professionally we are doctors. I would like to start my presentation that grievance against purchased goods and hired services are part of our day-to-day life. Aggrieved people with deficient services or defective goods. What he did usually, they go for other sections of IPC which can help him in that particular case regard, or some other laws which are not meant actually for protection of the rights of the consumers, but for the regulation of different segment of services like Motor Vehicle Act, Food and Drug Adulteration Act, Pharmacy Act and so many other acts. वो उसका सहारा ले करके वो अपने grievances को deal करना चाहते थे, and this need of that hour was an act dedicated to provide friendly grievance redressal system without much legal technicality for a common consumer of all the states of the society. So our legislation, our legislative council realizes this need, and the Consumer Protection Bill was passed by both the houses of the Parliament on 24 December 1986, and since then this day 24 December 96 has been celebrated as National Consumer Day. We are now celebrating it every year. After various, so first Consumer Protection Act that was meant in 1986. Where after various amendments in different years, now what we have, the actual act in force is Consumer Protection Act 2019, which has completely replaced the earlier acts and amendments. This is Act number 35 of the 2019, and after Lok Sabha's journey through Rajya Sabha, it ultimately passed on 9th August 2019, and since then it is enacted on the land of India. This Consumer Protection Act was meant, it was a dedicated act for the benefit of, for the grievances redressal system of consumers. So this protection, this act was for protection of interest of consumers, and for the said purpose, in this act, it is to establish authorities for the timely and effective administration and settlement of consumer disputes, and all the administrative matters, financial matters, appointments, regulations concerned therewith. So this act has provision of certain authorities, councils and forums on which a redressal can be obtained, and all the administrative part of that. It extends all over part of the India except in the state of then Jammu and Kashmir and now Ladakh, UT and Kashmir.
This act shall apply to all goods and services. It is specifically, categorically mentioned that this act is applied to all goods, all services, no exception. It has 8 chapters, quite a long act, 50 pages, but I have summarized it to use it to become useful for us to understand our proceedings when we are working as a doctor in the society. We have to look for what right the person in front of me as a patient is, what rights he has, what rights I have to protect it for him, and what should be our attitude towards him so that he don't have any grievance when he leave the room. So my presentation will be focused for medical practice and medical services only. In the act, consumer is described anyone who buy any goods for any consideration. Consideration पैसा, जमीन, कोई एक सामान देके दूसरा सामान ले लेना, किसी एक चीज के बदले जब हम कोई चीज लेते हैं तो हम उसे बाय करते हैं. सो अगर किसी ने गिफ्ट में ले लिया वो विदाउट कंसिडरेशन हुआ. गिफ्ट में ली हुई चीज पे ये एक्ट लागू नहीं होगा. बाई एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन एंड इट इंक्लूड्स एनी यूजर अप्रूव्ड बाय द बायर. जिसने खरीदा बस वही नहीं कंज्यूमर है. अगर कोई अप्रूव्ड यूजर जिसको हम अप्रूव कर रहे हैं कि लो तुम इसे यूज करो, अगर वो यूज करता है वो भी कंज्यूमर है. देन इन केस ऑफ सर्विस, definitely those who buy the service, who that will be consumer, and of course the approved person by him will be consumer, except those using for commercial purpose. Commercial purpose in the sense कि अगर हम उसको खरीद कर आगे बेचते हैं किसी गेन के लिए जिसमें हम उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, if we are not using it then we are not consumer. If we are using services for making some system which is beneficiary to us, we are using it we are using it economically, then we are not the consumers. So the act describes 6 types of 6 segments of rights of the consumer. What are these? The right to safety. एक्ट कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी भी तरह का हार्म या किसी भी तरह का डेंजर किसी भी उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर को, यूजर को पहुंचे. इट हैज टू बी regulated properly in a safety precautionary manners. Right to get information. Every consumer should have full information of the product and services he is using in all the relevant forms, and it should be clearly visible to every product and before every service to the consumers. Then right to choose. In our medical profession, most of the time the patient is not in position to ask you to show me, yeah, let me choose. You are the doctor, you are the boss, and what is going to happen with the patient is decided by the you. Actually, you are not preserving the right to choose of the patient. You should always speak to your patient and give him choices. These are the choices, these are the benefits, and we all learn. We forensic people have already learned in the subject of consent what should we do when we have more than one procedure in our hand and we have to pick one. So right to choose. Then right to be heard. If someone has some grievance, किसी को कोई शिकायत यदि गलती से आपसे हो जाती है, तो देखिए ये उसका राइट है कि जब वो अपनी शिकायत करे तो आप सुने. So right to be heard. Every consumer have right to be heard. First by the seller or by the service provider, and if he is not listening to him, then by some forum or some authorities जो उसके grievances को सुने. So this is the right. The act finally protected the right of a consumer in the form of education. Every effort has been made by the various NGOs and the government that patients should be well informed about the prevailing services and buying goods. So since we are very much concerned, we doctors are very much concerned about the service, and the topic of my presentation is whether doctor is doing any service or not. So I define this service is defined in this act as service of
any description. This is the key word used by our legislative assembly to form this act, and they said service of any description will fall in the ambit of this Consumer Protection Act, which is made available to the potential user but not limited to. उन्होंने कुछ नाम दिए जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल एंड अदर एनर्जी, टेलीकॉम, बोर्डिंग, लॉजिंग. इन्होंने कहीं भी इसमें देखिए इंटरटेनमेंट, एम्यूजमेंट, लेकिन कहीं भी इन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस इसमें नहीं लिखा. This was the ground previously, and the same was written in the act which is passed in 1986. And this was the ground when some people have filed a PIL in the Supreme Court and said this legislation has not included medical service. So, अभी हम आगे इसको discuss करेंगे कि what was the stand of the Supreme Court then. So, all kind of service of any description will be involved in this, but does not include when the service is rendered free of charge or under a contract of personal service. This is important. सभी सर्विस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आएंगी, लेकिन अगर कोई सर्विस फ्री ऑफ चार्ज रेंडर की जा रही है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस के परव्यू में रेंडर की जा रही है, इन दैट केस वो सर्विस इसके दायरे में नहीं आती. व्हाट इज फ्री ऑफ चार्ज? ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब ने सुबह से 20 मरीज देखे, 10 मरीजों को उन्होंने पैसे लेकर देखा और 11वें का पैसा उन्होंने छोड़ दिया और फिर उसके बाद पैसे लेने लगे. द 11th वन जिसकी उन्होंने फी नहीं ली थी, उसने अगर उनके ऊपर कोई इशू किया, then this cannot be your plea that I have not charged for this my services, and so under this free of charge clause I should be out of the purview of this CPA. No, actually the act says that a institute or a system or a body which is meant to provide all the services free of charge, only that place, that institute, these services will be out of ambit of this CPA. All the doctors working there, suppose there is an NGO who is working free of charge to provide diagnostic services to poor people. Okay, if they have done something wrong, they are well protected by this act. They are not coming under. लेकिन अगर कोई डॉक्टर अपनी क्लिनिक पे किसी पेशेंट को फ्री ऑफ चार्ज देखते हैं और किसी पेशेंट को नहीं, they will not. Now the question is doctor really a service provider? What is the status under this act? This is recently on 22nd April 2022, a Supreme Court bench of Justice D.Y. Chandrachud and Hima Kohli, while hearing a PIL filed by a NGO, Medico's Legal Action Group, he affirmed Bombay High Court verdict given by the same Justice Chandrachud, then he was High Court judge, which hold that doctors and healthcare service providers are covered under the ambit of the Consumer Protection Act. The bench further said that statute says service of any description, जो हम लोगों ने अभी बात की, services of any description, and added that definition of service is wide enough, and had the parliament wanted to exclude it, then it would have said it expressly. अगर आपको वो इससे बाहर रखना चाहते तो वो खुलकर कहते. अगर उन्होंने नहीं कहा कि मेडिकल सर्विस इससे बाहर रहेगी, तो हम ये मानते हैं कि सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन विल इंक्लूड मेडिकल सर्विस आल्सो. Before that, there was a landmark decision which has been discussed repeatedly in the whole day. That was in IMA versus VP Shanta and others in 1995. Supreme Court has finally decided that issue of coverage of medical profession within the ambit of Consumer Protection Act. And doctor and hospital become aware the fact that as long as they had paid patients, all the patients are consumers, all the paid one and the free one, all are consumers, even if the treatment is given free of charge. तो अगर कोई डॉक्टर किसी जगह बैठ करके एक भी पेड पेशेंट देख रहा है तो उसके द्वारा देखे गए सारे पेशेंट्स उसके कंज्यूमर माने जाएंगे. Even well before this formation of Consumer Protection Act, it was decided in the case of Dr. Lakshman Balakrishna Joshi versus Dr. Triambak Babu and others by the Supreme Court, and in that decision Supreme Court clearly said that the doctor owes to his patient certain duties. One, duty of care in deciding whether to undertake the case. This is what? Accepting a patient. This is when you are accepting a doctor-patient relationship.
जब आप किसी पेशेंट का इलाज करना सोचते हैं कि नहीं मुझे इसको ट्रीट करना है, एट दैट इंस्टेंट दिस डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश। एंड तो ड्यूटी ऑफ केयर इन डिसाइडिंग किसको हम अपना पेशेंट एक्सेप्ट करते हैं, किसको हम नहीं करते हैं, दैट शुड बी विजिलेंट। इफ यू आर नॉट गुड एनफ टू ट्रीट दैट पेशेंट, तो आप उसको मत एक्सेप्ट कीजिए, सही जगह भेज दीजिए। दिस इज देन सेकंड इज ड्यूटी ऑफ केयर इन डिसाइडिंग व्हाट ट्रीटमेंट टू गिव। व्हाट ट्रीटमेंट मीन्स you must know the updated information of how to diagnose and what is the updated treatment present time, इसको क्या दिया जाना चाहिए। And the third one, duty of care in the administration of that treatment. This administration of treatment includes overall health care of that patient. It doesn't mean just the treatment part will be on the part of the doctor and others not. The administration of the treatment means the total health care of the person until when he is under your custody. A breach in any of the above duties may give cause to action for negligence, and the patient may on that basis recover damage from the doctor. This decision was come in 69. So it was really very clear, and the boss is boss, because under Article 141 of the Constitution of India, the law declares Supreme Court is binding in all the courts. We know that high courts and Supreme Courts are courts of records. इनके द्वारा दिए गए निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे रहते हैं, एंड दे फॉर्म प्रेसिडेंट्स। इन्हीं को हम नीचे की कोर्ट्स फॉलो करती है। देयर वाज अ प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डेसिसिस, दैट इज टू स्टैंड बाय डिसाइडेड केसेस or to uphold precedents or to maintain the position let down by the higher court earlier. नीचे की कोर्ट ऊपर की कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन को ही नीचे लागू करती हैं। And if this stare decisis actually create a narrow space for the new coming judges who want to discuss the constitution by his own wisdom. So they have provided one chance when an act is amended. Whenever an act is amended, there is a fair chance for a judge to discuss the technicalities of that act separately without going into the details of the previous decision in that regard. Then the act says what is damage and compensation. The claim for damage was based on the principle that if a person has committed civil wrong, he must pay compensation. किसी ने गलती की वो compensation दे, and by the way of damage to the person wrong, जिसके साथ गलत हुआ उसको वो पैसा मिलना चाहिए। Patient who has been injured by an act of established medical negligence deserve compensation, and this due to his losses. Losses here is not a plural, it is singular. Losses means different kind of loss. Okay, this loss may be an instant one, or this may be a continued loss. When a person who is earning by his foot, he is a rickshaw puller, and somehow with the negligence act he lost his legs, so there is a loss, is continued loss. He's lost his earning capability, जो कि उसकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करेगी। तो as per CPA 2019, minimum amount of sum so payable shall not be less than 25% of the value of such defective goods sold or service provided. Now, this act actually not dedicated for medical profession, hence any kind of service which can be evaluated easily or any kind of goods which can be evaluated, और ये principle उस पे लागू हो सकता है, but not on the medical profession. So, in cases of medical negligence, कितना compensation दिया जाए, what will be the quantum of compensation, इस पर डिस्कशन इसमें किया गया, and in the light of different Supreme Court decisions, I would like to take up a little bit about it. We know that there are so many theories has been given in different decisions. After all, court has legal view क्या है कि the court has decided that between the plaintiff injured through medical negligence and the plaintiff injured an industrial or motor accident, कोर्ट को दोनों में कोई अंतर नहीं लगता, इंजरी तो इंजरी है। एंड मोटर व्हीकल एक्ट में कंपनसेशन कैलकुलेट करने के लिए देयर इज अ मेथड कॉल्ड मल्टीप्लायर मेथड was created to facilitate awarding compensation in relation to this motor vehicle act. The same formula has been implemented by the Supreme Court in few of his decisions earlier, and that formula is written, which is not much important to understand, but there is a formula.
and that depends, what is important here, that depends on age, his annual income. What Dr. Mukesh sir and Dr. Adarsh sir has said, ki the status, the socio-economic status of the patient, that is very important. If you are treating patient of high profile patient of affluent class, then you must be very much vigilant, because the annual income is here, plus 30% of inflation minus 1/3 of expenses. This will calculate by this multiplier method formula, which is not actually applicable. तो क्या हुआ, क्या रिलीफ मिल गया? नहीं साहब, सुप्रीम कोर्ट हैड एडेड मोर कि इन केस, अब ये तो मोटर व्हीकल एक्ट में था, आपका तो मेडिकल नेग्लिजेंस है साहब, मेडिकल नेग्लिजेंस में सुप्रीम कोर्ट हैड एडेड द अदर डायमेंशंस टू द कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन इन मेडिकल नेग्लिजेंस, सच एज द मेडिकल कॉस्ट incurred by the victim during the litigation, cost of future medical expenses, compensation towards mental agony and physical pain, compensation towards loss of consortium, cost of litigation, inflation and interest, and then the punitive compensation. These all compensatory points has to be discussed, evaluated, and a compensatory value should have been obtained, that has to be added, and then the final compensation has to be declared. Supreme Court, in his various decisions by different learned judges, have given so much of stress how to calculate this compensation. Some of them was in favor of this punitive compensation as a deterrence. What they said, that despite of all these acts have been made 20, 30, 40 years back, medical negligence cases साहब अभी भी बढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, इतना बड़ा कंपनसेशन देने के लिए कह दो कि ये लोग डरे और अपने काम को ज्यादा तल्लीनता से करें, ईमानदारी से करें, एथिकली मोरली करेक्ट होकर करें, और ये केसेस घटे. सो देयर वाज अ थ्योरी ऑफ प्यूनिटिव कंपनसेशन, जिसमें काफी लार्ज कंपनसेशन किए गए. देन सुप्रीम कोर्ट इन केसेस ऑफ निजाम इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज वर्सेस प्रशांत, उसने क्या किया कि नेशनल कंज्यूमर फोरम ने जो कंपनसेशन लगाया था, उसने उसको बहुत ज्यादा पाया, एंड ही रिड्यूस इट. सो and again court also is taking care of the theory of retribution, that what part of negligence had been done by which person, so the compensation should be equally distributed to all the persons causing that damage. Theory of retribution. Finally, the Supreme Court observed in case of IMA versus VP Santa, the landmark case, and said what may seem like an unduly large award may be little more than that sum which is required to compensate him for such matter as loss of future earning and further cost of medical or nursing care. Then to deny a legitimate claim or to restrict arbitrarily the size of award would amount to substantial justice. बहुत ज्यादा क्लेम, किसी को बहुत ज्यादा कंपनसेशन दे देना उचित नहीं है, और अगर हम किसी कंपनसेशन पे कोई कैप लगाते हैं, देयर वाज अ थ्योरी कम्स कि नहीं साहब, देयर शुड बी सम कैपिंग ऑन दिस कंपनसेशन, कि अगर ये डैमेज होता है तो मैक्सिमम कंपनसेशन अलाउबल शुड बी दैट. कोर्ट फाइंड दिस सब्सटेंशियल इनजस्टिस विद द सफरर. Ultimately, the judge in the medical whatever comes to concluded, the judge in medical negligence litigation has complete and absolute discretion in awarding compensation right now. This CPA has no capping, no formula, and this is the only the discretion of the learned judge what compensation he found fit for the case, and he may award it. Then this CPA, Consumer Protection Act, defined deficiency as any fault. हमें अपनी सर्विसेज को अगर हम अच्छा, ये हम बार बार सुप्रीम कोर्ट, सुबह से हम लोग सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे केसेस जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट ही सुनती है और उसके नीचे. सो दैट आई एम कमिंग ऑन दैट, एक्चुअली वही मेरा टॉपिक भी है, तो हम उस पर आते हैं. बट बिफोर दैट so much has to be learned. When we are providing services to a person, then we should know what is the definition of service and what exactly we termed as deficiency on service. किसको deficiency माना जाएगा? So the act defined that any fault, imperfection, shortcoming or inadequacy, ठीक है, हमारा मेडिकल नेग्लिजेंस की हमारी अपनी डिफिनीशन है, लैक ऑफ रीजनेबल केयर, वो एक अपनी वो मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए वो हमारे पास है. बट
when we are sued against by with the help of this Consumer Protection Act, then the principles laid down in this act will be applied on us, and we will be tested on that definition. So this definition must be known to every service provider. Any fault, imperfection, shortcomings, or inadequacy in the quality, nature, and manner of performance which is required to be maintained under any contract or law for the time being in force in relation to a service and include. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि quality, nature और manner of performance under any contract. We know when doctor comes to a patient or patient comes to a doctor, there is a contract जो कि लिखा हुआ नहीं है, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट स्टेब्लिश हम कर लेते हैं. तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमें उसको हमें केयर देनी थी और हम नहीं देते हैं, देन आवर सर्विस इज डेफिशिएंट. Now, who will be a product seller? Sometimes we say we are only at risk when we are providing services. No. Being a doctor, we are treating patient using so many of equipments, using so many of products. Sometimes, due to our the present scenario is that a doctor has its own pharmacy shop, doctor has its own diagnostic lab, doctor has most of the equipment owned by the same doctor. So now it becomes necessary कि कहीं वो doctor during providing his services कहीं वो product seller के दायरे में तो नहीं आ जा रहा है. And even if he is treating a patient using a stethoscope and that stethoscope belongs to that doctor have some जो जिससे कि वो मरमर नहीं सुन पा रहा है, and because of that if the patient suffers some losses in the future, this was the choice of the doctor to use that stethoscope, and so doctor will be liable for the punishment. So we are not the product seller, but we are coming under the category of product seller, and that's why CPA is applicable on us. A person who in the course of business import, sell, distribute, lease, install, prepare, package, label, market, repair, maintain or otherwise involved in placing such product for commercial purpose, and that include a manufacturer who is also a product seller. यहाँ तक तो हम बचे हैं. And second is a service provider. कोई भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं और उससे जब हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, then we should be vigilant कि that product should be of good quality, so that वो किसी भी तरह से पेशेंट के लिए हैजार्डस ना हो. Then what is the defect? I think this is not so much important, but थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि any product which we are using in our nursing homes, सर्जिकल कंज्यूमेबल्स हैं या डिफिब्रिलेटर मशीन्स हैं, ECGs हैं, इनमें कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से आप मिसडायग्नोज करो, दैट इक्विपमेंट बिलोंग्स टू यू. दिस वाज योर चॉइस टू चूज दैट इक्विपमेंट. अगर उसकी वजह से किसी पेशेंट को कोई लॉस होता है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल नॉट बिकॉज यू वर नेग्लिजेंट, बट योर प्रोडक्ट वाज डिफेक्टिव. सो डिफेक्ट शुड बी नोन टू एवरी डॉक्टर. व्हाट इज अ डिफेक्ट? Any fault, imperfection or shortcoming in the quality, quantity, potency, purity and standard. अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं कि साहब हमारा प्रोडक्ट जो अल्टीमेट जो लेटेस्ट टेक्निक्स है उस पे बेस्ड था, ISI मार्क की जहां जरूरत है वहां ISI मार्क था, टाइमली सर्विस्ड था, प्रॉपरली हैंडल्ड था, एंड इसके बाद भी अगर कोई गलत रिजल्ट आ जाता है, यू विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. बट अगर इनमें कहीं आप डेफिशिएंट पाए जाते हैं और प्रोडक्ट डिफेक्टिव पाया जाता है, तो बिकॉज यू आर एन इंड यूजर, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. व्हेन यू विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल for a product, for a wrong product, when a provider of professional service, like a doctor, when a provider of professional service in any transaction in which the sale or use of that product is only incidental, but furnishing of opinion, skill or services being the essence of such transaction, then you will not be liable. कहने का मतलब है जब हम किसी प्रोडक्ट को इंसिडेंटली यूज कर ले रहे हैं, बट उस प्रोडक्ट को बेचना या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा वर्क नहीं था. हमारा वर्क क्या था? उसको सर्विस प्रोवाइड करना, ओपिनियन देना, अपने स्किल को उसको प्रोवाइड करना. इन दैट, जैसे हम कहीं गए, हम कहीं बैठे थे, अचानक किसी ने कहा हमसे मेरा बीपी डॉक्टर साहब बढ़ा रहता है, और उसके घर में अचानक किसी ने उनको एक मशीन दी, उससे हमने उसका बीपी देखा, उसका बीपी नॉर्मल आया, हमने कहा आपका बीपी तो नॉर्मल है, आपको दवा की जरूरत नहीं है, एंड शाम को उसको हेमरेज हो गया, बाद में पता चला वो मशीन तो गलत. यहां हमने किया क्या? हमने ओपिनियन दिया. हम मशीन से बीपी नापने का धंधा नहीं कर रहे थे, हम ओपिनियन दे रहे थे फॉर हाइपरटेंशन.
and incidentally a BP machine comes in my hand which was defective. In that case, doctor may not be liable. But if we are carrying that BP machine and then we are providing such a faulty, then you may be responsible. May be responsible, not always responsible. Then, so this product liability, concept of product liability is important. So this responsibility means a product manufacturer, product seller, or any product or service rendered by that product, they will compensate for any harm caused to a consumer by such defective product manufactured or sold or by deficiency in service related thereto. There is concept of unfair contract and unfair trade practice. Whenever a contract, हम basic principle किसी भी contract का जानते हैं, दो लोग किसी एक चीज पर एग्री होते हैं तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. अगर कोई भी एक दूसरे से तथ्यों को छुपाता है, झूठ बोलता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है, तो ये बोलकर जब वो एग्रीमेंट होता है तो वो लेजिबल नहीं होता है. द सेम हैज बीन रिटन, नथिंग, इसमें कुछ और भी नहीं है, कुछ और नहीं है इसमें. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इज ऑल्सो, यस, there is a difference in the definition of injury and harm. हमने इंजरी की डेफिनेशन पढ़ी है, any injury, any harm illegally caused to a person, body, mind, property or reputation. यहाँ reputation word गायब हो गया है. Injury means any harm whatever illegally caused to a person in body, mind or property. And harm is damage to a property other than the product, personal injury, illness or death, mental agony or emotional distress. So these are the part of injury and harm which can be sustained to a person. So coming to the act proper, who can complain? कौन complain कर सकता है? A consumer. Yes, of course, consumer कर सकता है. Any voluntary consumer association who is registered under the law, central government or state government through his central authority, I by its own. One or more consumers when there are numerous consumers of the same service, and in case of death of the consumer, the legal hire or the legal representative of that person, and in case of consumer being a minor, parent or legal guardian. All of them can, they are authorized to file a complaint. Otherwise, if otherwise कोई person file करता है, this will not be admitted by the forum. Complaint, a consumer can file a complaint with कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस इन रिलेशन टू, किन किन शिकायतों के लिए ये कंप्लेंट फाइल की जा सकती है. अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, झूठ बोलकर, गलत सूचना देकर, सब स्टैंडर्ड सामान, डिफेक्टिव गुड्स और डिफिशियंसी इन सर्विसेज, ओवर चार्जिंग. देखिए अभी तक हम पेशेंट की डेथ में अटके हुए हैं, पेशेंट का पैर टूट गया, कट गया, अभी हम यहीं अटके हुए हैं. वी आर अंडर सीपीए, और सीपीए में अभी और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे लोग अवेयर नहीं है. पीपल अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगी, हमको इनके लिए भी शू किया जाएगा लेटर ऑन. सो वी शुड बी वेल अंडरस्टूड कि हमें इन एक्ट के प्रोविजंस को जिनके तहत हमें कभी भी शू किया जा सकता है बहुत अच्छी तरह जाने. सो ओवर चार्जिंग और डिसेप्टिव चार्जिंग ये बहुत यूजुअल प्रैक्टिस है. आप जाइए, इफ यू आर अ इंश्योर्ड पर्सन, आपके साथ अलग बिलिंग पैटर्न फॉलो होता है, एंड इफ यू आर एन अनइंश्योर्ड तो आपके साथ अलग. दिस इज डिसेप्टिव चार्जिंग. दिस शुड नॉट हैपन. The offering of goods or service for sale which may be hazardous to life and safety and for a claim of product liability. Obviously, there is a limitation period. कब तक किसी के साथ कुछ गलत हुआ, कितने दिन में वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है? This act says up to 2 years. National Commission shall not admit a complaint unless it is filed within 2 years from the date from which the cause of action has arisen. Now the act give provisions of consumer protection. बहुत शॉर्ट में हम इसको करेंगे, बिल्कुल भी आपके लिए भारी नहीं होने वाला है. Consumer Protection Councils, establishment of councils, Central Consumer Protection Authority and Consumer Protection Commissions. ये जो commissions हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बट हम बस जान लेते हैं कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, दीज आर प्योरली एडवाइजरी काउंसिल्स. ये सिर्फ एडवाइस देते हैं कंज्यूमर बदलते हुए सिनेरियो में. जैसे अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग आ गई, कुछ नए तरह के प्रोडक्ट आ गए, रोज नई नई तरह की सर्विसेज लॉन्च की जा रही हैं, उनको देखते हुए दीज आर एडवाइजरी काउंसिल्स जो ये अपनी एडवाइस देते हैं और जिनके बेस पे लेटर ऑन अमेंडमेंट्स किए जाएंगे.
So there is Central Consumer Protection Council chaired by Union Minister of India, Consumer Affairs, and then State Council chaired by Minister of Consumer Affairs State, and then District Consumer Protection Council chaired by District Magistrate. These are advisories. Then complaints to the authorities. Con complaint to authorities. A consumer may lodge his complaint related to violation of consumer rights, of or unfair trade practice, or false or misleading advertisement in writing or in electronic mode to any one of the authorities: central authority, commissioner of regional office, or district authority. सेंट्रल अथॉरिटी, कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, इन तीनों में से किसी को भी कंप्लेंट की जा सकती है. हु इज दिस सेंट्रल अथॉरिटी? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज बीन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक सिलेक्शन प्रोसीजर है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, और जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया दी गई है इस एक्ट में बहुत डिटेल में. उसके थ्रू इस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये अपॉइंट किया जाता है to regulate matters relating to violation of rights of consumer, unfair trade practice, and protect and enforce rights of consumer. इसका हेडक्वार्टर एनसीटी ऑफ दिल्ली में है. कंसिस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स. रीजनल कमिश्नर जो अलग अलग रीजन्स में ये बैठते हैं, एंड दे आर द चीफ रेगुलेटर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स. एंड देन सेंट्रल अथॉरिटी शैल एक्ट थ्रू चीफ कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर डायरेक्टली इन द रीजन ऑफ द कंट्री. इन्वेस्टिगेशन विंग, ये इनके पास सेंट्रल अथॉरिटी के पास एक इन्वेस्टिगेशन विंग है जिसमें ये डायरेक्टर्स, ज्वाइंट डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स इनको नियुक्त करते हैं. एंड द कंप्लेंट कमिंग टू देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू, एंड दे हैव गिवन सब्सटेंशियल पावर बाय दिस एक्ट. देन कमिंग टू द लोअर मोस्ट बॉडी जिससे एक कंज्यूमर सबसे पहले टकराता है. दिस इज where a consumer first reach, that is the district commission, जिसको राइट दिया गया है इस एक्ट के थ्रू, इसको एम्पावर्ड किया गया है कि ये अप टू 1 करोड़ कंसिडरेशन वैल्यू के केसेस को सुन सकता है. इफ द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज मोर देन 1 करोड़ देन जो प्लेंटिफ है उसको जाना पड़ेगा स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के पास, एंड इफ इट इज इवन मोर देन दैट देन दे हैव टू मूव टू नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल, और इसके डिसीजंस को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में. देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन. व्हाट इज पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन? दैट सपोज अ कोर्ट हैज बीन बाउंडेड बाय सर्टेन कंसिडरेशन वैल्यू. जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम 1 करोड़ से ज्यादा के केस को नहीं सुन सकता, बट सपोज court has started when the claim was made up only 10 lakhs and suddenly he realizes in the meantime due to the deficiency of the services patient may die, and it is proved that it was the negligence and the continuing effect of it. Because of the continuing effect of it the person died, so the claim may rise into more than 1 crore. Now the district forum, district commission has a consideration value maximum of 1 crore, and when he start hearing the case then the consideration value was only 20 lakhs जो plaintiff ने demand की थी. And because it was the damage increases, or it is found that damage should be more than 10 lakhs in the due course of its trial, and it is going above 1 crore, even then the same court will be the court that will be decide the case. This is the pecuniary jurisdiction. The pecuniary implies is related to capital, that is money. It means of a certain monetary value. A court can have certain financial limitation which the court should adhere to, and beyond which the court cannot try the matter. Section 15 of the Civil Procedure Code provided that every suit shall be instituted in the court of lowest grade in terms of value in the case competent to try it. जो सबसे छोटी कोर्ट उसको ट्रायल कर सकती है उसी को देना चाहिए. In case of Vidyadhar Bhatia and the Mahendra Das AIR, Itna full bench of the Calcutta High Court took the view that it is open to the court to pass a final degree for an amount exceeding its pecuniary jurisdiction if the original valuation of the suit was within its pecuniary jurisdiction. अगर हम initial valuation हमारे उस court के pecuniary jurisdiction की power के अंदर था और बाद में ये बढ़ भी जाता है, even then that only court will decide the matter. Then comes the territorial jurisdiction. आपने सर्विस दी, वो डेफिशिएंट थी, उसके अगेंस्ट कोई क्लेम करना चाहता है, कोई कंपनसेशन मांगता है, वो जा करके 4 प्रदेश दूर वो कर रहा है. नो,
This is not allowed. This act has define the territorial jurisdiction जहां पर उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है. These are the districts of residence, business, office of the opposite party at the time of institution of that complaint, where the cause of action wholly or in part arises, or where the complainant reside or personally work for gain. Only on that places उसके अगेंस्ट कोई क्लेम किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन में जाया जा सकता है. We have discussed it. Now this district commission headed by district collector, this has power of civil court as well as criminal court. So जब हम कमीशन के सामने जाते हैं तो हम उनको हल्के में नहीं ले सकते हैं. When they are presiding in a commission, they have all the power of a judge, and this power has been provided by this Consumer Protection Act. The district commissioner shall have the same powers as are vested in a civil court under Code of Civil Procedure 1908 for summoning and enforcing attendance of any defendant or witness and examination of the witness on oath, requiring the discovery and production of any document, receiving of evidence, requisitioning of the report from a concerned analysis test of appropriate laboratory, appointing commissions for the examination of any witness or document. So all these rights which are of rights of a civil court embedded in the district commission. And then all the proceedings before the district commission deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 of the Indian Penal Code, and the district commission deemed to be a criminal court for the purpose of section 195 and chapter 26 of the Code of Criminal Procedure 1973. So a district commission has both civil and criminal powers, criminal code powers, because of this act has been provided in the act. Proceeding before, कैसे proceed करता है district commission? अगर कोई aggrieved person उसके पास complaint launch करता है, 21 दिन के अंदर उसको ये decision ले लेना है कि हमें ये complaint admit करनी है या reject कर देनी है. Beyond 21 days, अगर वो 21 days तक रिजेक्ट नहीं करते हैं, it will be deemed to be admitted. इसको मान लिया जाएगा कि कंप्लेंट स्वीकार है. अच्छा, अगर रिजेक्ट करना है तो विदिन 21 डेज उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं. देन अगर एक बार हमने इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया, कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, एंड ही फाइंड कि बोथ द पार्टीज आर इन एग्रीमेंट एंड देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट, ही मे आस्क फॉर मीडिएशन, कि भाई बीच बचाव का रास्ता निकाल लो, आपस में लड़ो मत, ठीक है. सो विद इन अ टाइम कोर्ट क्लेम करती है विद इन अ पीरियड गिविंग राइटिंग, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डायरेक्ट द पार्टीज टू गिव इन राइटिंग विद इन 5 days कंसेंट टू हैव देयर डिस्प्यूट सेटल्ड बाय मीडिएशन इफ एनी सच पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट. स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए कंज्यूमर मीडिएशन सेल स्थापित कर रखी है कि भाई झगड़ा लड़ाई कम से कम हो और मीडिएशन के थ्रू मामला सुलझ जाए. And there is, on the same ground, central government has also established a consumer mediation cell to be attached to the National Commission and each of its regional branches. Mediation shall be guided by the principle of natural justice. Mediator has been decided by the court. कोर्ट जिसको भी उचित समझती है मीडिएटर डिसाइड करती है, और उससे सिर्फ इतना कहती है कि आपको नॉलेज हो या ना हो लॉ का, आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे. इस मीडिएशन के वंस दिस मीडिएशन हैज बीन एक्सेप्टेड, इसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम बाद में नहीं किया जा सकता, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है. अपोजिट पार्टी कॉल टू रिस्पॉन्ड विद इन 21 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ, अगर मीडिएशन फेल हो गया तो फिर शिकायत एक्सेप्ट हुई विद इन 21 days, अगर एडमिट कर लिया तो फिर हम नोटिस भेजेंगे अपोजिट पार्टी को और उसको कहेंगे विद इन 21 days आप अपना जवाब हमें दाखिल कर दें, और अगर वो जवाब नहीं दाखिल करते हैं देन कोर्ट विल टेक एक्स पार्टी डिसीजन, दैट इज इफ द अपोजिट पार्टी ओमिट्स और फेल टू टेक एनी एक्शन विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, दैट इज इनिशियली 30 days and with proper reason another 15 days, that is total 45 days, on the basis of the evidence brought to its notice by the complainant, and no plea of further shall be attended for principle of natural justice have been complied with. Timely justice provide होना चाहिए, justice denied, justice delayed is justice denied, and so there is a principle, there is a time limit under which these courts has to be decided all the matters.
So the time is 3 months for the district consumer commissions. Within a period of 3 months from the date of receipt of notice by a opposite party will decide the matter. And 5 months this time limit increases when the product under question has to be sent to some analysis to a certain lab. Then this time limit is 5. Relief. What kind of relief can be provided to the complainant? Remove or replace the defect or goods. Refund the charge and cost with interest, or award a compensation to the consumer for any losses or injuries suffered by the consumer due to negligence of the opposite party. Review by district commission and appeal against its order. अगर agreed people को जिसके against ये decision आया उसको लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, he may file again an application कि साहब इसको एक बार फिर से review कर लिया जाए, और अगर review नहीं करने वो चाहे तो उसके higher body में फिर से अपील दायर कर सकते हैं. The same is that if there is any error apparent on the face of the record, either by its own motion या तो कोर्ट को खुद लग जाए कि हमने कुछ गलती कर दी है, या an application made by any of the party within 30 days of such order, a review can be pleaded. State consumer dispute. अब district forum से अगर केस decide हो जाता है, लोग satisfied है, then it is good enough. If it is not, then they will go to the State Consumer Dispute Judicial Commission, or otherwise, if the punitive jurisdiction is of a state commission, that is the matter of the value is more than 1 crore, then by default it will be go to the state commission and not to the district commission. Another thing, whenever there is a case of unfair contract, straightforward this will be heard in the state commission rather than the district commission. Then the National Consumer Dispute Judicial Commission, this is the topmost body established by the central government, function of the National Capital Region, president up to 70 years and at least 4 members होते हैं इसमें. The complaint where the value of good or service paid consideration more than ₹10 crores, complaint against unfair contract, appeal against order of any state commission, appeal against order of any central authority, and the call for the records and pass appropriate order in the consumer disputes. Review by National Commission खुद इसको review कर सकता है अपनी appeal को within 30 days of passing an order. An appeal filed before the State Commission or the National Commission, as the case may be, shall be heard and expeditiously as possible, and every endeavor shall be made to dispose an appeal within a period of 90 days from the date of its admission. This is clearly mentioned. What penalty can be given if the order of these courts has been non-complied? Punishment with an imprisonment for a term which shall not be less than 1 month but which may extend to 3 years, and fine which will not be less than 25,000 and up to 1 lakh. Medical carriage is not just a profession, it is a service to the mankind, and doctor should have a special knowledge and skill in the most appropriate manner, keeping in mind that the interest of the patient who has entrusted his life to him. So take out message is, medical profession is one of the oldest profession of the world and the most humanitarian one. There is no better service than the suffering, wounds and sick. Inherent to the concept of any profession is the code of. देखिए बहुत से इस तरह के हम लोगों ने आपके बाहर और टीवी पे, यूट्यूब पे और इन जनरल पब्लिक में इस तरह के आर्गुमेंट हम सुनते रहते हैं कि वकीलों से क्यों नहीं कोई इस तरह कहता, हम ही से क्यों सारी ह्यूमैनिटेरियन और जो है वो मानवता जो है हम ही से क्यों एक्सपेक्ट की जाती है? Why we are in a special, we are also professional? No, you have chosen this profession and this profession born before you. This profession has certain ethical and moral values related to it. और ये profession जब से ये सेवा का जो मार्ग है, ये सेवा का profession है और इसकी ethical और moral values बहुत पहले से established है. You are choosing this profession, then choose it as a whole and not as a part. अगर आप इस प्रोफेशन से कमाते हैं तो फिर इस प्रोफेशन की एथिकल और मोरल वैल्यूज को भी होल्ड करना पड़ेगा. और अगर हम किसी भी प्रोफेशन की एथिकल और मोरल वैल्यूज को होल्ड करेंगे तो हमें कभी भी इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसी चीज से हमारा सामना कभी भी नहीं होगा. किसी भी सोसाइटी में जितने स्ट्रिंजेंट एक्ट्स होते हैं, this clearly indicates the lower ethical and moral value of that society. जिस सोसाइटी में एथिकल मोरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होते हैं वहां इस तरह के लॉज होते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं होती उनको बनाने की.
So inherent to the concept of any profession is the code of conduct containing the basic ethics, and that underlies the moral values that govern the professional practice and is aimed at upholding its dignity. We must follow our professional ethics and skill to provide good, competent and accountable service to the public, and aim must be to serve humanity, otherwise the dignified profession will lose its all the worth. And at the last, please treat the patient rather than disease. Thank you so much for your patience listening. Thank you so much. Thank you, Dr. Rai. It has been a very nice, exhaustive, and a very detailed presentation. I think you have almost covered all the top things in it. Thank you so much. I have just one or two just queries. Like you said, if a doctor is charging 10 patients and he sees the 11th patient free, over here, like we are working in a government setup, and supposing a patient comes who is from a poor background, so we don't think everything is done free. Surgery has been done in. If supposing something goes wrong, then can that patient go to the court? Definitely, sir. Even if he has not paid a single Yes, sir. penny? Yes, sir. Because the institute where you are practicing is not meant for providing free services. No, I'm saying, like normally we charge 1 rupee per regular patient. Sir. But poor patient who comes, everything is done free. He has not given a single penny to the hospital. Yes, sir. In that case, Even then he can go to the Consumer Protection Board. so even then it becomes. Definitely, sir. No doubt about this. And one thing more, like you said, if supposing something goes wrong, the compensation is calculated 70 minus 8. Sir. If supposing now, most of the times we are having geriatric population. So if you supposing you operate on a patient who is 80 years old, Sir. so how will this compensation? Definitely, sir. This will affect the other patient. There will be the productive years will be decreased, and so the loss incurred by him due to that damage, that loss of earning capability, will definitely reduce in a substantial amount, and the compensation will be definitely much lesser. Okay. So in a lighter vein, I will say that कि अब डॉक्टर्स को पहले देख लेने चाहिए मरीज आ रहा हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं. If supposing you are having a young patient who is working in an MNC, you should at the back of your mind start thinking what should be the compensation. Sir, and my suggestion in this regard would be, we should not go for all the holes. We should not go for all the holes created by these law and acts. We should focus on one thing. We should work properly. We should know how to work as a doctor in the society, and that only thing, when you stick with your basic principle, basic training, ethics and morals, definitely you will always be protected. There is no sentiment anywhere in the legal system against the doctors or against the medical disadvantage that may occur in a biological system of human treatments. So, sir, we should not go in the details of all the IPCs, all the laws, but we have, sir. Sir, the chair has asked one question. Now, answer of that is, even in under the Ayushman, जो हमारे भारत की एक देन है, फ्री ट्रीटमेंट, उसमें भी अगर आप पकड़ में आ गए तो आप तो भी आपके ऊपर केस हो जाएगा. नहीं सर, आयुष्मान में तो क्या पैसे मिलते हैं ना. नहीं पैसे मिलते, आपको पैसे नहीं मिलते, किसी को पैसे नहीं मिलते, वो पेड नहीं है, वो फ्री सर्विस है, वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सर्विस है. गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, पेशेंट नहीं पे करता है, बट उतना अमाउंट हमारे हॉस्पिटल में आता है. हाँ, हॉस्पिटल में आता है. दैट इज पेड. आई वाज आस्किंग कि अगर आप टोटली फ्री कर रहे हैं सर, बिकॉज़ यू आर सैलरीड सर, सो एवरी पेशेंट ट्रीटेड बाय नहीं, सैलरी के अलावा हमारा जो हमारा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल है जहां पर की टोटल फ्री है, ऐसे कोई भी हॉस्पिटल नहीं है. आप 1 रुपए का केस आउटडोर स्लिप बनाते हो, कॉन्ट्रैक्ट में चले गए आप. सर नहीं सर, मैं यही कह रहा था सर कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो हमारे पेशेंट आते हैं उसके फ्री में ओपीडी स्लिप बनी, उसकी फ्री में इन्वेस्टिगेशन से फ्री ऑपरेशन हुआ. फिर भी वो आएगी. थैंक यू सर. यस सर. You asked about the charitable hospital, the treatment and services provided by the charitable hospital, free of cost, total free. They are out of this category. वो तब नहीं आएगा. वो तब नहीं आएगा. Dr. Rajesh, I have one question for you. Please, ma'am. If any consumer files any false complaint or with a malified intention,
So what is the provision for this? Ma'am, the complaint was malafied has to be proved on the floor of the court, and before that it is a complaint and it will follow its course as per Consumer Protection Act. This is your competency and your learned counsel's competency that he has to prove it's malafied and wrong. Recently, for filing the complaint. For filing the complaint as per the requisite jurisdiction, the fees has been defined. It's not like that you don't have to pay and you are directly filing for 10 crore rupees. It is linked with that. So it is recovered from that cost on if it is frivolous complaint, the cost will be recovered from the party itself. Any questions from the audience? Thank you, sir. I would like to invite Dr. Adar sir, please come on the dais. So please. देखिए ना बाकी उसको मान कस के दबा दे इसको कोई दबा दिया ना कितनी बैटरी चलती दूसरा डालते हैं 3-4 तो लगाओ दूसरा अच्छी रहती है लोकल वाली इसमें नहीं चलेगी लोकल पहले चल रही लोकल एक वो लगती है ना लोकल वाली एक प्रोग्राम नहीं चल पाती तो कैमरा वाली नहीं चलेगी चलती है वो भी लेकिन कौन बार बार चार्ज कैमरा वाली भी लगा रखे हैं उसको भी लगा रखे हैं कौन वही है झंझट वाला जहाँ कौन चार्ज करे तुम निकाला है इसलिए एक्स्ट्रा रखते तो बढ़िया यूज करो फेंक के हटाओ डोरसेल भी चार्ज हो जाती है ना नहीं चार्जेबल नहीं है इसमें जबकि उससे महंगी हमारी डोरसेल पड़ रही है हमारे उससे तो महंगी पड़ रही है चार्जेबल महंगी पड़ती है ना भाई अरे ऐसे तो 20 रुपए की एक आती है 20 रुपए 22 रुपए की एक तो वो है वो वाली महंगी आती है हाँ मेरे पास कैमरा वाली महंगी वो मेरे पास 4.5 से 5 रुपए मिल जाती है अच्छी ब्रांड वाली है मेरे पास हाँ उसी की इन्फिनिटी वाली है लेकिन फिर वही है ना उसी लिए अलग से चार्ज रखना 8 रखना ना एक तो माइक नहीं जेड माइक सब के लिए अलग रखी और कंफ्यूजन यहाँ अगर लगे उनके साइड पे छोड़ दिए धोल ली वो बात तो बल मत छो वो समस्या है ना भाई अगर एक बार तो वहाँ कम 1 साल 2 साल आराम निकल जाएगा हाँ निकल जाए हम उसको 2 साल के जगह तक यूज नहीं रखी इससे लाइफ वाली यूज करता चार्जर बैटरी I would like to invite Professor S.K. Tripathi sir and also Vijayanath sir, so please come on the dais. Screen लगा दो कैसे करना पड़ेगा खत्म कर भाई कब खत्म हो जाएंगे कहा भाई नहीं खत्म है जबरदस्ती के लिए खत्म है प्राइस स्टेशन बचा हुआ खाली 9 घंटा हो जाएगा नौ घंटे का हुआ है इसको सीधा करना है यार सीधा नहीं हो रहा है यहाँ सेटिंग नहीं होगा सेटिंग से वहाँ नहीं वेब कैम यही तो खुला ही वेब कैम तो खुला है तो एक बार दबाओ तो 2 बार थोड़ी देर बाद तो खुला था काम नहीं कर रहा है कुछ
ये क्या है, ये एरो वाला? ये शेयर अच्छा करने अच्छा, के लिए। शेयर कर, किसी को शेयर पिक्चर ही पिक्चर क्या है? ये पिक्चर है। I would like to invite Dr. Kavita Chawla and Reena Sachan to please come on the dais to give medals and certificates to poster presentation and paper presentation PG. We will now be facilitating the prize winners for the oral paper presentation first. For oral paper presentation, the third prize will be shared by three residents. Dr. Jaya Vasisht, Junior Resident, Shamsha Medical College, Rewa. Dr. Rajni Chaudhary, JR, Department of Microbiology, Motilal Nehru Medical College, Prayagraj. And Dr. Aishwarya, JR, Immigrant, Shillong. Dr. Aishwarya is presented it online and she will not be available to get the medal right now. The second prize will be shared by two people. Dr. Abhinandan JR, Department of Pharmacology, Motilal Nehru Medical College. Dr. Praveena Mukherjee, Department of FMT, Institute of Medical Sciences, BHU, Banaras. Second prize to Dr. Praveena Mukherjee. And to Dr. Abhinandan. The first prize goes to Mrs. Samia Tiwari, who is a PhD scholar in Sam Higginbotham Agricultural University. She has presented it online, and I would request Dr. Love Keshavan sir to collect her prize on her behalf. Thank you. Round of applause, please. Moving on to the category of poster presentation. चला हल्का हल्का खोल दो बस, काम ज्यादा कर दो। Moving on to the category of poster presentation, the third prize goes to two students, Dr. Adisha Senapati, Junior Resident, King George Medical College, Lucknow, and Hoshini Happy, student of Forensic Science, Sam Higginbotham Agricultural University. ये पुरस्कार आए लगा है, बेस है कि ये बेस हो तो तुम आया जाए कमरा और क्या हमारा क्या है इसका स्पाइडर छोड़ा हुआ है जब खाली रही तब The second prize goes to two residents, Dr. Shekha Singh, JR, Department of Pathology, MLN Medical College, Prayagraj, and Dr. Deepan Roy, Institute of Medical Sciences, BHU, Banaras. Dr. Deepan Roy, second prize goes to Dr. Deepan Roy in Education, and the second prize is and the second prize for poster presentation will be shared by Dr. Shweta Singh, Junior Resident, Department of Pathology, MLN Medical College.
The first prize will be shared by two residents, Dr. Harshita of King George Medical University, Lucknow, and Dr. Ankita Singh of GSV Medical College, Kanpur. Dr. Ankita Singh, GSV Medical College, Kanpur. Thank you everyone, thank you. Being grateful and giving recognition for the hard work and support is what rises a human to the next level. I would like to call our HOD ma'am, Dr. Archana Kaul, the organizing secretary of this national CME, to take up the podium and deliver the oath of thanks. On behalf of whole organizing team and the entire fraternity of the institution, first of all, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a renowned success. With this blessings and grace, we are able to make this event what it was. I also take this moment to thank our respected dais dignitaries, Chief Guest Justice R.D. Khare sir, Dr. V.B. Sahai sir, Dr. U.S. Sinha sir, and Dr. Asla ma'am. I feel grateful to having such a elite list of guest speakers who showered us with knowledge and experience. I thank our guest speakers, Dr. Virendra sir, Dr. Mukesh Yadav sir, Dr. Adarsh sir, Dr. Mosmi Singh, Dr. Lokesh Sarwani, and Dr. Rajesh Rai. Most have you traveled from far away to be a part of this majestic event. We feel honored and blessed to have you all here. I thank all chairperson and moderators of all the presentation for their valuable insight and support. I would like to extend my thanks to all the faculty members of all the departments of Motilal Nehru Medical College, Prayagraj. I request them to forgive me as I am unable to name everyone of the due to restraint of time. I promise you I would contact all of you to personally after the event, extend my thanks and regard. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago, the wheels start rolling months ago. We required planning and a bird's eye for detail. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated members of our department who are well versed in their job. I am short of words for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zone. It becomes my responsibility to thank the students of Forensic Science of Shorts for their volunteer activity. I would like to extend my thanks